RRI, and the topic is quite relevant for the day, intelligent solutions for road safety through technology and engineering. In another presentation, we have another equally important topic on road safety audit, and which is also quite an apt theme for this session. And as we very well know that AI and IT solutions can work wonders in a wide variety of applications for road traffic engineering and monitoring, management and analysis. This IT and AI applications can emerge as a very powerful tool for road safety to check and control various kind of violations which are happening on the roads. And it may help us in taking reactive and preventive measures also. And it can also establish a very strong communication between the road authority and enforcement authorities. So we can utilize it in a various variety of ways. You see on road, when the commuters are traveling, there could be various kind of violations. It could be lane violations, it could be wrong side driving, and it could be overspeeding. So risk on the roads and collision alert systems timely alert to the drivers, so we can make use of IT tools and other applications. You see there are three elements in the ecosystem which are important, like that one is the infrastructure on which the commuters are making. It covers the road infrastructures and various road infrastructure including all this. Then we have to ensure mobility on the roads, and then another important factor is vehicle safety. So this IT and AI tools can integrate these systems in the overall ecosystem to enhance road safety. As all of you are knowing that road safety audit is another important factor. If it is used in a very prudent way by the engineers, it can work wonders, and we can ensure that whatever infrastructure we are creating, then if road safety audit is conducted at the DPR stage itself, then we can ensure that there will be no kind of black spots or even grey spots, or potential road safety issues can be very well avoided. Road safety audit is not only important at the design and import stage, it has to be given equal importance during construction phase as well as during O&M phase also. So this will also be discussing in details. And a road safety audit should give particular emphasis and importance to the vulnerable road users also, which is also very important. So their safety aspects also must be kept in view. So all this will be discussed by the presenters during the course of their presentations. So I now invite Dr. S. Velamurugan ji for making a presentation, please. Good morning, everybody, and I would like to thank the organizers of this international conference, which is being held by IRC, for having given me an opportunity to present this study, which it's a sort of an ongoing study. I thought I will just share it with you, with the entire audience who are assembled here on this occasion of trying to improve the road safety in the country, of our endeavor to bring down the 50% reductions in the deaths especially, and the fatal and also the serious injuries by 2030
In that particular direction, this study was started in August 2021 by us. So it's not the only CRRA is doing it. CRRA along with the consortium where Intel, IIIT Hyderabad, and Artificial Intelligence Center of IIIT, and Mahindra and Mahindra. We are the different stakeholders where actually CRRA is overall coordinating the study. So the agenda is, I'll be just, we are trying to do it for the city of Nagpur, and we called it as iRaste, primarily because we thought something related to the safety solution. So that's why intelligent solutions for road safety through technology and engineering, we are trying to integrate it. And the agenda of this small presentation is, I'll be giving an overview of the road safety in the city of Nagpur. And we are addressing, as rightly pointed out by the chairman, we are trying to address it through the three vectors: vehicle safety vector, then mobility vector, and infrastructure vector. And having done it, we try to understand if the black spots are improved, how much it can bring improvements to the particular locations. Couple of locations where we have done the assessment, I'll be just giving it. So the city of Nagpur, as all of you must be knowing, it is the center of the country in terms of having the 0 kilometer, as you know, the NH 0 kilometers out there. And cities having good connectivity of road, rail as well as air. And cities having limited coverage of NMC buses, that is Nagpur Municipal Corporation buses are running, roughly around 350 buses are running. And they are now have the metro also, which is running in 2 corridors. So now coming to the safety aspects of the city and the present profile of the road scenario in the city, if I try to see, generally as we see in any metropolitan cities which we observe, the typical scenario is observed here as well. If I try to see my slide, where you can see here about the aspect about the city road network vis-a-vis the national highways and state highways passing through the city as well as periphery, where the number of crashes and the deaths are dominating in the during the lean hours of the day. More number of grievous injuries are happening in the city road network, and fatal injuries are also happening in the, which is dominating because of the speed limit is you're not able to fly beyond 50 to 60 most of the time. So that kind of scenario as we see in most of the cities. That way urban road network has more number of serious injuries and deaths as compared to the national highways and state highways passing through the city. And if you see in the urban, rural part of the city, where you have the peripheral part of the city, where the national highways and state highways have some sort of fatal crashes more and also serious injuries more. And of course, there also the your city road network has more number, slightly more number of deaths and serious injuries. So this is the Indian scenario which we are talking from from yesterday onwards. I will not dwell on it. Just I want to tell the scenario in terms of death is an important part we are supposed to address along with the serious injury. That is the, because crash occurrence cannot be just like that curtailed. So that is why the endeavor is to bring down the 50% reduction in deaths and serious injuries. In that regard, if you see the city of Nagpur, if I try to see in terms of the from the last 14 years or so, if it, sorry, next, yeah, the city of Nagpur, if you try to see from 2008 onwards till 2019, that number of crashes are hovering between 1,000 to 1,400, and the persons who are getting injured is also almost the similar range. And even the number of persons who are getting killed on the Nagpur city and as well as the peripheral part of the city is ranging between 200 to 250 in terms of the last 5 years data.
So this is for a city which is catering to less traffic as compared to a more megapolis of our country. So that being the case, this is a thing which we can think about bringing down. So in that regard, as I mentioned, we try to address it through the artificial intelligence as the first vector which we are trying to use, improve safety of larger vehicles. In this regard, as I mentioned, 350 buses are running in the NMC. Right now, as of today, in 250 buses, we have put this, we call it as the ADAS, which actually, which is able to give the advanced driver assistance system. So, which gives you the distinct alerts. So that we try to utilize it. So basically the alert, ADAS is one thing. It gives you the timely warning to the drivers for distraction and indiscipline, which can be prevented. So in this thing, before 2.5 to 3 seconds before, you get 4 distinct alerts. That is the forward collision alerts, pedestrian collision warning rather, or lane departure warning, and headway monitoring and warning. So these, out of these 4 alerts, we found we will try to utilize for being an urban scenario where the you don't expect the speed limit is not more than 50, or in certain roads maybe up to 60. So that being the case, out of these 4 alerts, and in India being a heterogeneity in traffic mix, we thought we will not utilize this headway monitoring and lane departure warning alerts, that is HMW and LDW, because in India, because the alert starts coming, if the speed is 20 km or more, immediately the alert will come about if some vehicle is up front. And similarly, lane departure, because heterogeneity in traffic mix, people tend to change their lane, and a two-wheeler may come in front of a bus. So considering this part, and it may not result in a possible collision. So that being the case in urban scenario, these 2 alerts which are larger in number, we have ignored it while we are using the data for analysis, but we try to utilize these 2 data, forward collision data and pedestrian collision warning, for further analysis in terms of trying to develop a model. We call it as the this thing, gray spot model. So that I will be coming back to you what I mean the gray spot model. So these are the 4 distinct alerts which are coming through this, which is installed in 250 buses. We are utilizing it. So this installation of this ADAS system in the bus is a camera is for the AA enabled camera is focusing on the road. It has the capability to detect these 4 alerts, and display unit audio and visual alerts are given to the driver instantaneously, so that we are trying to monitor before and after the thing. We monitored about his adherence to the alerts, and I will not go into this part. We try to, paucity of time, I am not taking the different days of the week and different time periods, all those things we are analyzing. And this is the, we had to analyze it in a more, what is a pragmatic manner. We try to have these alerts before generation of the alerts to the driver. We try to monitor the situation. Initially, the driver is not informed of this alert, and once when he is given the training, and over a period of 3 month period, we are just analyzing how much is adhering to these alerts. So that is the genesis of the entire things. As I told you, out of these 4, we are trying to utilize for this particular study forward collision and pedestrian collision alert. And more importantly, in pedestrian collision, it has the capability to give, if our subject vehicle, the bus is at 20 km or more speed, even if not only pedestrian, a cyclist or a two-wheeler coming in the path of this vehicle, that also will get actually covered. That means the entire type of vulnerable road users are getting covered here. So this right now the analysis thing which we have got till now, 50 vehicles running in 75 routes, and the vehicle utilization of this vehicle is 80 kilometers per day per driver is happening. About 3 lakh kilometers of data has been analyzed,
and the fleet operation is between 5 a.m. to 11 p.m. and this data has been used for 1 month observation we initially used to make the before the driver is not informed, and then the 3 month period we try to have it. So as I was mentioning you, these alerts will be more headway monitoring, which we have ignored it, but we have utilized this FCW and the PCW alerts, and lane departure is somewhat lesser. So in an what we found is that once when the before and after period, once when he gets communicated, there is some sort of because some sort of a training was given for about till now 746 drivers. So the safety alerts has had its bearing in terms of people are adhering to the thing before and after. 31% have reduced on an average, lowering collision likelihood. That's what, and also more importantly, 43% reduction has happened in the pedestrian collision alert, which I meant, and because this city is having, as we see it in a typical metropolitan city, about 45 to 60% is dominated by two-wheelers. So two-wheelers, one of the larger proportion of these vehicles which are dominating this flow. So that way, the overall analysis till now we have done, on an average 48% have demonstrated improvement in safe driving behavior. That means 1 in 2 drivers. We want this to be increased to 80%. That is what we are thinking. This is the kind of training we have done over a 6-day program. Intensive training is done. Every day, half a day, each of these drivers are subjected to this training, which is defensive aspects are also taught to them, as well as the ADAS capability is also explained to them. And this is the second training we have done recently in September 2022. And in this training, we tried to cover the checkup, voluntary eye checkup also, and we found the kind of people who are driving our public transport buses are also having long sight and short sight problems. It's very huge in number, which you can see here, what I just given here, about 40% are having this kind of problem and 30% are having both the problems. And the feedback about this thing is about 90 to 95% have felt it has made some visible difference in their driving behavior. That is what we found from their things. And what we interim findings, if I try to summarize, 48% have shown this thing, maximum improved in safe following distance, which is really found is a good input of a forward collision alert, and also 43% in pedestrian collision alert. So this is the thing, and what we want to do further is continue this thing, and 250 vehicles now it is installed. This is the results for only the 250 vehicles till now whatever I presented. Now this 250 data is being analyzed, which includes 50 school buses as well and 8 tourist taxis, and 100 more will be installed, and our target is to improve this improvement, driver improvement to at least up to 80% in terms, and also we want to over a 1 year period now, because as I told you August 2021 we started this study. By 1 year period after this particular thing, crash data we have taken about the NMC fleet before and after the CAST installation in terms of the crashes and fatalities. We are going to analyze it so that the likelihood of the crashes, whether it is bringing down in 50% reduction or not. That is what our thing is. The next vector is the gray spot. That the same data what is coming out of it, we are trying to utilize it here. That is the proactive identification of the probable road crash prone locations, because the entire data through cloud sourcing getting stored in the IIIT this website. So that data we are utilizing the various alert data, and we are integrating this alert data with the road geometry on the ground, because as I told you, the bus is running and GPS coordinate is there. So we are able to understand which are those locations time and again appearing as a gray spot. That we are taking it on board and integrating with the ground conditions in terms of the road geometry there. That is what we calling it as a proactive identification of probable road crash prone location. That is the thing we call it as the gray spot. So this is the entire methodology about it. We try to collate it with the FIR data for the black spot as well, so that the weightage what we are attributing is meaningful in nature.
So that is what we are calibration and validation with the existing black spot was initially carried out, and then the gray spot identification has been done, and solution is being done, which will be a cost effective solution. We expect whatever the solution we are going to give, it can be easily implementable in lakhs rather than couple of lakhs, not in terms of going in for 25, 50 lakhs, or certain locations you may have to go for 2-3 crores if the black spot becomes a real problem, if it develops to be a black spot. So this is the entire genesis of this data of 50 NMC fleet. What we are having, the road length which is covered 1575, entire largely 90% of the road network in NMC the buses are running. So we are able to cover the roads, and type of 3-arm junctions and 4-arm junctions and 5-arm junctions, all those details are actually checked also on the ground. This is what I mean, your control period, operational phase 1, phase 2, like that. This is the way we are doing it now, and the FIR data was utilized in the black spot identification, infrastructure safety. For that, the data was collected starting from 1/1/2019 to now. Also, we will be continuing to collect now during the entire period of our study. We will be collecting this FIR data for relating with the gray spot, as well as for the if the things get implemented, whether the black spot have diminished or not. So the gray spot identification, that largely the model is severity index development, which is considering integrating the static parameter like a road geometry along with the dynamic parameter like a alert. That alert is basically, as I mentioned you, PCW and FCW we are utilized. This is the way the model has been calibrated and validated on the ground also. And out of this gray spot model, 20 locations we identified for immediate improvement, wherein the alerts are coming time and again. So this has the real issues about small geometry issues, and also the location is having the signages, markings and such kind of things, and also the people are moving large in number because of the land use, maybe what to say, this pedestrian movement or cyclist movement. So such kind of things which are generating these alerts. So that way, both the dynamic parameter as well as the static parameter of the road geometry has been integrated here. So this is the ground check of these things, whatever the 20 top locations I just given you. I am not going into the details. So this is a database which we are maintaining it thing. And the present pursuit right now is generating the list of gray spots for every quarter, as what we have done till August 2023 we are done. So that we are going to further going about it, and we will be doing detailed analysis of day versus night alerts. That is important, and correlating this number of road crashes, fatalities involving buses. That is because since we have put it in buses, whether the buses have brought in more crashes or reduction in the crashes or reduction in fatalities, those data we are going to do it. Lastly, infrastructure safety, improvement at black spots. So that is a procedure like as per the MARTH protocol, we have done it because the study was started before the IRC 131 publication. That's why we didn't go by the present protocol which is being listed by us in IRC 131. We went by the ministry protocol, which is fairly good. Location where either 5 road crashes or 10 fatalities occurred within 500 meter distance during the last 3 years is identified as a black spot. So out of the 117 locations, 1 crash, 2 crash or 3 crashes happened. So those from that we identified 37 locations as the black spots. So that encompassed 29 intersections and 8 mid blocks. So in those locations, 38. So for that we are given the total geometric plans right now. So that has been implemented. The major problems which we observed in these black spots were, in a nutshell I am showing, traffic signal part or traffic appendices, the road geometry part and all those things, and wide open area without lacking design. So for these locations we have done, we have submitted the plans to the concerned authorities like NMC, NHAI and NH division
and also World Bank division of NH division, all these people we are given the black spot improvement plans. So that also we try to bring out the countermeasure effectiveness. How much these countermeasures, whatever we are given, we thought it should be evaluated in a quantitative terms as we are given in IRC 131. So that way we try to give appropriate road geometry parameter. We convert it into terms of monetary benefits, in terms of geometric correction, or in terms of providing the, which includes the provision of channelizers, zebra crossing, or median refuge island, which is expected to give 70% effectiveness based on the IMAP software which has given. This kind of measures can bring in more better efficiency. Please conclude, Dr. Yeah, this way we are just given. This is a unit cost we used, fatality cost for each of these things for doing this analysis. And this is the two locations. I'll just show it, and with that I'll conclude. The 12 in a particular location, 12 fatalities, 7 crashes have occurred during the last 3 years. In that location, there is a host of parameters have been given. I don't want to dwell on it, but these locations, we are tried to, traffic data was collected and speed data was collected, and also the along with the crash data. So this is the 1 kilometer stretch. We are given a exclusive plan. So this plan also, we have made a plan which you can see on the bottom below is the before condition. Top is the proposed one. So any road maker, policy decision maker can understand from these kind of plans how much, if you go about and implement, if you want this plan to be visually shown to a policy decision maker, this can be shown. So like that, this kind of plans are made for a couple of locations to show them. But of course, the plans have been developed for different type of locations of 37 black spots. So this is the down below is the before, and top one is the proposed. So that way, whatever the measures which are expected should be made implemented. So that has been shown. I'll go next slide, paucity of time. So that way, now coming to the finally the lastly, this another location we are done for the intersection location. So cost also was worked out, BOQ based on the major cost. We try to work out for 2 different options on a particular junction. So this cost thing, due to the proposed countermeasure, how much it can bring down the crashes as well as fatalities, both have been worked out. And based on this, we have tried to work out what will be the benefit cost analysis of 4 locations I am just giving, just for knowledge. So this is first, this is the intersection with the 2 options, and this is again an intersection. These 2 are mid blocks. So you can see the benefit cost ratio of implementing these things can range between these values, which has been given for the any road owning agency to understand. And lastly, the present pursuit is to we are trying to persuade the concerned road owning agencies like NMC, NHA to implement these things. And also we are trying to through NGO, blacks, educating and equipping the volunteers with life-saving kits. We are trying to do. Lastly, I just want to tell, before 1 minute I want to conclude. So this is a measure we have done it for a totally on a urban or peri-urban condition. So similar kind of thing we can do it for our national highway or state highway network. In that direction, we have tried to do it for the Telangana thing, where already some sort of for national highway network, Hyderabad Vijayawada, Hyderabad Bangalore, and Hyderabad Khammam. In those 3 national highway corridors, that buses, about 100 buses, this kind of ADAS system has been put, along with the driver monitoring system, where the dosing off of the drivers and other aspects can also be studied. In that endeavor also, CRI is likely to participate. This is the thing. I just want to tell, if we try to use this kind of IT integrating with the road engineering, can be one of the better solutions for achieving enhanced fatality reduction in the country over a period of time. Thank you. Thank you, Dr. Vel Muruganji. So it was really a very interesting study for
the Nagpur city, rural as well as urban, and you have clearly brought out as to how these the alert system devices can influence the driver behavior and can help enhance the road safety of the commuters. So, may I now invite Professor Joshi ji to make his presentation, please. Good morning and namaskar to all of you. At the outset, I am thankful to IRC for giving me this opportunity to visit this cleanest city. I was just observing because Surat is next to Indore, and since last 2 years we are trying to capture the position which you have been occupying since 2-3 years, but somehow we are failing. So I was talking to Professor Sikdar yesterday. Indore is around 3 million in size and Surat is 6 million plus. So rather we should factor it that Surat should get double the score than what it gets. Automatically it will become first. So anyways, the topic assigned to me is related to practical experiences related to road safety audit of various categories of roads. Yes. We at NIT Surat are actively involved in road safety related exercises in the region of South Gujarat, which is very prosperous so far as economic development is concerned. It is also having very good natural resources, but at the same time when we look at the crash data, because our first focus goes on to the crash data, then we think of how we can avoid it. The crash rates are also significantly high. So in that context, this presentation is made, and considering the time of presentation, maybe 15-20 minutes, I have tried to minimize the content so that to convey the most important aspects of it. It has 3 parts. First part gives idea about the crash statistics of Gujarat vis-a-vis India, and who are the most sufferers, naturally vulnerable road users, what are the conditions of infrastructure for VRUs. Then there are 2 case studies, one of NH48 in the district of Surat, and second one is NH953, which is studied from grey spot point of view, or what we can call it as the potential black spot point of view. It passes through hilly terrain in the eastern part of the state. Followed by a case of state highway and village road and BRT corridor, and then the way forward that we should look for it. So if we look at the network of roads in the state of Gujarat, it follows the distribution which generally is prescribed for any region, with national highways and national expressway constituting around 6% and state highway 12%. And village roads and other roads are majority in proportion, and so far as the density of network is concerned, it is quite good in number, 63 kilometers of road per 100 square kilometer of area. Crash wise, if we see, again the situation is quite alarming. Compared to India, the state of Gujarat has higher severity of crash as well. It is in the range of 37 to 42. And recent data of 2022, which is published by NCRB, it shows that the cities are also having alarmingly high crash rates. If you look at in a normalized index of per lakh population, again state of Gujarat has relatively lower compared to the country. And this is important from proportionate contribution of different categories of roads. Here we can see national highways and state highways constitute around 56% of fatalities, whereas their length is only 18%. So naturally, it points to the very common wisdom that the speed is the major issue in case of such categories of roads. But apart from the speed, one has to look at the lane choice behavior and lane changing behavior of different categories of the vehicles, because the major issue on multi-lane highways which we are experiencing is improper lane discipline
of particularly heavy vehicles. So that is the major issue which we are trying to understand and analyze. So far as the statistics of total number of accidents and the fatalities are concerned, it is showing that number of accidents are decreasing in a state, as it is also happening in case of a country as a whole. But so far as the fatalities are concerned, they are growing at, if you take decadal average, they are growing at the rate of around 4%. In last period of 4-5 years, we find so far as Gujarat is concerned, the fatalities have decreased. Now, who are the sufferers of crashes in case of country as well as the state? Naturally, VRUs, the two-wheeler riders, pedestrians, bicyclists, and other NMV users, they are the major sufferers because they have no protection. They have very significantly higher level of exposure, and therefore they are the major sufferers of crash-like accidents, and therefore it will be appropriate to look at the kind of facilities, particularly in urban areas, we provide for pedestrians and the bicyclists. Many times even the two-wheeler users, yesterday also we saw one video, they use the footpaths to take care of their commitment to reach on time at the destination. Many places we don't even find proper footpaths, and because our overall policy and quality of traffic operation is measured how fast we are able to move the vehicles, and therefore other road users are generally ignored. Now, when we look at the urban sector, around 30 to 40% travel is made by foot, that means by pedestrians and by bicyclists. But on the same side, if we look at how much space we are apportioning for pedestrian and bicyclist, it is even less than 5%. So therefore, there is a rather inequity kind of thing we are prevailing insofar as urban sector road space is apportioning is concerned. These are certain situations. It is very common for all the cities in our country, except where there are BRT corridors funded by Government of India. There it is mandated that we should have proper footpaths and cycle tracks. But again, if you look at the real conditions and usage of these footpaths and cycle tracks, then naturally we conclude that it is not serving its purpose. You find vehicles parked on footpaths or even in the cycle tracks. These are the conditions which reflect on the apathy towards infrastructure we create for the road users, but it reflects that we are only focusing on vehicles and the pedestrians are given the scant attention. Here we can see we put the zebra marking. This we have seen in almost all the cases in the urban areas or divided carriageways on highways. We don't ensure that zebra crossing is continuous. Now how, so people are, you can see, they are forced to use the carriageway rather than just zebra crossing. Similarly, the underpasses are also built on highways, but they are not maintained, illuminated, so people don't feel it's safe to use. So these are the issues with related to pedestrian facilities. These are the kind of facilities pedestrians should be provided so that they can have a safe mobility on mixed traffic scenario in our cities, like sidewalks, zebra crossing, pedestrian signals, speed table. We have been suggesting to Surat Municipal Corporation in all the intersection design. We have designed around 100 intersections, but they have provided only at 2 or 3 places, because as per international agreement, wherever there is conflict between vehicular streams and the pedestrian streams, the speed of the vehicle should not be more than 30 km/h. So if you provide the speed table, then it is very much possible that the speed of vehicles which are entering into the conflict area is well below 30 km/h. Subways with well ventilated and well illuminated systems are desirable so that they become attractive for people to use. And also the FOBs on highways also, we are providing foot over bridges, but this poor pedestrian, maybe they may have some luggage also, they are forced to climb 2-story and because so that the vehicle can pass very easily. This is also something which is not so desirable. These are the photographs from our own cities. First 2 photographs are from
Ahmedabad, the riverfront, if you visit Ahmedabad, please visit riverfront. You can see how nicely facilities are provided for pedestrian while taking care of the movement of the vehicles also. You can see gap in the median is provided here, so that without any trouble, pedestrian even with disabilities can cross the road. Similarly, on the other photographs, very wide, 1.5 meter is the minimum requirement width of pedestrian sidewalk. Many places we find it is only 0.5 or 0.8, and that too has some tree or some light pole, and therefore they don't get adequate space, and ultimately they are forced to share the space on carriageway. This is the case of Bangalore. Bangalore also has developed many, good road stretches with very well developed facilities for pedestrians separated from main carriageways at mid blocks as well as junctions, and therefore it reduces the exposure of pedestrians very well. Now the key question comes, because the focus of this presentation is road safety audit, but yesterday we talked more on VRU, so I thought let me put up some stuffs on pedestrian. Road safety audit is to be taken up by three players: the owner, the design team, and the safety audit team. But the question, because our experience of last 5 to 6 years suggests that it is difficult to ensure that all three players come together and share a consensus for a better cause of safety of the road users. Each team has its own ethos and the egos, and therefore coming to a common point, appreciating each other's concern for the common cause of safety of road user is generally compromised. Okay, but whenever we take up the road safety audit, yesterday Mr. Popley has very well explained the procedure for road safety audit. This is what we try to do. Any facility, any component of the facility when we look at, we'll have to question ourselves whether it provides adequate warning with the change in the roadway environment, whether it informs the road user in advance so that he can take appropriate decision with reference to change in lane or change in speed, whether it provides adequate control so as to minimize the conflicts or to reduce the severity of the conflicts, whether it is able to provide proper guide and effective guidance to the road user, and finally, which we have yet not implemented, whether a road is able to forgive the erring driver or not. There is one simple measure which you can see here is a kind of a rumbling strips, on the shoulders. This is very common in US interstate systems of 67,000 kilometers. So any departure from lane is immediately, alerting the driver through this rumbling sound of this rumbling strips. They are practically of zero cost, but can be very effective to at least avoid run of the road kind of incidents. Now, when we are doing the safety audit of existing road, the first we have to stand on the center of the road and look at the clear zone. IRC codes are clearly defining the clear zone dimensions with reference to different categories of the roads. So clear zone means there should not be any other natural or man-made obstruction in the clear zone, and more emphasis on the slope of embankments which we provide in the clear zone. It should be soft enough so that vehicle can recover back without any injury to the occupants of the vehicles. These are certain observations which we have found in the clear zone, mainly the hazards in terms of the trees, and there are no hazard markers on the trees as well, and therefore many times, particularly during night times, we have found the if driver dozes off even for a second, he may deviate from the carriageway and the vehicle hits the tree, which is of course very harsh. Now it is interestingly note that IRC even prescribes the soft trunk kind of trees as crash barriers. So but we generally have old trees with very hard trunk, and it reacts back, and therefore the kind of crash which happens turns into the grievous or the fatal kind of crashes. Similarly, when the road approaches the bridge, provision of railing for the safety and the safety barriers is also missing. The chevron markers for the critical curves locations, that is also missing. This is with reference to many urban roads and peri-urban roads.
where the provision of facilities for different users as well as appropriate road signs, maintenance of road signs is also missing. We recently did one project with 3M so far as the reflectivity of the road signs is concerned, and we found that most of the road signs on the rural areas, they have lost the reflectivity to 20% to 30%. So once the signboards are placed, signs are placed, it's regular maintenance like we do the maintenance of shoulders, maintenance of the surface of the carriageway, maintenance of the sign is equally important so that driver gets proper guidance and information in time. This is about certain provisions which are faulty and defective and they fail to provide proper guidance and warning to the drivers. Curves and the intersections are the most vulnerable locations on our highways, and therefore proper treatment to these locations is necessary in terms of providing adequate sight distance and providing adequate guidance to the driver before they enter into such locations. These are certain observations near junctions, and when junctions are created by two different categories of roads, it becomes more complicated. Let us say some junctions are state highways with rural roads. So there is a separate department managing rural road, state highway is managing state highway, but then who will be developed and take care of junction, that becomes a major problem, and therefore it's only a kind of a patching of two road stretches, one state highway and one MDR or one village road, and that's why junction becomes nobody's baby. And therefore we have found that they become more critical locations so far as the safety is concerned. There are encroachments also, they become a kind of a pick up and drop off locations for IPT users, public transport users. Illumination is poor, visibility is completely obstructed, and of course when the traffic is heavy, they may not pose much safety constraint, but when the traffic is moderate to low, vehicles may ignore possibility of arrival of vehicle from the other conflicting path, and therefore it may become a potential crash spot. First case study is in South Gujarat near Surat, Pipodra to Cambridge section. Police people had asked us to carry out this work as a part of their some departmental assignment, and we did it. We carried out surveys at 23 locations. Fortunately, our traffic engineering lab is equipped with 4 number of drones and several sophisticated instruments so that we could collect very good data at all these locations. Their major worry was a conflict between pedestrian and the vehicles. NH is passing through highly industrialized corridor of South Gujarat. Around 40 kilometers is highly industrialized. So therefore, there are factories on one side of NH, workers stay on the other side. So therefore, crossing takes place at grade. And moreover, there are several median openings, and village roads and low category roads are directly given access through median openings. So therefore, these locations become quite crucial, and they had several issues related to fatal crashes, and NH48 is one of the busiest highway, interstate highway in the state. So therefore, round the clock 24 hours the traffic of very high density moves on this highway, and therefore we had taken up this assignment and we have identified certain pertinent issues. For example, this is the locations where the level of both the direction carriageways are different and they are separated by a railing, but railing is also not continuous. It is railing and people are waiting on this slope of the higher level carriageway, and it becomes very, very critical and rather unsafe for them to cross. Pedestrian crossings again, because the number of workers are high and therefore there should be adequate refuge. If we are not able to provide FOB, at least adequate refuge should be provided so that they can wait for the safe gap before they jump onto the carriageway. Similarly, at certain locations where there is T junctions or median opening, the rumbling strips were provided, but this transverse bar marking were, but they were worn out. So we have suggested that proper transverse bar marking should be carried out. So once it is done, every 6 months it needs to be replaced generally, because it is a highly trafficked highway.
Similarly, lane markings were also missing. It's a 3-lane dual carriageway, and many places even the lane marking is not present. So therefore, one can imagine how dangerous situation it would become, because again there are heavy commercial vehicles like multi-axle trucks moving at 40-50 km per hour, as well as the cars moving at 100 km per hour traveling together, and therefore one can imagine what kind of frustration car drivers will have once he or she does not get a pass, because HCVs are also using the fast lane, and therefore they are also forced to take the shoulder side lane for overtaking purpose, and in absence of any lane marking, they actually don't know whether they are driving in the a safe lane or within the lane available or not. Even at vulnerable locations where there are crossing, it is necessary. IRC also prescribes that there should be warning to the drivers in the form of the road studs, but that is also missing. So near bridges also, the separation between the pedestrian footpath and carriageway is also not clearly made through these grills, and therefore it becomes unsafe for pedestrian. Similarly, zebra crossing without road studs is also unsafe, because the vehicular speed we have found, it is 85th percentile speed is more than 60-65 km per hour, and therefore it becomes extremely vulnerable location so far as safety of pedestrian is concerned. Signages were found to be inadequate and improper. This is another stretch which is taken up from proactive measure point of view to identify the grey spots. This is in the eastern hilly terrain of state of Gujarat. We have studied around 30 curved locations on this highway, and we have tried to understand that how driver gets confused and how driver's speed change behavior is risky so far as the negotiating the curves is concerned. We also found that apart from rather undesirable surface conditions at several locations, there is no speed limit signs at several locations, and therefore drivers are left to their own judgment that at what speed they will negotiate the particular curve. So this is the alignment plan of this NH 953. It's 24 kilometer 2-lane carriageway, and the study conducted was mainly for the speed profiles of cars and the trucks, and also, as I mentioned, we have studied the curved locations. So speed of these different categories of vehicles was measured at 3 locations: at entry, midpoint and exit point. And we found that there is vast variation so far as the gradient is concerned, as well as the radius of the curve is concerned, and hence the response of the drivers at every curve has to be different. He enters at the same speed, but the speed at the safe speed at which he should negotiate is different. And we have found that there is a kind of a correlation between the curve severity of so far as its conflict potential is concerned with the crashes which are happening on this particular stretch. So this is the descriptive statistics of the speed data for all the locations, and this is the speed distribution. We found that car has lot of variation so far as its speed at the beginning of the curve, mid of the curve, and at the end of the curve is concerned. For HCVs, there is only difference between entry point and midpoint, but there is no variation so far as the midpoint and the end point is concerned. So we used this concept of consistency, whether the geometry is consistent in the sense driver is not taken by surprise, and by its naturalistic driving requirement and safe rates of acceleration and deceleration, he should be able to negotiate the curve. So these two criteria were used, and we found that the criteria number 1 is more suitable, and accordingly we categorize the number of curves whether they are good inconsistency, fair inconsistency, and poor inconsistency, and we found that majority of the curves are falling in fair and poor category, and we categorize these 12 curves so far as their crash statistic is concerned, and we can see there is very well established validation, kind of a correlation between the consistency of the curve and the crash rate. So here you can see the first set of bars are indicating the type of crashes. The highest, this is kind of fatalities, fatal Please crashes. conclude in another 2 minutes. Fatal crashes are happening where the curve is poor inconsistency,
whereas minor injuries are happening and where the curve has a fair consistency. And this is for another example of state highway. I will simply go through. These are the situations. I think if we change the way we look at the highway, we can identify what are the flaws on the roadside environment. And one location we studied, we found that there is no transition curve and directly circular curve has been provided. So we tried with three options with different lengths of the transition curve so that we can prevent this spot turning into the black spot. It is gray spot right now. So this is how we gave the solution, that we can shift the curve, provide a transition curve and increase the radius, which is 105 meter to 200 meter with the provision of the transition curve. Of course, land should be available if you want to do this kind of geometric corrections in the geometry. These are certain other observations on rural roads: missing signages, missing information, missing chevron marks, and these are all identified. Of course, now they are implementing. And again, for BRT, it is urban context, same thing. We are not taking care of the proper crossing facilities for pedestrian, proper warning wherever the segregation of mixed traffic and BRT traffic is taking place. Even people have to jump the median, and the vehicles and bus both are taken by surprise because the pedestrians are crossing the roadway. Again, this is where the BRT happens. There is no hazard marker, poor pedestrian crossing, and this is what I will conclude with, because we have to look at where we are. That's what we have seen and what is way forward. So first and foremost is inadequate human resource capacity in-house, within the department, and even in the industry. Both there is not strong capacity so far as road safety analysis, road safety study and road safety audit is concerned. This is where the institutions like NITs and IITs and CRRI can play a big role. Second is the geometrical inconsistency is the major cause, because most of the expansion works, development works of the highways are done in a patches, and therefore we are not able to maintain the consistency, and drivers' expectancy is violated. I have moved at in a particular geometrical environment, suddenly geometry changes, I am not informed in advance, I am unable to adjust to the new geometry, and that creates a very vulnerable situations. Secondly, wherever there is a transition in roadway environment, the pictures also showed the same thing, drivers are taken by surprise. So let us not give surprise to the drivers, whatever may be the road condition or road category. We have also seen there is inadequate on-site road signs and markings. Even the maintenance and repairs of road signs and marking is another major issue. The quality control of materials for road sign and marking is another major point of concern. So far as the reflectivity of this material is concerned. Again, we need to have a kind of a composite document like road safety manual, highway safety manual. US had 40 years before. We still have not begun efforts to develop our own highway safety manual, because treating a black spot is one thing, but what Professor Sikdar yesterday made out is a very important point, that we have to understand that why black spot is created. That means the traffic flow analysis, driver behavior, all those things are to be understood. And also once the black spot is treated, what changes in driver behavior has happened, those kind of lessons learned are to be documented, which can help us to decide best treatment for any potential conflicting crash spot. And finally, I would like to propose this 4F 3C approach. We have to take road safety audit as a very serious and formal business. It should be carried out as per the specified frequency. All stakeholders should be facilitative, as the PWD is the owner of the facility. They should facilitate other stakeholders to participate in this exercise, and most importantly finance, because when we undertook this road safety audit training programs, most of the engineers coming from even rural roads, they told, sir आप बोलते ये करो, but हमें तो पूरा 5 किलोमीटर का रोड के लिए साल का 5 लाख दिया है, कैसे हम ये सब करेंगे? So finance is one of the major issue, and I like to connect with what Professor Dr. Velmurugan has told. The life lost has a very high cost. As per ministry's own estimate, one life lost is equal to 1 crore rupees lost to the economy.
and also majority of the people who are losing the life belong to low income segment of the society, and therefore it has great social impact also. So I think the policy maker should take care that let us be very lavish so far as road safety provisions are concerned. And 3 C's are, it should be continuous, it's not a one point time exercise, it should be continuous, it should be coordinated with the different stakeholders, and also it should be comprehensive. Constructing the road, making road vehicle movement fast, that should not be our only objective. So with this I conclude, and more major problem which we are facing as from research point of view also, that we don't have adequate and reliable data. That point was also emphasized yesterday, and I think Mr. Naqvi also has highlighted few things, that now the real time data collection is being attempted, and that will make our decisions more realistic and rational. Thank you all for patience. Thank you, Professor Joshi. This was a very really illustrative presentation, and you have brought out various points and suggestions as well. So we can see from your presentation that the accident data, injuries, fatalities follow the same pattern in Gujarat as is the national average. There is no surprise that the vulnerable road user groups bear the brunt of the accidents. The cyclists, pedestrians, two-wheelers, they are the worst affected lot. And there is no surprise seeing this presentation, as Dr. Joshi, Professor Joshi has brought out, that hardly they are taken into consideration as far as facilities are to be provided. We really don't consider them. When we think that yes, the roads are meant only for motorists, so that is really a wrong concept. So we need to give equal priorities to these vulnerable road user groups by providing them sidewalks, footpaths, crossing facilities, alert systems, zebra crossings, and you see that the road safety audit carried out, that what attention has been paid to the road users. So unless we give them priority in our concepts while planning the roads, during construction as well as in the operation maintenance, providing crossing facilities, things are not going to improve. Another important aspect highlighted was that yes, road safety audit has to be done by a dedicated team, and it should involve all the stakeholders. It has to include the designers, planners, employer, all have to make their joint efforts, and the whatever observations are brought out by the audit team, they need to be complied with all sincerity. Even if some exemptions are to be made, yes, they have to be justified and reasons are to be given for that. So with these remarks, now the floor is open for the questions from the delegates. Yes, please. Yes. Good morning, sir. I am Associate Professor, myself Sudhanshu Dubey, Associate Professor in Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya, and Transportation in charge also there. I want to ask the question from Dr. Velmurugan sir. Sir, you have nicely explained about the IT and artificial intelligence tool that can enhance in road safety. But my question is, can you give some detail about this CAS, collision avoidance systems? Yeah. For how Yeah. it works and where it Yeah. is kept? Yes, sir. Yeah, to paucity of time I didn't mention. Actually, it's a simple thing which you see it in high-end cars. The same thing has been put in this particular bus also. Which is, if you see, if you go for procuring a vehicle which is in excess of 15 lakhs or 18 lakhs, you will, they have that alerts will come, which is primarily if a vehicle has come in front, that forward collision alert, it will come.
that is 2.5 seconds before the possible collision. And similarly, that is, and if the lane departure happens without giving the indicator, it will give a lane departure alert. And similarly, if some vehicle, if your subject vehicle is going beyond 20 kmph, and if there is some object is in front, it may be a pedestrian who is moving, or maybe a pedestrian is standing, or a two-wheeler is standing, or two-wheeler is moving, it will give a this pedestrian collision alert. And similarly, your headway monitoring, like headway will be monitored based on the spacing between your vehicle and the subject vehicle. So that is what the simple thing about collision avoidance system. ओके थैंक यू सर। जोशी सर से एक चीज़ और बोलना थी सर, BRTS सूरत के बारे में आपने बताया, यहाँ भी देखिएगा सर BRTS इंदौर, क्योंकि पेडिस्ट्रियन के लिए फैसिलिटी यहाँ भी बहुत कम है सर, फुट ओवर ब्रिज और फुटपाथ की विड्थ भी कम है। ये अब आप इंदौर आए हैं तो यहाँ की BRTS भी देखिएगा। आपने सूरत के बारे में भी बताया सर। जी थैंक यू सर। हेडवे डिस्टेंस जो आपने बताया वो कितना होता है? दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है? या दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है। कैन वी यूज इट ऑन द फॉगी वेदर? Yeah, foggy weather, it should work, but in Nagpur as of now, that kind of intense fog has not been witnessed, and we didn't find that it is not working. But night time it is giving without any problems. That is what I can say. Foggy weather, how much full accuracy के साथ काम कर रहा है, I can't vouch on it as of now. Please extend your research into this, sir. Yeah, North Indian part, unless otherwise we do it with the authority, we can just say. If it is successful, then it can be implemented, it can be provided on all the vehicles, particularly on the northern regions during Yeah, that's foggy weather. correct. The actual cost Yeah, of I this think, system is not more than 35,000. That's right. Sir, it was, this device was manufactured by some automobile Yeah, manufacturers? Mobileye is the name of the company which has manufactured, and Intel has procured I it. But think, this- point here is that this- it is in this- so this many device other is- Volvo also. This alert system is already there in some high-end vehicles. High-end cars, that's what it is. there. High-end cars, I think these alert systems are already there. Yeah, it should be working in Mercedes this or thing also. these high-end vehicles are already having it. Same one, but only, yes. exactly the same one. exactly But same. these, yes, medium cars, lower model cars, they are not having it. They are not there, that's correct, sir. Sir, I am Manish Asati, Project Director, NHAI Indore, sir. Sir, one issue I would like to flag, sir. All along the national highway there are ribbon developments, and all along the national highway there are unauthorized encroachers and accesses also. Many shops are being opened without any proper access. Even local authorities, state government authorities, road department, we all connect our roads with the national highway without having any proper junctions as well. We don't have the enough powers under the highway administration also, because we only have the powers to cut the access. But sir, cutting takes more effort than refilling it. So practically there is no control on this ribbon development. There are provisions of building line and control line also at the 40 meter or 75 meter, but I think state government is not imposing that also. All along the national highways, ribbon developments are taking place without any hindrance, and they may be one of the major cause of national highways. National highways are meant for high speed, whereas and it is not meant for the mixed traffic, it is meant primarily for the through traffic. But unfortunately, all kind of mixed traffic and everything is taking place. So what efforts we can make in this, and what provisions in law we can Yes, that is in fact, very well valid point raised by you. In fact, we have been discussing that why the black spots are happening. There should be no occasion for rectification of the black spots. Why we allow the black spots to develop? In fact, when the road is constructed or some bypass is constructed or greenfield project is taken up,
we take all precautionary measures, we carry out the road safety audit, accordingly we construct the roads. Initially, there will not be any kind of black spots. All the junctions are very well designed and everything is fine. But what happens with the passage of time, we see that as he has already pointed out, that we allow the construction to proceed to happen, some with approval, some without approval, some are not taking even access permissions also. And with this development, what happens? Some of the sections, some of the junctions, they first develop into grey spots, and ultimately, with the increase in traffic, with the increased flow of the traffic, then these develop into the black spots. So there are acts and rules in place. National Highway Road and Traffic Control of Land and Traffic Act is already there, but the effective enforcement is not there. Highway administrators are not able to discharge their duties. Maybe they are engaged in a lot many other works, and it becomes very difficult for them to control those things. Then there are land order issues. They do not have enough punitive powers under the Act. Police help is not always available. So yes, implementation issues are there, and unless this ribbon development is checked, then it is very difficult to check these things, and ultimately we need to provide crossing facilities, we need to improve the junctions with the passage of time. So it is not that the grey spots, black spots, these have developed over a period of time, and the contributory factor. In fact, we are developing bypass, and one of the objective is that it will lead to economic and social development, it will lead to development of the city. So once our objective is that it will lead to development of the city, then it is very difficult to check the ribbon development. Development has to come, and city will develop along the bypass, and as a resultant, after 10, 20, 15 years, there is need of another bypass. So this is how the development is taking place, and yes, as a policy planner, some policy has to be thought of, and yes, I believe that with passage of time, this will be given due consideration, and we may come up with some policy plan at the national level. Sir, I have one suggestion, sir. Since the matter is being monitored by the Honorable Supreme Court itself, if Ministry takes this matter with the Honorable Supreme Court, so all the concerned authorities will be given suitable directions not to allow the ribbon development on the national highways, and through that perhaps the policy of the Ministry is already in place, sir. Policy is available, but enforcement or compliance is not available. I think Mr. Patel Yes, has sir. some suggestion to make. Yeah, Yes. yeah, that is actually a good question. This ribbon development is taking place all along the national highways, state highways. See, one suggestion, or of course, any building activity if takes place, that has to have a permission from concerned authorities. There, our role comes, engineer role comes, NH or SH, state PWD or NH people. NOC has to be issued. Unless NOC is issued, he can't give a permission for construction. So ribbon development is bound to come because it is an economic activity. But we can make 100 meter on each, I mean like each side, either side of the road, national highway, 50 meter on state highway, something that if anything coming within that purview, some such recommendation, clear-cut recommendation from the, goes from our end. Sir, it then is only, already in because place, see, sir. road owners are PWD or NH. Sir, it is already in place, sir. We have the provision of building line and control line also. Yeah. So it is there. Control Yes. line is there. Building Yes. line is As a there. we know. policy, it is Yeah, there. policy is there. Government's orders are also there. But the developmental or construction activities are taking place. So they have to give a permission. Without permission, if it is going to be built, then that should be demolished.
So that mandate should go from our PWD or NH to concerned authorities like municipal corporations or corporations Sir, or that- village authorities that or also- town municipalities. Sir, that also I have written to the town and country planning also, and but ultimately. Right. What happens, you see, in municipal areas, you will have to, that Control Act is not applicable in municipal areas. Outside municipal areas, yes, that access premises you can deny. And from the right of way up to 30 meters, no construction can be allowed. But in municipal areas, that construction has to be allowed, and that 30 meter limit for construction does not apply. And once you construct a bypass, and then municipal limits also keep on extending. So local authorities, they increase the municipal limits, and then again it comes into that exemption limit, and ribbon development is bound to take place. Sir, we are not averse to the development of whatever, but we are only concerned with the proper accesses. They should not be allowed without proper access. That is right. Yes, but you see, the development plan has to be fixed. So one way could be that even if you allow the construction, then approach should not be, their frontage should not be towards the road. Let it be on the other side. Frontage has to be on the other side. You provide one approach, and then you provide a common road. And Yes, if a through service road. the commercial establishment, they have the approaches on the other side, then I think problem can be solved. But this can only be done if there are proper development plans are there and those are enforced. So सर Thank you, sir. सर मैं yes, मेरा please, ये yes. सर ड्राइविंग के लिए जो सेफ विजन है, रोड की विजिबिलिटी वो बड़ा मायने रखती है। तो जो सेफ विजन है वो क्या होनी चाहिए, और क्या ये स्पीड के आधार पे बदलती रहती है क्या? या उसी के हिसाब से ही हमने दिया हुआ, लाइक अगर वो स्पीड के हिसाब से 20 किलोमीटर के ऊपर कोई भी अपना गाड़ी में अडास लगा हुआ तो आपको तुरंत आगे में कुछ ऑब्जेक्ट होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मोबाइल ऑब्जेक्ट, और अदरवाइज आपका हेडवे जो स्पेस बिटवीन दैट योर व्हीकल एंड द नेक्स्ट व्हीकल इज विद इन दैट 2.5 सेकेंड का ऊपर होगा तो इट विल गिव एन अलर्ट. सो वो वाला हम बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल के हिसाब से आ रहा है. दैट वे डिजाइन स्पीड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड द कॉरिडोर स्पीड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. उसी के हिसाब से ही हो रही है. हाँ, पहले आपको ग्रीन में आएगा अलर्ट, फिर उसके बाद लाल में आएगा अलॉन्ग विद ऑडियो एंड विजुअल अलर्ट्स. मैं समय नहीं था इसलिए मैं पूरा उसका एक्सप्लेन नहीं कराया, बट इट इज अ सिंपल थिंग. सर आई वांट टू इसी पे था सर, ये जो व्हीकल इंजीनियरिंग या डिजाइन जो करते हैं, इन पे अब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आने लगे हैं जिन पे हमको अलर्ट मिलता है. मेरा एक रिक्वेस्ट यही था कि इसी पे एक सेंसर जो है उस सेफ विजन को कैच करते हुए और भी तरीके से बेहतर तरीके से हमको अलर्ट कर सके. इस तरह की अगर डिजाइन अगर आ जाए तो एक्सीडेंट्स हम कुछ कम. वही अलर्ट तो ड्राइवर को ही आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप बोल रहे हैं सड़क में जाने वाला का नहीं, जो आ रहा अलर्ट जो गाड़ी में बैठा है वो ड्राइवर को ही आ रही है अलर्ट. No, in fact, what you are saying is yes, right. You see, in some high-end mode, you see in some vehicles, whatever is the speed limit on various sections of the highways. So that your alert system can provide you the details. You see, sometimes you are traveling on the road, but you miss the speed limit signs. They are not visible, or you do not note them and you miss them. Then your alert systems in the vehicle itself, they will tell you that this is the speed limit on this stretch and you are overspeeding. So these alert systems are already available, but right now they are there in the very expensive car models only, not in. करेक्ट सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि व्हीकल की स्पीड के हिसाब से हमको अलर्ट तो मिलता है, बट विजिबिलिटी के हिसाब से जो गाड़ी सेंसर करे और उसके बाद में अलर्ट करे तो थोड़ा ये मॉडिफाई हो जाएगा सर. But visibility, yes, is there. Yes, on adverse weather conditions, it is always advisable that during rainy season, adverse weather conditions, drivers, they have to slow down the vehicles.
It is a general preventive measure that you should go, otherwise, because as per weather conditions, what could be speed limit? Yes, this can also be provided in the alert system, this advanced warning systems. Yes, this can be inbuilt and provided. This can be done. Sir, Namaskar, sir. Yes, please. Sir, I want to ask Joshi sir, the major road conflict points are developed at the junction of rural road and lower category road with the higher category road. So at those junctions, and in so many places everyone sees that there are chai gumti or bus stop, they creates a side distance obstruction for the both vehicles, higher category vehicles and lower category vehicles. That is to be implemented very well. Yeah, actually, if you look at IR, because it is not in your control, let us look at what is in our control. What is on our control is how we manage our roadway. So, in such cases, even if you look at IRC 99, its code for traffic calming measures, they have suggested that they identified the junction influence area. Every intersection has an influence area. So, in that influence area, we should take speed calming measures. Let us say, because it should not in any case be more than 30 km/h when the vehicle enters in the core area. So you can have speed reduction measures right at 100-150 meter ahead of the junction. So you can do it gradually, like those transverse bar markings, all those things, they are already prescribed by IRC. So one can have a look at it and have effective junction management. Sir, at so many places in the state highways and national highways, bus stops are installed just at the junction of the lower category roads. I would like to add what Professor Joshi has said. You see, at the junctions, you should acquire adequate length so that line of sight is not obstructed. At the time of design, if you acquire the length and line of sight is clear, then any construction, some new thing will come up only beyond your right of way only, and it is in that case it will not obstruct your right of way. So proper land acquisition, whatever is required, is the key in this case. So I think we are running over time. Last question, please. Yes. The study is carried out in a very well manner, and but I am just concerned about the remedy measures which you have suggested. I have recently visited Nagpur also. What do you think? Most of the roads belongs to the municipal corporation and they are in the city areas. So in the last your end slides, whatever you have shown the remedial measures, what do you think? Will it be possible to carry out those measures, and will you be able to acquire the land and demolish the structures? So I doubt that these measures will be able to see the light of the day. Sir, just I want to clarify, in none of the locations we asked for any land acquisition. Zero land acquisition was told, and there is no land acquisition. And also, as you rightly pointed out, the stakeholders are many. Under NMC, 4 road, NHA under 4 road, 4 location rather, and NH division का अंदर around 15 location है. वो जो city का अंदर NH road जाती है ना, NH division, and World Bank division का अंदर 8 location है. So that way उन लोगों को हमने जाकर drawing भी दिया, and कहीं पे भी हमने land acquisition का कुछ है ही नहीं है. It is only the poor road geometrics need to be looked into, and also the side distance aspect. कुछ जगह में कुछ obstructions है, उसको निकालना पड़ेगा. Otherwise land acquisition लेकर नहीं किया. In the black spots, in gray spot में हम लोग we are in the process of developing the solutions. Till now we are not developing. Obstruction, you mean demolition of some part of some structure, or? Yes sir, some culverts are having problem. So the culvert need to be done. In that location the cost can be higher, but otherwise in other locations the cost is not, is ranging between 28 lakhs to 80 lakhs. In the black spots, I am telling in the black spot locations.
Whatever we have done for 4 locations, we did this study of actually working out the bill of quantity. That was remaining, we didn't do it, but we have given to the respective stakeholders for implementation. At least in NMC roads, because they are one of the stakeholder, वो लोगों ने assurance दिया, they are now working out the BOQ and they are getting the budget and they will implement it. 4 locations within the city. But NH division roads में till now no assurance has come. हम लोग उनसे pursue कर रहा है. And similarly World Bank division roads में भी. NHA ने बोला है we are implementing. NHA के under 4 roads है. Mr. Ashish Asati, he is the person who is there. आजकल उनसे हमने ये हुआ था, मुलाकात हुआ था. उन्होंने 4 locations में करवा रहा है. And have you suggested Okay, thank you so much. structure? No questions. Now I would request my colleague and co-chair Patil ji to sum up the key points. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sir, I would like to take only 10 to 15 seconds, sir. Very important question, sir. No, please. In next section, you may raise your point, please. Friends, today's morning session, 2 presenters really presented beautiful and meaningful presentations. One being intelligent solutions to traffic problems. We all know that road safety has taken a front seat in engineering field right now because of good roads. Irony is that a lot of accidents are increasing. I mean, it is good roads causing more accidents. So it is due to, I would say always we should target a speed. So regarding speed, we should stress what is the speed limit should be given to national highways. Second thing, lane discipline. Then third thing, this direct access to state highways, national highways by pedestrians, like commercial, all commuters, even schools are all along our state highways and national highways. State highways and national highway passes through cities and villages. Here, intelligent solutions, a presentation given by Velu Murugan sir, scientist from CSIR, really gives a lot of hope in the future, because Nagpur city, they have analyzed Nagpur city and 50 fleet of NMC buses and driver training. Really, of course, it has started last year and yet to go long way. Tried, tested and proven technology has to be adopted. It is our in-house in-house study by CSIR with some other stakeholders. Really, it will give a good result. Really, it is, I mean, like in future, we can think of intelligent solutions to all traffic hazards. And one more thing added, that ADAS device is given to buses. So it's a forewarning system to drivers. One question was visibility. If visibility is less, then even alarming system. Yeah, high-end vehicles have already got it, but it has to come to, I mean, like other vehicles also in Indian context. 6-day training program was given to drivers, it is told. I hope that the 6-day training program, was it sufficient? That was my question actually for drivers of Nagpur. If almost all metropolitan cities or big cities, all the drivers of government, if they are trained, then automatically there will be less collisions, less deaths, less fatalities. So they said the detection of gray spots. Yeah, already black spots we are finding on our state highways and national highways. They have analyzed with the 3 vectors, that is the mobility, infrastructure, and one more, that is safety. So all three vectors they have addressed. Really, it is a meaningful analysis. We should, we have to learn more from that. So they have followed up Morse protocol instead of IRC 131 has come latest. So they have followed a Morse protocol for black spot identification and analysis. That's a really good presentation. Analysis only of NMC fleet. One more question I would like to ask Velu Murugan, whether only this NMC buses, if analyzed, is correct
Instead of that, you select a mixed traffic, mixed vehicles, then it would have been more realistic. We've taken school buses also. Okay, wonderful. Yeah, wonderful. Data we are analyzing. Yeah, then one more in his presentation, he said through NGOs equipping volunteers with the life-saving kits. Yeah, really good move. This gives a better solution to problems of our cities and even traffic problems. Second presentation being Professor G.J. Joshi sir, road safety audit on NH 48 and NH 953. NH 48 with the 28 kilometer stretch and NH 953 around 24 kilometer stretch, they have taken for audit. See, usually auditing our roads, when we build our roads with all proper geometrics, with all IRC code guidelines or with proper specifications, usually we go with, of course, in National Highway NH, they are going with the IRI analysis and skid resistance and safety, all safety measures like marking and other things, signboards, signages, even then. So audit is finding, I mean, showing that engineering features are not correct. That's called black spot only, as per, I mean, what we have established. All engineering fraternity has come to understanding that black spot has to be addressed. But while designing, we take all the case. Even then, we are getting some black spots. It is said, Joshi sir was telling, it is actually driver's behavior after construction of a road or using a road. That has to be analyzed. Instead of that, if we limit the speed of our vehicles on the roads with a particular speed, then automatically, if implementation takes place, then there won't be much problem. We are giving a product to society, but we are not managing. The people who are flying on our roads has to be given mandate from our end. So we are only telling our engineering, engineering field, like road pedestrian path is not good, road is not good, roads are not built properly. No, it's not correct actually. Roads are built as per specifications. Even assessment has taken place like IRI study immediately after completion. Then skid resistance has been analyzed. All the facilities, all the precautions have been taken place. Even then accidents are taking place. So this is not due to our road. Actually, this is due to behavior of drivers who are people who are flying with the vehicles. So that has to be addressed. So that is coming up. Everybody, at least such seminars, international seminars, throw us light on what are the real issues. I hope these two presenters, Joshi sir, enlightened us in two stretches. One stretch first being passing through cities. See, usually I say whenever that road or stretch passes through cities or towns, amenities given all along the road have to be given a separate path. That is side path or walking path or what you can say service road. So they should directly enter to service roads or side paths, not directly on state highway, national highways, or even MDRs. So almost all cities have got a problem with the land, availability of land. Land acquisition issue is there. So both the presenters made us more aware about of this traffic tragedies and hazards. Plus, what are the precautions to be taken in future? We should adopt in our designing and planning and execution. Automatically, we can give good roads to our people. With this note, I thank Chair and I thank IRC and team and all the delegates. Thank you. Thank you, friends. Thank you, Bhattaji. So, before you conclude, I take this opportunity, I thanking once again to Dr. Muruganji, Professor Joshi ji, and my co-chair. And I see that the attendance is full in the house, and I thank all the delegates for a very lively floor discussion and taking keen interest in the deliberations. Thanks to all of you. Thank you very much. Sorry. Thank you, sir. I request the chairman to please felicitate the presenter with a token of appreciation.
So I request the chairman to please felicitate the presenter. I request Mr. ML Purbia, Project Director, National Highway Authority of India, Ujjain, to please felicitate the chairman and the co-chairman. I request you all to please proceed for a 15-minute tea break. We are running behind the schedule for almost 60 minutes, so please be quick.
अरे सर आप इधर बैठो सर, अरे बैठो बैठो, अरे आप बैठो सर, पास पास करते थोड़े, यंग लोग पीछे आ जाएंगे। ले लो यार, ले लो। हेलो सर बिल्कुल माइक लेके तैयार। अरे तू कल से नहीं कर रहा है।
Engineering, Scenario of Traffic Safety in Development of National Highways in Madhya Pradesh, Vehicle Technologies for Road Safety, and Road Safety Engineering Interventions. We have the honor to have Mr. Ajay Gupta, Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Public Works Department, as the Chairman, and Dr. Velu Murugan, Senior Scientist, Council of Scientific and Industrial Research, Central Road Research Institute, as the Co-Chairman. I request the Chairman and Co-Chairman to please take their seats on the dais. I request Mr. Manish Sasati, Project Director, National Highway Authority of India, Indore, to please felicitate the Chairman and the Co-Chairman. The presenters of these sessions are Dr. A. Mohan Rao, Senior Principal Scientist, Central Road Research Institute, Mr. Vivek Jaiswal, Chief General Manager and Regional Officer, National Highway Authority of India, Bhopal, Mr. Sagar Bendre from Netrex, Professor P.K. Agrawal from Manit, Bhopal. I request all the presenters to please take their seat on the dais. I request Mr. Ravindra Gupta, Project Director, National Highway Authority of India from Ratlam, to please welcome the presenters. I request the Chairman to please conduct the session. Hello. Good morning, everybody. So we'll now start technical presentation session 5. So we are here 4 presentators, distinguished presentators. Dr. Mohan Rao who will be giving presentation on human factor and road engineering. Then second presentation is on road safety scenario and achievements with development by Shri Vivek Jaiswal, CGM and RO, NHI Bhopal. Presentation 3 is on vehicle technologies for road safety by Sagar Bendre, Netrex. Then last presentation is number 4 is on road safety engineering intervention by Professor P.K. Agrawal, MANIT Bhopal. First of all, I will invite Dr. A. Mohan Rao, CSIR, CRRI, to give his presentation in 15 minutes. Thank you.
Yeah, good morning all. First of all, I thank you organizers for giving a opportunity to share my thoughts on the human factors on road engineering. And yeah, this is in the road crashes, human means driver is involved and is a major source of the cause of accident. But if you see the driving challenges when you are when a vehicle is driving on road, there is a three major components involved in it. One is the vehicle, driver, and driving environment. The factors which causes for accident of the vehicle is vehicle speed, acceleration, deceleration, and the factors of the driver is age, gender, and experiences, thinking, and psychological and mental behavior also causes the leads to the accidents. But when you are coming to the driving environment, actually in the driving environment, the driver has to see many parameters and he has to be conceive that information and act it. Everything it comes into the driving environment. When he is driving on it, first what he has to do, he has to perceive, he has to have a perceive what is going on the road, and he has to project because the vehicle is on the a certain speed it is going. For that situation, he has to, in his mind, he has to project it, and he has to comprehend the situation, has to act on it. And driver actions are the two types. One is the attention element, another is the distraction. Okay, if he is acting, say for example, he has to reduce the speed. That is the action. He will see something and he will take a decision. Then that is the attention element, which is a good for a reduction of the accident. Like distraction element. Distraction elements are the three types. If it is a eyes off of the road, if any action is taking his eyes away from the road, it is a distraction. And second is if his hands away from the steering. For any reason, he is taking his hands away from the steering, that is a distraction. And his mind is away from the driving phenomena. Okay, this is a very complicated situation, and to find out the how his mind is away and how to quantify that things, that comes as a behavior which is a distraction. That is a driver distraction. All you know from yesterday and today also, drive accident causes are, if you take infrastructure, vehicle and driver, human phenomena is the more contributing factor for accident. It contributes around 80%. Okay, to track this driver behavior, what we have to do, we have to track is vision parameter. Vision parameter captured by the eye tracking system. How we will track that, I will tell in the next slides. And in that, what is that? Driver gauge is the main parameter. Then what is meant by driver gauge? Driver gauge is when he is driving the vehicle, where he is seeing, how he is seeing, how much he is concentrating on a particular element, that is the driver gauge. Okay, that driver gauge is in the eye tracking we will have to study. Okay, eye tracking, it is a small wearable glass. I have in the next slide that picture also. He has to wear when he is driving, so that all his behavior parameters is converted into the data and in front of us. Actually, it helps us to distract, analyze the driver distraction. Okay, that will help us to analyze it. Then eye tracking, it is what it does, it captures where the subject is looking and how much time is looking. That is the things. And the detection of the where the driver is looking is a motion in eye, means when the vehicle is moving, even his movements of the sight also, it moves. And by driver tracking, analyze the area of the interest, means we will divide vision into different areas that I will discuss in detail next slide. Yeah, this is the eye tracking device. It is a simple glass but fitted with many instrument in it. In the central portion, that is the full HD camera is there, which records everything in front of where he is looking. And the speaker also is there. Whatever the sounds and everything, it records in that data collection system. And in this glass, there is a cameras are there and gyroscope also it is there. That gyro, what it says, how is looking, at what speed it is looking, it will
collects the data. Okay, then it will give you, it will collect in the data acquisition system. This can be used in the simulator, means in-house, and on-board also, in the road also. This picture in front of you is how we are collecting the data in the field. Like driver, he has to wear, in the first photo, he has to wear, this is a glass. Even any driver having a sight problem, he can wear that sight number glasses. Over it, he can wear this eye tracker devices. It has a data acquisition system. In that, what is this? It can be in front of you, entire situation it will show you. If anything is wrongly recording, wrong actions are taking place, then we can immediately take a look on it. That is on field. This video is we collected in the simulator. In the simulator at the CRRI, we have a simulator. That is the vehicle body is the actual, and ABC, accelerator, brake and clutch are the actual, everything. But here the stimuli, the road is the, we will introduce to the driver, it is on the video. That then against his actions will record the how the driver is performing against the brake and the clutch and what actions he is taking. Same thing. In this, we have a software. This is the field collected. All my results I am presenting here is only field data only. In that, the video you are seeing in the top, it is a collected in the field. In this way, you can see after coming to office also. So, in this entire area, the vision of the driver area, we have to divide into different areas. Okay, that is area of the interest. So then we will analyze what is the behavior in the different areas. How I divided in the next slide. And the time of interest is because when the driver is driving his vehicle, many geometric elements comes. He drives the vehicle on straight, on the curve section, on the intersections. That we have to capture in the time of interest, means on the geometric elements we can capture. That is the TOIs. And the events, driver will see many events. He will see signboard, he will see speed breaker, front vehicle, median, everything that we capture as a events. Okay. Further, afterwards, while doing the event analysis, what we do, we will, whether it is the attraction element or the distraction elements, we will see. Actually, this AOIs, as I told, whatever the vision is available on the windshield, it is divided into different areas. That is known as area of interest. But when we are dividing that area of interest, what we are taken into consideration is, there is a crash is taken place, then crash angles are there. Of course, this study is not from India. There is a different, it is a frontal crash angle, that is 35% of accidents are taking place in their study due to the front, and the front also side, left side, right side, even side saps also is taking left and front, and the back end collisions also in the exactly back and the left and right. These are the studies, but here while dividing this entire vision area is taken, that crash angles are taken into consideration. Like in this 9 area of interest we are covered, like frontal vision, what is the front of is in it, and right side, left side, that way I am divided entire is area into 9 different area of interests. Then coming to TOIs, means this is a time of interest. I want to observe the state, what is the behavior, curve or intersection, how is behaving. But coming to toll plaza, actually here we are doing this entire studies, what I am presenting, it is a research studies conducting at CRRI, and this toll plaza also causing many accident source at that location. We have a 2 or 3 stretches where around 12% of the accidents are causing at that toll plaza. So we were planning to study in minutely these toll plazas. That's why here I divided into 6 areas of interest, like in the merging area 3, after diverging 3. This study we are conducting in association with the SVNIT. Okay, this input parameter like events in the traffic, everything, traffic signs and pedestrians, everything, we captured it. How much time he is looking, at what area of interest he is looking, at what the time of interest is the driver is looking, that parameters.
Actually, this software, it will enables you to analyze in that parameter and the export into the third party softwares. Okay, coming to what are the parameters which we can analyze for the driver safety, like eye position, like if I am seeing in this direction, center on the, if we divide into 4 quadrants, and the where is looking, that position of the eye also we can make use to analyze the accidents, gauge plots, and the duration of the fixation. Duration of the fixation means if I see any person more than 30 milliseconds, then only my mind is recording his image in the memory. If I am seeing less than that, it won't recognize mind, okay. That is that things we have to define. And more you are fixating, you are more information you are conceiving. For that we can use it. And visit duration, AOI visit duration means different crash angles are there. If any particular crash angle is more, accidents are taking place, in the same portion he has to look in that area of interest. That we can do. Fixation duration, if duration is more, only then that information is conceived. And the events, and like people size, actually our eyeball size says many things of the body. Like if it is a bigger and is stress levels, it will tell you how much stress is undergoing while driving it. That we can do it. Like in the vision, there is two, one is a saccade and the another is fixation. It is nothing but if I am started looking one particular object, I am fixating some particular time, that is the fixation, then I am moving my looks to other, this is the saccades. The saccade velocity, and it tells many things. If you are in the high stress, that saccade velocity is more that way, that things we can, this parameter will take. Like gauge I told, all this saccade frequency, people diameter, it tells about the how fatigue and how your stress level when you are driving. As gauge concentration tells it where you are looking, saccade frequency, all these things we can interpret these results with the safety parameters. Okay, these are the some of the theory, means what are the parameters, how we can make use, quantify the driver. Here I am presenting to you some of the results where we find for the 4-lane and 6-lane roads. As I told, area of interest are divided into different, like frontal vision, LSW, LBW, that if you take frontal vision means front side of the vision, around it is seeing 93 to 95% of the driver is spending his time frontal, it is good. But if you minutely see in the, okay, in the 6-lane road, is frontal vision is less, means is distracting to other things. In the right to mirrors, in the 6-lane it is less, and you see mirrors, if you say RSM and whatever, left side mirror, right side mirror and the central mirror, all the drivers are the avoiding, very less time they are spending. Kaskar 6-lane road, the driver is looking very nominal in the odometer. You are saying there is a speed limit is there. To adhere to the speed limit, driver has to look the odometer of the vehicle, then only he can adhere. But the existing behavior is looking very less. And this is the published data of the MORTH to accident parameter. Around 20% of the accidents are the causing due to rear end collision. Means, but the driver is looking around 0.5% on the 4-lane, 0.05, 0.088% of the 6-lane. His view, their concentration is very less. Coming to side swap collisions is looking very nominal. Unless he will change this behavior of this area, then only that it is possible to concentrate, reduce that accidents. Okay. If you take gauge plots in the state section, in this way, this I can skip. Okay, this impact of the gauge visit duration, like if you take curve and the state and the intersection, in the, if you see on the curves at the intersections decreasing, this mirror angles are significantly decreasing on the curves and the intersection. He is not looking on the curves on the intersections,
And the state sections, divergence constant, all AO, state sections it is okay, but while driving at the intersections, he is alert about his surrounding. That's why he is able to concentrate only 90%. It is truly reflecting ground reality. But when you are coming to the on the curve section, if it is a right curve, driver is looking right. In the left curve, driver is looking left. That needs to be analyzed fully. But if you see people dia, that stress, yeah, it's over, sir. 1 minute. People dia, if you say on the curve section, it is the less. Means when the driver is driving on the curve section, is the stress free. Means he is taken grant, is not under stress. That's why, but the accidents, more accidents are the taking place at the curves. But while driving, curve is the thing. But here you see people dia, when driver is looking on the sharps or the encroachments, is more stress. That this results is alarming. That's why we should not allow any ribbon development or the things. This is one more preview distances, means how much distance he is able to see, what different against each element. But driver is looking very low, the less values of the preview distance are coming in the 6-lane roads. Okay, this is like if you see first is the 4-lane roads for the follow-up vehicle. Frontal vehicle just mostly is able to see less than the 100 meters. Coming to 6-lane is less than 50 meters he is able to see. If you see Greenfield Highway, you are saying you maintain a 70 meters of the headway, but this is the actual driver behavior. He is not able to concentrate whatever the reason, but he is not conceiving that whatever you are putting thing. And the way forward things is the dominating frontal vision, but dominating frontal vision is reducing in the lanes or the increasing. Like 6-lane, it has to be, driver has to be trained in the full way. That's why he should take care about it. In the curve, he is not fixating anything. He is not looking the objects properly on the curve section, but accidents are the more. This behavior we have to change of the driver. Next, at the cognitive load on the providing significant on the driver, that we have to take care. And the preview distances are coming in the 6-lane road. Probably that 2 sides sign you are putting, that information is not fully conceiving the driver. So gauge behavior at this moment, it is a scientific way, means driver to understand his gauge behavior, we have to train the driver fully to where he has to look, what he has to look. So then only we will reduce the accidents occurring on that location. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Rao. Now I'll request Mr. Vivek Jaiswal to give his presentation. Good afternoon. We are very thankful for IRC for giving this opportunity and conducting this IRC seminar in Indore, in the state of Madhya Pradesh at Indore. And also I am thankful for giving me opportunity to say about the scenario of road safety in development of national highways in the state of Madhya Pradesh. शेयर करें? नहीं ये नहीं है. हाँ. बढ़ेगा कैसे? Sir, basically in Madhya Pradesh, we have this road network in Madhya Pradesh, one corridor from Gwalior to Sendwa, one corridor to Gwalior to Lucknow and to Sivni, via Sivni to Nagpur, then from Rewa to Lucknow and Nagpur, then
one more corridor we are preparing, this 245 kilometers on the extreme western side, the expressway. This is what we are proceeding in Madhya Pradesh by National Highway Authority of India. मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि out of total national highway network in the state of Madhya Pradesh, that is around 9,300 kilometers, about 4,700 kilometers are with National Highway Authority of India. Out of this 4,700 kilometers, 6 to 8 lanes are approximately 290 kilometers, out of which 169 kilometers are completed, 125 kilometers are in under progress, mainly at expressway. Then 4 lane, out of 3,400, approximately 2,200 kilometers of 4 lane has been done. Then paved shoulders, then approximately 382 kilometers are there, which we have to see for the development. So this is the scenario of status of road widths in Madhya Pradesh. And now I am skipping all the statistics regarding the data on NHS which we have discussed in the last sessions, and taking specific attributes which are causing the accidents in non-national highways. If we see कि जो कल हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में और PTRI की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी बेसिकली अगर हम देखें तो ओवर स्पीडिंग ही हर जगह बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग अबाउट 82% है एक्सीडेंट के कॉज। अच्छा, मैं अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, सभी असिस्टेंट इंजीनियर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज़ें हम यहाँ NHI में कर रहे हैं, जो हमारे रोड सेफ्टी ऑफिसर कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर ये उचित लगता है तो प्लीज़ इसको लेके आगे भी बढ़ें। और अथॉरिटी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वे अहेड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो एक चीज़ जो अनएड्रेस्ड है वो ये कि यूटिलिटी शिफ्टिंग्स, जो यूटिलिटी की परमिशन हम देते हैं उसको हमको विलेज रोड से ही ध्यान रखना है कि कहाँ पे दें। हम अपने स्टेट रोड्स पे ही ध्यान रखें कि कहाँ पे दें, क्योंकि बाद में वही यूटिलिटी शिफ्टिंग हमको शिफ्ट करनी पड़ती हैं और रोड सेफ्टी के कॉजेज कहीं कहीं आते हैं। मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको जो एड्रेस करना है वो ओवर स्पीड, ये जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं इसमें ओवर स्पीडिंग अबाउट 82% है। देन अगर आप देखें तो ड्राइविंग ऑन रॉन्ग लेन वो करीब 5% है, तीसरा जो एट्रीब्यूट है। बाकी सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे वो ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को भी हम कैप्चर एड्रेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको ओवर स्पीडिंग को देखना है और ये जो ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड है। इसके बाद अगर हम देखें तो जंक्शंस एक्सीडेंट्स कहाँ हो रहे हैं, अगर हमने जो अपने डेटा एनालाइज किए उसमें देखा कि मेनली टी जंक्शंस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली अगर हम देखें तो DPR स्टेज पे हमने जो कोशिश भी करी है और सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे या यहाँ हम आपसे शेयर भी करेंगे कि यूनी डायरेक्शनल फ्लाईओवर या VUPs हम प्लान कर सकते हैं, हम सबवेज कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी अगर आप देखें तो 2 व्हीलर्स जो हमारे थे वो एक्सीडेंट में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए हमको सबवेज प्लान करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। इसके अलावा चैनलाइजिंग ऑफ द आइलैंड एंड रोड मार्किंग्स पे हमको ध्यान देना है। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो हिट एंड रन हमारे पास बहुत सारा, जो कि ओवर स्पीडिंग का ही एक बात है। और इसके बाद जो दूसरी चीज है हमारे पास हेड ऑन कोलिजन, अगर नंबर 8 को, तो हेड ऑन कोलिजन को भी जनरली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे पास जो सीधा सा रास्ता है वो है 4 लेनिंग डिवाइडेड कैरिजवे, तो हम उस तरीके से इनको एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एक्सीडेंट्स जो PTRI की रिपोर्ट में है उसने बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली शाम का जो वक्त है, दोपहर से शाम का वक्त, उस समय एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे रूरल एरिया में हमको ध्यान देना है लाइटिंग पे, तो हम वहाँ पे सोलर लाइट या फिर लाइटिंग का अरेंजमेंट करें या फिर वहाँ पे ट्रैफिक का रेगुलेशन करें। इसी तरीके से अगर हम नेशनल हाईवेज पे और देखते हैं तो यही PTRI की रिपोर्ट में बताया है कि ओवर स्पीडिंग नेशनल हाईवेज अंडर NHAI जो पहला स्लॉट है उसमें अगर हम देखते हैं
तो NHAI के अंडर में जो उन्होंने एनालाइज करके डेटा हमको दिए हैं वो ये हैं कि ओवर स्पीडिंग है, फिर ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड। तो हमको ये 2-3 इश्यूज हैं जो एड्रेस करने हैं, जिसको कि हम एड्रेस कर रहे हैं अपने डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे कोर्ट्स हमको कहते हैं उसके हिसाब से। इसके आगे भी हम देखें तो कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं। अगर नेशनल हाईवेज अंडर NHAI में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं 2 व्हीलर्स। जो तीसरा 3057 हमारा बार जा रहा है उसमें आप देखिए तो 2 व्हीलर्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से इन सारे डेटा से निकलने के बाद देखने के बाद एनालाइज करने के बाद यही समझ में आता है कि हमको जो हमारे नेशनल हाईवे हैं हमारे सारे कंसल्टेंट्स इस चीज़ को तो एड्रेस कर रहे हैं कि हमको 100 किलोमीटर की स्पीड रखना है, कर्व 400 मीटर का रखना है, वर्टिकल ग्रेडियंट्स हमको ध्यान रखने हैं। लेकिन जो क्रॉस मूवमेंट ऑफ पेडेस्ट्रियन है, जो क्रॉस मूवमेंट ऑफ या फिर कनेक्टिंग रोड्स जो हैं उससे जो हमारे 2 व्हीलर्स आ रहे हैं हम शायद उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो हम उनको एड्रेस करेंगे। अच्छा, इसके साथ और एक एनालिसिस जो हम लोगों ने करी है, हमारे जो रोड सेफ्टी ऑडिटर्स हैं जिनको हमने डिप्लॉय किया है उनसे जो डेटा हमारे पास आए हैं, हमारे जो रोड सेफ्टी ऑफिसर हैं उन्होंने जो एक्टिविटी करी है, तो उसमें देखिए जो मेन कॉरिडोर्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास, ललितपुर सागर लखनऊ सेक्शन जो करीब 316 किलोमीटर का है, उसमें एक्सीडेंट्स के ट्रेंड्स ये हैं। जो ब्लू लाइन है हमारी वो करीब 518 से 558, थोड़े बहुत एक्सीडेंट उसमें कम हुए हैं लेकिन फैटेलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हुई हैं। इसी तरीके से आगरा ग्वालियर झांसी सेक्शन जो कि करीब 220 किलोमीटर का सेक्शन है, उसमें जब हमने अपने एक्सीडेंट की एनालिसिस करी है तो 430 से वहाँ पे 163 एक्सीडेंट्स हुए हैं और वहाँ पे फैटेलिटीज़ भी कम हुई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अभी रिसेंटली 1 साल पहले ग्वालियर झांसी सेक्शन जब कंप्लीट हुआ है उसके बाद से ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है ये। इसके बाद झांसी खजुराहो सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बड़ी ख़राब स्थिति थी एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे 447 से करीब 304 पे हम आए हैं। जो 149 एकदम से डिप हुआ है ये तो बेसिकली कोरोना का पीरियड है जब गाड़ियाँ नहीं चली थी। और सावनेर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर जो सेक्शन है करीब 400 किलोमीटर का, यहाँ पे 300 से करीब 300 एक्सीडेंट से करीब 117 एक्सीडेंट पे रिड्यूस हुआ है। तो व्हाट एवर मेजर्स जो हमने लिए हैं यहाँ पे इन सब स्टेचेस पे, वो ये डेटा हमको बता रहा है। जो हमारे डिफरेंट रेजिडेंट इंजीनियर्स जो डिप्यूटेड है उन लोगों से जो डेटा हमारे पास आता है उसको हमने कंपाइल किया है। लेकिन एक और चीज़ है, जब हम मुल्ताई छिंदवाड़ा सिवनी रोड लेते हैं करीब 1377 किलोमीटर्स का है, नहीं 137 किलोमीटर्स का है वो, वहाँ पे 69 से 202 एक्सीडेंट बढ़े हैं हमारे। यहाँ पे हमने फिर नेसेसरी स्टेप्स उठाए हैं क्योंकि ये 2 लेन भी पेज शोल्डर है, जंक्शंस हैं, वहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है वो हमने टेकअप किया है। जबलपुर लखनऊ खवासा सेक्शन जो हमारा है वहाँ पे करीब 350 एक्सीडेंट हुए थे अभी। इसी तरीके से ब्यावरा देवास सेक्शन है, यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। लेकिन इंदौर गुजरात बॉर्डर जो हमारा NH47 है, इंदौर से गुजरात की तरफ जब हम जाते हैं धार से होते हुए, यहाँ पे हमारे एक्सीडेंट बढ़े हैं। सिमिलरली बारन शिवपुरी पे कम हुआ है, ग्वालियर शिवपुरी गुना ब्यावरा वाले सेक्शन पे ड्रास्टिकली कम हुआ है एक्सीडेंट। अब्दुल्ला इटारसी बैतूल सेक्शन पे भी हमारे एक्सीडेंट कम हुए हैं। लेकिन एक हमारा सेक्शन है जो इंदौर खालघाट सेक्शन, इसमें देखिए 429 से 607 रेगुलरली एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के लिए जो गणेश घाट है, जो बाकानेर घाट है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसको कि ग्रेडियंट की वजह से वहाँ पे हो रहा है, जिसको कि हमने एनालाइज किया है। फॉरेस्ट का प्रपोजल वहाँ से क्लियर हो जाता है तो उसको हमने बिड पे भी लगा रखा है। 7 किलोमीटर का रीअलाइनमेंट करेंगे जिससे कि वहाँ पे जो गाड़ियों का मैकेनिकल फेलियर हो रहा है, गाड़ियों के ब्रेक नहीं लग पाते हैं, वो सीधे जाके सामने वाली गाड़ी में लग जाते हैं, ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर लिया है और इस पर हम एक्शन ले रहे हैं। आई सपोज कि इस साल में वो काम हमारा शुरू हो जाएगा। इसके साथ मैं जल्दी से बस जो बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे यहाँ पे कि ऑल रोड यूजर शुड बी सेफ ऑन नेशनल हाईवे नेटवर्क, अलाउज, कल हमने देखा कि एक प्रेजेंटेशन में कि अलाउज ह्यूमन एरर विदाउट लीडिंग टू कैजुअलिटी। आई थिंक प्रोफेसर सिकदर साहब के प्रेजेंटेशन में थी ये बात।
तो हमको एज एन इंजीनियर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, कोई लिकस लेके गाड़ी चला रहा है तो ठीक है, अब उसने ले ली, गलती कर ली, तो कम से कम उसको किनारे करके, हमारे रोड सेफ्टी में इतना वाइड रोड होनी चाहिए कि वो मैनूवरिंग कर पाए ठीक से, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, वो सब हमको कवर करना है। तो इस ह्यूमन एरर को कैजुअलिटी में कन्वर्ट ना हो, ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है और कोशिश ये कर रहे हैं कि अब जीरो फैटेलिटीज़ स्टेजेस हमारे यहाँ पे रहें। चाहे लास्ट जो हमारा कल डॉक्टर शर्मा ने भी जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें कैसे ट्रॉमा केयर हमको करनी है, कैसे पोस्ट इंसिडेंट हमको अडॉप्ट करना है, ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। अब इन्हीं सब चीज़ों को अचीव करने के लिए प्लानिंग स्टेज पे हमको जो हमारे आरईज हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, जो हमारे AEE हैं, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, उन सबको डेटा कलेक्शन करना है, जैसे हमने ये कलेक्शन किया है, फिर इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम से करना है या फिर RE से करना है, उसकी एनालिसिस विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन, कॉजेस एंड रीअकरेंस। गूगल पे वो एक्सीडेंट किस लोकेशन पे हो रहा है, हमारे REs उस चीज़ को देखें और उस स्टेज को हम एड्रेस करें। इसके बाद हम अपने डिज़ाइन में जो जितनी भी DPR हम बना रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही प्रपोजल बना के या हमारा PD प्रपोजल बना के ऊपर हमारे पास भेज रहा है, हम उसको अपने हेडक्वार्टर से अप्रूव करा रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उस प्रपोजल में प्लान एंड प्रोफाइल, प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड प्रोफाइल एंड प्रोविजंस, ensuring the advanced information placement, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रोड यूजर को वो काफ़ी एडवांस में रहे, कम से कम 200-250 मीटर एडवांस में रहे, जिससे कि उसका रिएक्शन टाइम, उसको रिएक्ट करने के लिए टाइम मिले। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो हमारा फील्ड स्टाफ है, वही कर सकता है, उसको ध्यान रखना है। और मैं इसीलिए इस हॉल में बैठे सभी हमारा जो फील्ड स्टाफ है उसका तवज्जो चाहूँगा कि प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखें और उसी हिसाब से प्रपोजल बनाएं। कल वो क्रेन वाली बात भी आई थी कि क्रेन की जो कैपेसिटी है उसको हमको ध्यान रखना है। तो हम जब DPR और डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम जब हम बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे तब हमको वो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो DPR में ख्याल रखना है वो है मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ ट्रैफिक ऑन मेन कैरिजवे। जो मेन कैरिजवे 100 और 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है उस पर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को अवॉइड करना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आने भी हैं तो उसको स्लो जो हमारा ट्रैफिक है वहाँ पे उसको रखें। फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस रोड विद एडवांस प्लानिंग ऑफ द टाउनशिप ग्रोथ। आसपास जैसे इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, जबलपुर है, ग्वालियर है और फिर हमारे विदिशा है, सागर है, ये जितने भी टाउन्स हैं ये सब अभी यहाँ पे कॉलोनीज डेवलप होनी है। तो जब भी हम प्लान करें रोड को तो उसके सर्विस रोड का ध्यान रखें। इसी तरीके से बिडिंग स्टेज पे हमेशा ध्यान रखें जो क्रेन या एम्बुलेंस की जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए या जो कैपेसिटी होनी चाहिए उसको हम डॉक्यूमेंट्स में ध्यान से देख लें। फिर एजुकेटेड स्टाफ को हम लगाएं, उसका इवैल्यूएशन जो हमको करना है उसको हम ध्यान से करें। एग्जीक्यूशन स्टेज पे मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास जब EPC में प्रपोजल आता है या जब हम उसको अप्रूव करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेके आगे बढ़ता है या फिर PDs लेके आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर्स हमको देता है प्लान एंड प्रोफाइल। बट मेरा सबमिशन आप सभी लोगों से ये है कि प्लीज़ आप उससे जंक्शन ड्राइंग मांगिए कि भाई जंक्शन की ड्राइंग क्या है तुम्हारी। प्लान एंड प्रोफाइल से सबसे पहले आप जंक्शन ड्राइंग हमको दीजिए। फिर स्पेसिफिक ड्राइंग ऑफ द ग्राउंड लेवल रादर देन VUP स्ट्रक्चर। जो VUP का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की के एवज में हमको ग्राउंड लेवल पे जंक्शंस का क्या उसने प्लान बनाया है उसको देखना है। उसके बाद हम प्लान प्रोफाइल पे जाएंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। तो जितने भी हमारे ये टीम लीडर्स हैं या RE हैं यहाँ पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को ध्यान रखें कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। फिर ट्रैफिक रेगुलेशन इन द कंस्ट्रक्शन जोन, वो सारी चीज़ कल यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। IRC के डिफरेंट कोड्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से सब लोगों को टेकअप करना चाहिए। देन क्रॉस रोड विद द स्पीड ब्रेकर साइनेजेस, इनका हमको ध्यान रखना है। कंप्लीशन स्टेज पे प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह का इंतजाम हमको ध्यान रखना है। ऑपरेशन स्टेज पे पेट्रोलिंग व्हीकल का हमको देखना है। फिर सर्विलेंस के लिए इंसिडेंट मैनेजमेंट के थ्रू ध्यान रखना है। फिर अटेंडिंग द इंसिडेंट रिपोर्टेड बाय 1033 जो हमारा
ये 1033 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको अटेंड करना है, और इन सारी चीज़ों को ATMS से भी हम इसको मॉनिटर करें। अभी जो मैं यहाँ इस प्रेजेंटेशन के थ्रू वे फॉरवर्ड करना चाहूँगा वो ये कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ATMS इन ऑल द प्रोजेक्ट्स, जिससे कि हम एडवांस इंफॉर्मेशन ऑन अप्रोचिंग रोड टू NH विद साइनेजेस, प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप ऑन क्रॉस रोड्स एंड लाइटिंग एट द जंक्शंस, ट्रॉमा केयर बाय अटेंडिंग इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, मिनिमम फर्स्ट एड ट्रांसफर टू, मतलब इमीडिएट फर्स्ट एड देना है, देन ट्रांसफर टू नियरेस्ट ट्रॉमा केयर, और क्लियरेंस ऑफ द अफेक्टेड व्हीकल फ्रॉम द मेन कैरेज वे। इसके साथ जो RO और SE लेवल है दे में प्रोसीड, मतलब हम सभी लोगों को एनुअल बिडिंग करनी है या एनुअल रेट डिस्कवर करके, एग्जीक्यूशनल रेट डिस्कवर करके रखने चाहिए, जिससे कि जब चाहे तब हम कोई भी रोड मार्किंग का काम या कोई भी रोड साइनेजेस का काम या क्रैश बैरियर को लगाने का काम हम कर सकें। इसके साथ एक और चीज़ जो अथॉरिटी या हमारे हायर अप्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे क्वांटिटी का वेरिएशन आता है तो वो RO को डेलीगेटेड किया जाए कि वेरिएशन मे बी टू द एक्सटेंट ऑफ 800% या फिर 1000%, मतलब क्वांटिटी 8 गुना 9 गुना 10 गुना बढ़ जाती है, तो उन सब चीज़ों का हमको थोड़ा सा लीवरेज चाहिए। फिर परमिशन मैं हेडक्वार्टर S&R जोन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब हम इसकी परमिशन करते हैं, जो हमारी गाइडलाइन है इसके लिए ग्रांटिंग द परमिशन टू द रिटेल आउटलेट्स, तो जो रिमोट एरिया में या जो रूरल एरिया में रिमोट आउटलेट्स हैं वहाँ पे हम एंट्री से एग्जिट, जो हमारा एक्सेलरेशन लेन डी एक्सेलरेशन लेन होता है, वहाँ से लेके एग्जिट तक हम 5 या 8 खंबे का कनेक्शन उससे पेट्रोल पंप वाले से या फिर रिटेल आउटलेट वाले से लें, लेकिन विथ इलेक्ट्रिक मीटर, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अथॉरिटी बियर करे, हम बियर करेंगे उसको, क्योंकि हो सकता है वो उसका स्विच ऑफ करके रखे हमेशा। मैं ये सब मतलब सबमिट करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम एक पॉलिसी पे ये ला सकते हैं कि परमिशन के दौरान वो 5 या 8 खंबे बिजली के भी लगाएगा। अच्छा, इस सारी चीज़ों को करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको डिफरेंट तरीके जो हैं मैंने आपको बताई है। इसको अचीव करने के लिए अभी तक NHAI ने करीब 550 VUPs फ्लाईओवर्स बनाए हैं और 93 अंडर प्रोग्रेस हैं इन 4395 किलोमीटर जो हमने अभी अटेंड कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे स्ट्रेचेस पे अगर देखें तो हमको जर्क्स लगते हैं कलवर्ट्स और ब्रिजेस पे। इसको अचीव करने के लिए जो एक्सपेंशन जॉइंट को लगाने का तरीका है, जो SOP है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत थी, जिसको कि हमने कोशिश करी है कि सबसे पहले एक्सपेंशन जॉइंट जहाँ पे हैं वहाँ पे हम एग्रीगेट से उसको भर देते हैं, फिर BC कर देते हैं, जैसे आप पिक्चर 3 में देख रहे हैं। उसके बाद उसको कट करते हैं जैसा पिक्चर 4 में है। कट करने के बाद फिर एक्सपेंशन जॉइंट लगाते हैं, फिर उसकी फिनिशिंग करते हैं, फाइनली जो पिक्चर 8 है वहाँ पे हमको एक्सपेंशन जॉइंट मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट विदाउट जर्किंग एक्सपेंशन जॉइंट्स है जिसको कि हमको अडॉप्ट करना चाहिए। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी इस बात को कई बार कहा है कि भाई एक्सपेंशन जॉइंट हमारे ठीक नहीं होते हैं, तो हमको इस तरफ ध्यान देना है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो बैक फिलिंग है उसको भी लेयर में लैटरल रोलिंग के साथ हमको करना चाहिए, जो कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं। सारे अथॉरिटी इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बैक फिलिंग पे अपना विशेष ध्यान दें, जिससे कि हम यहाँ पे अपने यहाँ पे विदाउट जर्किंग वाली जर्क्स वाली रोड को लेके आगे बढ़ सकें। इसके साथ वेल इंफॉर्मेशन अगर हम साइनेज रखेंगे, जैसे कि ये झांसी खजुराहो सेक्शन पे है, 250 मीटर पहले इंफॉर्मेशन दी है, उसके आगे फिर इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद एग्जिट आता है। तो इन सब चीज़ों का डिज़ाइन स्टेज पे जब आप प्लान एंड प्रोफाइल फाइनल कर रहे होते हैं तभी प्लीज़ ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना है, जो कि हमने किया है। आप भी प्लीज़ इसको करें, हम जस्ट आपसे शेयर कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इसके साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को देखें, वहाँ पे मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर रतलाम के पास और मंदसौर के पास बन रहा है, जिसकी की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू देवास उज्जैन आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, इंदौर उज्जैन देवास। ये कनेक्टेड है ऊपर गरोथ जो नॉर्थ में, और साउथ में
सॉरी वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो रतलाम के पास है, बदनावर से आगे जाके है। इसमें करीब 1350 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर्स है। ये 8 लेन है। 8 लेन के साथ इसमें 12 लेन इसको बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि बीच में मीडियन 22 मीटर रखा हुआ है, 22 मीटर्स हमने मीडियन रखा है। बेसिकली इसकी कॉस्टिंग करीब 8400 है। अगर आप देखें तो कॉस्ट पर किलोमीटर मध्य प्रदेश में 35 करोड़ पर किलोमीटर है 8 लेन की। दिस इज फॉर रेफरेंस की सब लोग नोट ध्यान रख सकते हैं कि 8 लेन की कॉस्टिंग क्या आ रही है बिल्डिंग के बाद, कंस्ट्रक्शन के बाद। और इसमें हमने अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर्स 227 स्ट्रक्चर्स रखे हैं ऑलमोस्ट एवरी किलोमीटर। उसके साथ अंडर पासेस का जो प्रोविजन रखा है अप्रॉक्सीमेटली 245 किलोमीटर्स में 153 अंडर पासेस हैं अप्रॉक्सीमेटली हर 1.5 किलोमीटर के आसपास, और 16 इसमें ओवर पासेस भी हैं। अब जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लूँगा। देखिए यहाँ पे हमको ATMS अडॉप्ट करना है, जो स्पीडिंग की बात है, और जो स्पीडिंग की हमको एड्रेस करना है ओवर स्पीडिंग को, उसके लिए तो यहाँ पे जो ये ATMS के लिए इक्विपमेंट्स हमने लगाए हैं, और जो हम अपने एग्जिस्टिंग रोड पे भी अब लगाने के लिए जा रहे हैं, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा जो कि हर किलोमीटर पे है। और ये कैमरे के साथ इसका सोलार बैकअप है, सोलार से इसको पावर आएगा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर कोई थेफ्ट के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे एक हूटर भी हमने लगाया है। जैसे ही वहाँ पे कोई मूवमेंट ऑब्जर्व होगा तो वो हूटिंग होने लगेगी। फिर व्हीकल डिटेक्शन, व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम जो है वो हमने हर किलोमीटर पे लगा रखे हैं। इमरजेंसी कॉल बॉक्स तो खैर अब इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबके पास मोबाइल हैं। वीडियो इंसिडेंट, ये हमने जो डिटेक्शन सिस्टम लगा रखा है ये एवरी 5 किलोमीटर्स पे ये इंसिडेंट को खुद ही कैप्चर कर लेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इस कैमरे के साथ है। फिर पोर्टेबल VMS हमने हर पैकेज में एक दिए हैं, जो कि अभी हमको COS में परमिशन मिली है चेंज ऑफ स्कोप में, कि हम उसको हर 10 किलोमीटर पे लगा सकते हैं, जिससे कि जो ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा है उसको हम इन्फॉर्म कर सकें। फिर कंट्रोल रूम, हमारे अभी 2 कंट्रोल रूम इसमें बनने हैं। अब आप देखेंगे ये जो डिफरेंट लेन्स हैं हमारी, इस लेन्स में हम जो रोड यूज़र है उसको उसकी स्पीड बता सकते हैं और कलर से भी बता सकते हैं कि आपकी स्पीडिंग कितनी चल रही है। रेड और येलो में हम बता सकते हैं। और इवन ये भी जैसे कि 60 जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीम राइट लेन में, वहाँ पे ओवरटेकिंग जोन है। अगर कोई व्हीकल 60 की स्पीड से चल रहा है तो उसको VMS पे जाके हम बता सकते हैं कि प्लीज़ आप लेफ्ट साइड पे आइए और वो अपना ओवरटेकिंग लेन को खाली छोड़िए। तो ये सारी चीज़ हम VMS पे बता सकते हैं। इसके साथ ट्रैफिक जो हमने हर किलोमीटर पे कैमरा लगाया है, ये उसका एक पिक्टोरियल व्यू है। फिर VDS कैमरा जो हमारे लगे हुए हैं, जो अपना ये वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम जो हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। देन हमारे जो ये VMS हैं, ये हमारा कंट्रोल रूम है। ये वे साइड एमिनिटी जो हमने प्लान किया था एक्सप्रेसवे के ऊपर, और इवन बाकी सब जगहों पे भी जो इंदौर से खलघाट वाली रोड है इस पर भी प्लान किया है। यहाँ पे ऐसा वे साइड एमिनिटी नहीं है, डिफरेंट वे साइड एमिनिटी है। उसके बाद ये हमारा कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं रतलाम से इसके बीच में। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस साइट को PIU रतलाम के अंडर जरूर विजिट कीजिए, देखिए, क्योंकि इससे कई सारी चीज़ हमको एक्सपोजर भी मिलेगा कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। इसके साथ हमने जो मिटिगेशन मेजर्स रखे हैं वो एनिमल्स के लिए भी रखे हुए हैं। अब जो मोहगांव से खवासा NH44 पे स्ट्रेच था, उसमें हमने वाइल्ड लाइफ के लिए भी ध्यान रखा है। और वहाँ पे 14 अंडरपासेस विद 18 कलवर्ट्स दिए हैं। 960 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 372 करोड़ वाइल्ड लाइफ मिटिगेटिव मेजर्स थे। अब मतलब थोड़ी सी बात जरूर अजीब लगती है इस इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी को कि 372 करोड़ खर्च करने के बाद अल्टीमेटली हमको जो पिक्चर मिलती है वो ये एक पिक्चर मिली कि हाँ, एक टाइगर हमारे अंडरपास से निकला है, जो कि कैप्चर हुआ था। ये वहाँ पे हमने साउंड बैरियर्स वगैरह लगाए थे। दिस वाज द स्ट्रेच जो कि घाट सेक्शन से गुजर रहा था। इसके साथ हमने रीवा सीधी चोरहट टनल को भी प्लान किया है, जिसने कि करीब ये 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें 2.3 किलोमीटर की ट्विन टनल है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये।
बेसिकली जो ब्लैक में इसका अलाइनमेंट देखिए, ये हमारी रोड थी, एग्जिस्टिंग रोड, इसको हमने स्ट्रेटन किया है। जहाँ टनल लिखा है वहाँ पे हमने इसको टनल दी है। तो 2.29 टनल हमने प्रोवाइड करी 7.8 किलोमीटर नेगोशिएट करने के लिए, जो हिल को नेगोशिएट कर रही थी। इसी तरीके से जो बाकी हमने रीअलाइनमेंट किया उसकी वजह से 22 किलोमीटर हैज़ बिन रिड्यूस टू 15 किलोमीटर्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये इसको मोहनिया घाटी कहते हैं, जहाँ पे वो जो व्हाइट टाइगर मोहन नाम का जो था वो यहाँ पाया गया था। तो यहाँ पे टनल का इंतजाम किया गया है NHAI की तरफ से। दिस इज द टनल। अब हम चिरारी और वहाँ नॉर्थ की बात करते हैं टनल की, बट आप सब लोगों के लिए एक टनल यहाँ पे अवेलेबल है चुरहट की, प्लीज़ आप लोग विजिट कीजिए। और डिफरेंट एस्पेक्ट हैं टनल के, जो कि अभी हम यहाँ पे इंदौर से ओंकारेश्वर के बीच में भी दे रहे हैं। ये भी आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम इस टनल को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं और हमको ये लेके आना चाहिए। इसके अलावा वर्क जोन सेफ्टी मेजर्स में अगर जो हमने काम किया है, उसमें बेसिकली ये हमने मेजर्स लिए थे, जिसको कि हमने पिक्टोरियली दिखाने की कोशिश करी है। ये जो छिपरा के पास, इंदौर में छिपरा के पास ही जो हमारा फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ की तस्वीर है ये मुरैना में जो ब्लैक स्पॉट था वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया था। देन मैं आपको बताऊं कि करौरा, मैंने 2-3 स्लाइड्स बनाई हैं जिसमें कि करीब 10 नंबर एक्सीडेंट हो रहे थे ये करौरा में, जिसका कि ब्लैक स्पॉट नंबर MP 02056 है, और आज की डेट में कोई फैटल एक्सीडेंट नहीं है। ये उसके मेजर्स हैं जो कल चर्चा हो रही थी, जो नकवी साहब ने बताया था कि हमने इतने ब्लैक स्पॉट्स ठीक किए हैं, तो ये उनमें से हैं सारे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 6 एक्सीडेंट हुए थे, उसकी जगह 3 एक्सीडेंट हुए, लेकिन कोई जो पहले फैटलिटीज़ थी वो भी रिड्यूस हुई है। ये जरेदेहुआ जंक्शन के पास का ब्लैक स्पॉट था। ऐसे MP में सारे ब्लैक स्पॉट्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो थे वो सारे हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स ले लिए हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए 2 बचे हुए हैं, एक जबलपुर में है, एक ये हमारा जो बाकानेर घाट है, जिसमें कि 7 किलोमीटर का रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, वो हम करेंगे। इसके साथ जो एक बड़ी समस्या इस साल बरसात में हम सभी लोगों को मिली थी कि हमारे रोड के ऊपर बहुत सारे स्टे एनिमल्स थे। कल भी किसी ने ये बात उठाई थी। तो इस स्टे एनिमल्स को कैसे, मतलब रोड यूज़र अपने को बचा के बिना एक्सीडेंट के आगे निकल जाए, तो दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट वी हैव डन। फिर हमने ड्राइवर्स को सेफ्टी रूल्स के बारे में एजुकेट भी किया, डिफरेंट ड्राइवर्स को। इसके साथ जो ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह थे, उनको पुअर आई विजन इज ऑल्सो कॉजिंग द रोड एक्सीडेंट, और उनको टाइम नहीं मिलता है, तो उनको फिर चेकअप करके उनको चश्मे भी दिए गए। इसके साथ हमने मार्शल्स भी लगाए, जो कि इन सब स्टे एनिमल्स को रात में हटाते थे। ये अगर आप देखें, ये सांची से भोपाल वाला स्ट्रेच है, जिसके ऊपर कई सारे मतलब स्टे एनिमल्स रहते थे। इवन मैं आपको बताऊं, 30 सेकंड तक जब मेरी गाड़ी वहाँ पे चलती रही, तो वो स्टे एनिमल्स रोड पे बैठे हुए थे। उनको हटाने के लिए ये सारे मतलब स्टेप्स उठाए। इसके साथ हमने अपने एक SOP भी बनाया है, जो कि मैं हेडक्वार्टर को भी शेयर करूँगा, कि अपने जो भी हमने अपने PDs को शेयर किया है कि वो वहाँ पे जो कोटवार वगैरह हैं गाँव में, उन सबको मोटिवेट करें। मोटिवेट करने के बाद उनसे जो हेल्प मिल सकती है, जो सरपंच से हेल्प मिल सकती है, और जो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी करें, और यहाँ पे होने वाले जितने भी स्टे एनिमल्स से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको रोकें। तो यही चीज़ें बस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Jaswal sir. Now I'll invite Mr. Bendre to give his presentation. Good afternoon all. Hi, this is Sagar Bendre. I first of all thank you IRC for giving this opportunity. When Rahul Patel approached me and stating that IRC is organizing one seminar, basically it seems to be on the road side, I said that vehicle technology explanation could not be part of that.
But when I thought over, then it's a tri-party association, we used to say. So vehicle, road, and driver's behavior. So on that perspective, I just want to get some focus on the vehicle technologies getting developed across the world, and as rules makers are also available in this forum. So I just want to take this opportunity to explain them what's happening on the global front. Basically, let's have an introduction for the Pride of India, which is basically a NATRAX, for which I'm representing. This is a company established under Ministry of Heavy Industries to set up a world-class proving ground center, so that previously all OEMs or the manufacturers has to go abroad for their vehicle testing. So government of Madhya Pradesh offered a land to Department of Heavy Industries, and we were fortunate to set up one biggest project, which is almost largest in the Asia and 5th largest in the world. So basically this center is established for the vehicle testing. So all vehicle development being carried out at this center. And on the global front, you can see we are on the same line, that whatever global developments are happening, so all these are getting tested and certified in the specific proving ground concept, and we are standing in the world's line. So let's now talk about the this tri-party interaction, that a vehicle, a road, and safe driver. So basically, a road safety depends upon three major tri-parties. So let's get evaluated on one by one. So what is basically vehicle safety? It's categorized into two parts. One is a passive safety, another is the active safety. So now everybody is talking about the ADAS. It says driver assistance system. Basically, it comes under active safety, and it's a lots of wings which needs to get developed on every parameter. So we'll talk on these two parameters one by one. What's active safety? Active safety means a live data to be get captured, and then it has been controlled by either vehicle or either driver. Now the picture comes that if vehicle has to control, then that would goes with the high-end vehicle, which costs more. Now the second parameter, if driver has to control, then the specific notification for the driver has to be getted. Driver should be precise one. That just in one of the yesterday's presentation, somebody pointed out that the drivers get 2.5 seconds. That's it, over. So 2.5 seconds is the interpretation time to driver to get it reacted. But before that, if it not going to act it, then it will cause the accidents. So on this part, the sensors, radars, camera, GPS and the laser evaluate your vehicle's positions and get alerted to the either driver or to the vehicle. So now if it is coming to the vehicle, then on the global front, there are lots of developments going to happen, like say drone lighting, electronic brake force distribution, virtual roads. Generally, I call them as a talking road. So road talks to you when you're crossing, let's say work is going on, speed limit is 60. There are now, after 80 meters, there are rumble strips. Because every road development which is getting put up for the safety, there is again chance that that road development can cause a road accident. A rumble strip, it is for the drivers to get it slow down. But if the heavy speed driver is not aware and continuously driving, and at any point he missed that rumble strip, then on that vibration, vehicles get uncontrolled. And that uncontrolling vehicle can hit to the any location, any person, any animal, or might be the rollover possibility going to happen. So that mitigation or that seriousness has to be studied. Then undercar camera, which gives you the more briefing of the vehicle position, a lane keeping assistance, that road markings with the paint, so that sensors on the paint in the vehicle get it evaluated like a blink. Animal detection, it's a one side, we'll just go to it out. It's a drone lightning. So what it mean by it? So all off-roader drivers will capture the road on the non-identified areas where the accidents on the severity front can happen. Actually, Audi, BMW, these top-end manufacturers are concentrating on it, but it can be focused it out. Electronic brake force distribution. Whenever you're crossing on the bridge or getting down on that, sometimes you feel that you are getting lifted yourself. So what is that terminology calling at? It's called brake force distribution, because you are at the speed, climbing on the bridge and again going down. So at that point of time, driver get a very less time to evaluate it. And if he wants to apply the brake, then the brake application will be getting distributed. But if your vehicle doesn't have that force distribution properly,
it may cause the loosening, or it may cause the uncontrolling of the vehicle, which again can lead to the accident. Virtual road signboard. So on the left hand side, when let's say work is going on after 200 meter, then that indication or alert is not coming to the vehicle. So any system can be implemented in the vehicle which initially will give the signal like pum pum, yeah, or it can say talk to the driver, work is going on after 80 meters. So that sort of interaction can be counted out. Virtual routing map. So now the drivers, is in last 2 to 3 years, this tablets or the small dashboard units are getting developed on the vehicles, but previously it was mobile. So while following the roads, you are watching to the mobiles or onto the screen, which may cause the accident. But now the talking mirrors are coming to the picture. You have to talk to them. They will guide you with the indication. Let's say take a left turn, take a right turn, and they will take you to the desired routes. Electronic stability control. When you are giving inputs to the steering, that electronic stability control will cover up the required turnability, or it will say what could be the braking assistance you will be provided. That let's say one vehicle is coming out, you are driving at 80 km per hour. You are thinking that you can apply the brake in that specific distance, but something happens and you are getting uncontrolled. You are not applying the brake on the specific pressure, and your vehicle is getting hit to that upcoming vehicles. So that causes the accident. It could be on the severe front, it could be on the damage to the vehicles, or it could be on any pedestrian hit, which is again creating a very serious alertness. So this terminology called electronic stability control, now it's coming from the high-end vehicle to the middle end and the lower end. So that will again come into the picture. A self-exist assist to the protect cyclists. See, in global front, the most important, the most importance will be given to the pedestrian, that anything getting developed should be concentrated with the pedestrian. But we at Indian level, that concentration is not been given, but there is a focus to, let's say, when you're opening the door, you don't know that motorcyclist, bicyclist, or anybody is coming in that direction. So that again causes a minority of accidents, which may cause a serious death or rolling over of the vehicle. Collision awareness warning system. When the two vehicles are traveling in lane, so what should be the distance between them, how the driver has to react, or what should be the specific braking application to be given if the speed crosses that limit. Let's say there are 1, 2, 3 vehicles. We're talking from the right side. That's you who are driving. On the front side, you can specify the distance between these two vehicles, and if driver is not getting alerted to apply the brake, the vehicle itself will take over from the driver, and he will slow down the all wheels or try to apply a minimum level of brake so that braking distance will be reduced. Then intelligent headlights. Now headlights is again very becoming critical. Now the OEMs are giving the adjustable headlights, but you don't know which vehicle at what height it's coming on. It's let's say Jeep, it's a Thar, it's a truck, it's a bus. So that distraction to the drivers is very crucial one. Now even when you are going to your doctor's eye doctor checkup, he will say just apply some coating on the glasses so that while driving you should not be stressed, or the light should not be getting directly hitting into the eye. But again, it's on the vehicle perspective design which can be changed, called as the intelligent headlight. So these headlights will reflect the in front coming vehicle's light, and it will adjust automatically to your light area which can be visible. Again, intelligent glass, that a truck is coming, you are driving in Maruti 800 or Alto, it's an Alto now, 800 goes off Alto, so that lights directly strike out to the driver and it's getting hamzy to him, and it will be very difficult to get control over the vehicle. Undercar camera, hitting on the bumps or damaging your transmission, or while crossing you are unable to identify what's inside, but something broke down, it's hit to the transmission, to the differential, and your vehicle get uncontrolled. So these developments in the vehicle technology are very precise and getting developed at the middle level also, and few of them are implemented. But again, a cost-effective solution on every parameter to be worked it out. Emergency braking system, it's same, the driver identify or the vehicle identify the distance between two vehicles. Rollover mitigation. Let's say you have seen while overtaking, people try to get on the right side, and they don't know how much right they have to take it out.
They will take it a right, and immediately when cyclist is coming on the opposite direction, then they again have to take it a left. So that rollover mitigation is not under their control. Then again rollover will happen and it will cause to the accident. So if it is under vehicle control, we say every control has been taken care by the vehicle. Okay, electronic control unit has been set up and it will identify the vehicle rollover is beyond 20 degree. So just get it controlled. Driver is unable to control it. So that can be reduced out. Lane keeping assistance. Again, it is the interaction between the road and the vehicle. The paint marking on the intermediate section reflects with the sensor. The sensor detects in the vehicle and it will alarm you that driver is changing the lane, driver is slipping, driver is getting dizzy, driver's eyes are blinking. So that indication will alert either not to the driver but to the adjacent passenger by just drive it up safely. And even single accident, that yesterday somebody has noticed down that accident cases are getting down. So within my presentation itself, 50 people could have died on Indian roads. It's a very serious concern. It's not a single death to be ignored it out. In Mr. Jaiswal's presentation, somebody could have noticed that the number of accidents has been reduced. The focus is on the reducing of the number of accidents. But what about the fatalities? So let's say at one slide it was 400 to 82. So 400 accidents, 82 fatalities. But what in between that? What happened to in between the peoples? Somebody had lost leg, somebody had got brain damage, somebody had lost his both hands, somebody's family become independent. So who is counting that loss? So concentration on that area is very much important. Fatality is fine, it's fine, that has been reduced. Blind spot warning on your rear mirror camera, which will again identify with the vehicle. Then vehicle communication, talking cars to each other. Keep the distance, you are overtaking, you are overspeeding, your engine braking is getting reduced. It's design and getting research across the globe. So now India is taking that platform. So all the researcher or the institution who are getting involved on that, they should be proactively get to the stand on the global front. Animation detection. Now, I will remove the slides on the next presentation onwards because that was a very easiest way to paste the stickers on the animal itself so that your vehicle get reflected. So this device on the Indian context we can eliminate. Automatic governing system, it's a very critical one, will require more time, leave it. Now the passive safety, the most important concentration to be given on what could have happened if the Cyrus Mistry could have wear the seat belt. It's not the person dying on single front. What the Cyrus Mistry could have the vision plan across the 10 years, what his experience gained for his 45 to 48 years and his vision. Now everything has been blamed on. And with the signal ignorance, that could be a seat belt. Now, we appreciate the government of India taking initiative making the seat belt mandatory, but it's a very precise and important one to be get it observed. Airbags, it's on the accidental front. When you are wearing the seat belt, airbags are getting activated. So it must wear the seat belt so that airbags get activated. Crumble zone, again, to reach to the driver impact, there are engine, there are transmission, there is steering wheel, then there is a bonnet, there is a cabinet, and there are you. So there's a crumble zone that has to be designed with a specific manner. Let's leave this on the safer driver alertness. When now the technology is getting with your rear view camera and the steering wheel, the camera is getting evaluated with the driver's behavior. His blinking increase, he is drunken, so his breath rate increase, his hands are shivering, he has a diabetes, he has a hypertension, he has something going in his thought, his behavior changes. So that evaluation is getting again done with the drowsiness attention, which is again a psychological measurement parameter being done by your vehicle itself. So entire speech or entire points is talking about talking cars to the road. Child driver attention, though the accidents percentage are very low, but again to be concentrated that if the child is in the vehicle will not get started. It's a driver alcohol detection, which I mentioned, that's starting with the, now the safer roads. As the road authorities are here, just want to concentrate that more research to be carried out on the road per se. Let's say solar painting road. Forget about the lighting to be provided on the junction, some of the slides being mentioned. Provide a high painted roads on the corner center line so that they will accumulate the light in the daytime and will elaborate in the night time. So your street lighting concept entirely goes on. It's Netherlands and Switzerland is going to try it out and it's a very successful parameter. Some initial cost will be more, but the maintenance cost will be almost zero compared to your light poles and street lighting.
connecting roads we'll go to next slide. Electric priority lane. Now the electric vehicles are coming. Let's say 8 lanes are there. We're targeting on 6 lane, 8 lane. But if we are dedicatingly keeping the 1 lane singly for the electric, that will be focus, or that will be give a chance to buyers to understand I will get a special chance, or I will get a special road to drive it out. So that priority has to be there, keeping the vision for next 10 years. Interactive light, it's the same with the headlight one. A self-repairing road, not a new concept has been installed, that self-repairing road with the crack formation, with the mixture itself, you just have to provide some reinforced plastic, or the plastic crunches will be there, so that whenever the road is getting separated out at, let's say, 5 mm, that propagation will develop and fill up with the road. So it's called a self-road repairing concept. It has been implemented in somewhere in South India. One professor, IIT professor has initiated this concept. It's a very beautiful one. Talking road, which has said that, hey, speed breakers coming in 200 meter. That will reduce to the number of accidents caught. Vehicle road smart technology. Let's say now, Jaiswal again pointed out that number of accident fatalities. So out of that 85 deaths, how many deaths happen on the road, how many deaths happen in between, and how many deaths happen inside the hospital. So all the research data could have to be collected at one point of location, which will give the researcher an exact specific way कि concentration अभी किस पे करना है. It's on the road, it's on the hospital, or it's on the technology. So this was on the another front, on the shorter presentation, which to be finished. I think I am on time, but I would like to take this opportunity to alarm that research in different areas to be concentrated and to be funded in a very systematic way. Let's say on the front, we are the only testing center in Asia, or I would say one testing center is in Italy, another is in New Zealand. Since this 16,000 kilometer, we are the only one who does the crash barrier testing. So we are getting lots of inquiries across the Asian country, China, then Middle East, then Korea. So when we are targeting on the Indian context, if there is a qualifying criteria for accidental severity index and theoretical head impact velocity, we don't have sufficient data. So what could be the concentration given it out? So how you are bringing that concentration, that research is the key parameter of every organization. So same concept has been implemented for the rule makers, that research database has to be there. Either you fund any institute, either you fund your colleagues, either you fund your juniors, but we should motivate them to carry out the research के वो research उस दिन use नहीं होगा, but वो research after 5 years, that could be the database for a researcher concept who will bring in the policy. That's it. Thank you so much for listening. Thank you, Mr. Bendre. Now, for the last presentation, I will invite Professor P.K. Agarwal to give his presentation. So a very good afternoon to all of you. So first I would like to thank IRC organizing committee for providing me this opportunity to present a study conducted at Manit Bhopal. So basically I would like to present a rational methodology for formulation of a road safety improvement program. So as we are aware that availability of as well as reliability of the accident database is a question mark, and in the absence of a meaningful accident database, we are not in a position to analyze this data and to identify the appropriate remedial safety measures to be implemented on various sections in a road network. So in this context, a study was conducted at Manit Bhopal. So I would like to present some of the features of this study. So mainly we will discuss the problem and some issues for formulation of a road safety improvement program, and basically a framework was developed for formulation of road safety improvement program, and then briefly the development of road safety improvement program, and then how this
methodology can be applied. So some a case study, some results of the case study will also be discussed. So as we know, this number of road accidents are alarming, and the situation is worsening in our country, and it has been estimated that situation will be worsened in developing countries unless urgent action is taken. So we are all aware of these facts, so we can skip this. So due to accident, there is a huge property loss. So ultimately, it leads to a socio and economic losses in the country. So many countries have successfully reduced the number of deaths on their roads, while deaths are increasing in other. So basically, there is a need to improve the road safety conditions by decreasing the number of accidents in our country also. So as we are aware that lot of initiative has been taken in our country also regarding road safety improvement. Government of India is deeply concerned about the growth in accident. Ministry has also regularly issuing directive for effective implementation of road safety measures, and Supreme Court has also constituted a committee on road safety. So in this context, we have also made certain efforts at Manit Bhopal. We have introduced this road safety engineering as a elective course for UG level at PG level also, and we are also conducting a research project for developing evaluation of safety of rural roads, which is sponsored by NRIDA, and also we are having various, our students are also conducting various projects at UG, PG and PhD levels. So basically, we have to develop a rational methodology so that the road safety improvement program can be formulated within the available resources. So in this context, some of the issues for formulation of a rational road safety improvement program may be how we can identify the critical hazardous location that need to be treated, and then how to select appropriate remedial measures on these identified critical safety locations, and finally how to prioritize and implement the selected remedial measures within the limited resources available for improvement of safety. So we will discuss these issues one by one. So first is how we can identify what are the critical hazardous location in our road network. So basically, it is required to identify the critical location in order of their hazardous condition, so that depending upon the available resources, more hazardous locations can be treated on priority. Like for example, like we have 3 road sections, and then total requirement for implementing all the identified remedial measures may be more, but if we have resources available are limited, so we have to identify the more critical locations that needs to be treated. So generally, as we discussed, these accident black spots are identified on the basis of number of accidents, but it has certain issues. Like a study of critical literature have indicated that most of the methodologies identify location hazardous on the basis of accident record. Like if we have more accidents, so we treat that as a more critical location. But there are certain issues with this approach, like location with more number of accidents may not necessarily be more critical. Some location may have less number of accidents, but as we have discussed, fatality may be more at these locations, and therefore that location should be considered more hazardous. Okay, like in this particular example, here road B have maximum number of accidents, but fatality rate may be low here, so this may not be the more unsafe road. So we have to consider all these issues while identifying the appropriate remedial safety measures. So we have to identify the accident rate, and otherwise the action will consist largely of higher volume sections. Like here for example, in this case if volume is more, so more number of accidents may be there, and that may be considered as critical, but that may not be the true. So often comprehensive road accident data is not available. Even when accident data are available, analysis to identify critical hazardous location cannot be carried out, as the information is inadequate to identify the appropriate remedial measures to be implemented on a particular section. So hardly any meaningful analysis is done to find out the accident hazardous location, vulnerable road users involved in accident, causes of accident, etc., which are essential for taking
appropriate remedial measures. So basically, in accident database, major issue is we are not able to identify the appropriate causes and then appropriate critical accident hazardous location, and accordingly we are not in a position to identify the appropriate remedial safety measures to be implemented on this. Like for example, some locations like slippery pavements or narrow bridge, etc., may have a high accident potential, but may not yet have a history of high accident occurrence. So ideally, we should give more attention on these locations. So the current methodology remains unsuccessful to identify critical safety hazardous location in a road network. So we have to develop a methodology which can identify hazardous location considering the safety hazardous condition at that locations. Like blind vertical curve may be a safety hazardous location, but may not have a high accident record. So basically, considering the road geometry condition, surface condition, traffic operating condition, etc., we are supposed to rank and identify the critical locations. Another aspect is how to select appropriate remedial measures on the identified hazardous locations. So after identifying the hazardous location at the study site, the next task is to develop alternative remedial safety measures to alleviate the identified safety deficiencies. So selection of safety measures on different road sections will not necessarily result in the same improvement in road safety. So ideally, safety remedial measures should be selected based on their estimated effects on safety improvement and importance of the section, etc. Because a particular safety measures may have different impact on different sections in a road network. So basically, there is a need to investigate deficiencies at different sections in the road network and to identify alternative remedial safety measures to reduce severity and accidents. So we have to conduct a detailed engineering studies to collect information on road network, including poor geometry, poor surface condition, safety furniture, etc. And on that basis, we can identify the appropriate remedial safety measures. Like all these affect the selection of appropriate remedial measures on a road network. So the safety measures should be selected to ensure that available resources for safety improvements are being utilized in the order of their safety hazardous condition and their effectiveness in improving the road condition. So basically, the selection should be based on best use of resources and not on simple eligibility to improve a hazardous locations. Ideally, we should identify what is the effectiveness of a particular safety measure, and we should go for a cost effectiveness while selecting appropriate remedial measures to be implemented on the critically identified hazardous locations. The present literature does not suggest any rational methodology to estimate the accident benefit for each alternative safety measures. So effectiveness of each remedial measure considered in reducing the rate for the similar type of accident should be considered while selecting an appropriate remedial measures. Now the third issue is how to prioritize and implement the identified remedial measures within the available resources. So in the last stage, we have to formulate the road safety improvement program according to a defined criteria and resource constraint. The purpose of this stage is to select the remedial safety measures to be implemented on the identified hazardous location, considering the effectiveness of road safety improvement program and availability of the resources. So in this background, performance measure need to be identified for a particular road safety improvement program. What is the effectiveness of a particular road safety improvement program developed? So now, considering these issues, a framework is developed for formulation of road safety improvement program. So as per literature, the systematic approach for formulation of road safety improvement program includes a systematic road safety improvement program is identification of a set of remedial measures to be implemented on different sections in the road network to reduce the injuries, fatalities, death and loss of public properties due to road accidents. So a basic framework is developed. In this, first we have to identify the
critical safety hazardous location, and it is proposed that we should conduct the detailed engineering studies on critically identified hazardous location, and on these sections we have to develop alternative remedial safety measures to reduce severity and accident, and if resources are limited, then we have to identify what are the remedial measures to be implemented in order of priority. So based on this framework, we can identify there are 3 stages. First, we have to identify the critical safety hazardous location, then selection of appropriate remedial safety measures and their prioritization for implementation. That will ultimately lead to formulation of a road safety improvement program. So quickly we will discuss development of these stages. The first stage, that is identification of critical safety hazardous location. In this, it is proposed that first we will identify some preliminary factors affecting safety hazardous condition. Then a methodology was developed to evaluate these conditions of preliminary factors, and then we have determined relative hazards of various factors, how they contribute in safety hazardous condition, and then ranking of these based on hazardous condition. So a hierarchical structure is developed, how this road safety hazardous condition depends upon, like it depends upon road safety condition, geometrical condition, as well as fixture condition and traffic operation condition. So their relative weights are also evaluated. So in this preliminary stage, it is proposed that these conditions will be evaluated based on rating of these various factors, and a index will be developed considering their severity of the various distresses. So a table is also developed for rating of these various distresses during the preliminary evaluation of safety hazardous condition. And based on these conditions, some relative weights were also developed using a AHP, analytical hierarchical process technique, their relative hazards. And then a index was developed, that is section ranking index, considering the weighted, it will reflect the weighted safety hazardous condition, and then we can rank various sections based on this index. And then further, based on these index, we can identify the most critical location where we can go for more detailed studies, and accordingly we can identify the critical factors affecting the condition. So on similar line, here also we can develop another index which can be used to rank the various sections which are more critical. So on similar line, various formulas and methodology is developed to identify the section condition. Similarly, here also weights were determined using analytical hierarchy process that gives an idea about the relative hazard of various factors. So these are the factors obtained by this AHP analysis, and here also we obtained a index which can be used to rank the various sections. In second stage, we have to select the appropriate remedial safety measures. So here also we have to investigate deficiencies at different sections to identify the alternative remedial measures. For this, we have to conduct detailed engineering studies, and on that basis we can identify the remedial safety measures. Then here also we have prioritized this various remedial measures, and we have identified certain factors which affect the selection of remedial safety measures. So basically these factors are importance of the section, hazardous condition of the section, as well as the effectiveness of road safety measures on the section. And on a similar approach, we have also identified and developed an index which can be used to select the appropriate remedial measures. So safety measure index is developed considering the highway class index, importance to community, section condition index, and safety effectiveness of the measure. So this is the formula for that, and based on this we can identify the based on value of this MPI, we can rank the various remedial measures to be implemented on different sections in a road network. And in the third stage, that is formulation of RSIP, we are supposed to prioritize the identified remedial measures, and accordingly we can select the appropriate remedial measures for implementation depending upon the resources available.
So here also, to assess the effectiveness of the program, we have also proposed one index like this. The effectiveness of the overall road safety improvement program developed can be determined based on the what is the improvement in the overall network condition per unit of the resources invested. So considering what is the total improvement in the network condition before implementation of the remedial measures and after implementing the remedial measures, we can identify what is the effectiveness of the road safety improvement program which we have developed. So that will give an idea how effectively we can utilize our resources. So an case study was also conducted to illustrate how this proposed methodology works. So for that, some data was collected using the website, and some data which were not available in the website were assumed rationally, and we have analyzed all the steps. In the first, there were 25 sections were considered on this national highway. So these are the input data for this, for all 25 data, and then we have calculated various distresses on these all 25 sections. These were the preliminary evaluation, and on that basis we have developed the indices for that. So this table gives you the SRI, that is the preliminary evaluation, and on the basis of these values we can rank all these sections, all the 25 sections. And then further, based on this ranking, we can identify which one is the more critical one, and accordingly we can go for more detailed studies on this identified critical section. So that will be advantageous, and that will lead to a economical analysis, because we are not supposed to conduct detailed studies on all the 25 sections. We can identify more critical section depending upon the resources available, and we can go more detailed studies on only on these identified sections. So based on this analysis, finally we have identified 12 sections which were more critical, which are having SRI value more than 0.25, and then further detailed studies may be conducted on only on these 12 sections. So these are the input data which were considered for evaluation of safety hazardous conditions on these 12 sections, and on that basis we have also identified their hazardous condition on various sections in the network. Similarly, we have identified the various remedial measures to be carried out on these sections, and accordingly measure priority index of each remedial measures were also calculated, and these appropriate remedial measures can be ranked based on their measure priority index MPI values, and in this way, depending upon the resources available, we can prioritize them to and can select them for implementation on our road network. So further analysis was carried out that if resources available are equal to 25% of the total required resources, 50% and 75%, and then we calculated what will be the effect of these resources available on the network condition, and on that basis, like if when resources available were 25%, in that case the network condition before improvement was 49.470, and after improvement it is reduced to 40.435. So resources available, and then we find out what is the effectiveness of this road safety improvement program. That comes out about 7.58 per million of Indian rupees. So similarly for 50% and similarly for 75%, we have calculated the effectiveness per unit resources invested in road safety improvement program. So this highlights that as more resources are invested, effectiveness of the improvement in road condition is increases. However, if we analyze it per unit resources invested, the graphs come out like this. So it indicates that initially this effectiveness is more because more critical or more hazardous locations were treated, and once more hazardous location treated, then it is not as effective to invest more amount of money, and in that basis we can identify the effectiveness of the road safety improvement program developed. So that is, so it is expected that the methodology proposed in this study will be useful
for selection of appropriate remedial safety measures rationally so that available resources for safety improvement can be utilized to achieve maximum improvement in safety on road network in developing country. Thank you very much. Thank you, Professor Agarwal. So, anybody of the dais having any query from 4 presentations? Sir, please briefly, 1 or 2 एक क्वेश्चन था सर. सर मेरा एक सजेशन था सर कि राव साहब से एक क्वेश्चन का आंसर चाह रहा था सर कि ये क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इन केस ऑफ कोलिशन अलर्ट हैज़ बीन गिवन नियर अबाउट 2.5 सेकेंड्स बिफोर. तो इसमें कोई एक ऐसा डिवाइस ये हो सकता है क्या कि जैसे आपने वो डाटा कलेक्शन डिवाइस बताया हुआ था चश्मे में, तो उसमें चूँकि इट हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड दैट कि जो ब्लैक स्पॉट हैं जो अपने वो सभी को जगजाहिर हो चुके हैं कि कहाँ पर है. तो यदि उस चश्मे में या उसमें, क्योंकि वो हमेशा अलर्ट बता ही रहा है, बाकी चीज़ डिवाइस अपन ने लगा ही चुके हैं, तो क्या उसमें ब्लैक स्पॉट में क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो ड्राइवर वो रहे तो उसके पहले उसको अलर्ट हो जाए कि ब्लैक स्पॉट आने वाला है, सो दैट वो कुछ और हाई अलर्ट हो जाए? या एक्चुअली ये डिवाइस है जो आप 2.5 सेकंड्स बोल रहे हैं ना, उसको डिसाइड करने के लिए ये स्टडी, जैसा अगर इंडिया में ब्लैक स्पॉट में उनको एक सेकंड पहले और 2 सेकंड पहले बताना है ताकि वो अलर्ट हो जाए, वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चश्मा लगा के ड्राइवर को उनका रिएक्शन टाइम एंड उसको कब बताना है वो स्टडी में हेल्प हो जाएगा. एक बार ये वैल्यू आ गया, वो दूसरा डिवाइस जो एडास जो प्रीवियस स्पीकर ने बताया उसमें इस वैल्यू को हम एक अलग डिवाइस भी डेवलप करके उसको मोबाइल में लोड करो ताकि उनको बता सकते हैं, उसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट्स पॉसिबल. बट इस चश्मा में नहीं डाल सकते हैं उसको. नहीं, ऐसा कोई डिवाइस यदि वो हो जाए, क्योंकि इतना गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है ब्लैक स्पॉट में, तो जो हैवी ट्रक ड्राइवर्स हैं और हैवी रूट की गाड़ियां हैं वो जाती हैं, तो उसमें ब्लैक स्पॉट उसमें पता चल जाए ड्राइवर को, मतलब लोअर लेवल पे जो रोड यूजर्स हैं, या ये कर सकते हैं, इट इज एस कर सकते हैं. जो हमारी डेवलप्ड है उसी ऐप में ये जो आपने बताई है ये फीचर ऐड कर देते हैं कि जहाँ पे भी ब्लैक स्पॉट प्रॉप अप हो रहा है तो उसको वहाँ पे ड्राइवर को पता चल जाएगा, वो ऐप उसके मोबाइल पे लोडेड रहेगा, उससे उसको पता चल जाएगा. थैंक यू सर. सर और इवन ये जीपीएस में भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है, क्योंकि अभी मैप मैंडेटरी हो रहे हैं व्हीकल्स के अंदर, तो व्हीकल्स में ही मैपिंग हो जाएगा उसके कि ब्लैक स्पॉट इज कमिंग. हाँ सर, मेरा मतलब ये है कि सर कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो खैर मालूम ही है, लेकिन जो रोड यूज़र है जिसका डेली का काम है और जिनके कारण इतना बड़ा सब सेमिनार हो रहा है, यदि उसको यदि ये चीज़ मिल जाए तो सर इट इज़ बेटरमेंट फॉर सर. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन जसवंत साहब से है सर. इंदौर बाईपास पर जो अंडरपासेस है सर, कुछ अंडरपासेस उसमें वर्टिकल क्लियरेंस प्रॉपर नहीं है और साइड डिस्टेंस प्रॉपर नहीं हो, तो इसलिए एक्सटेंस प्रोन बनते जा रहे हैं सर. उसके लिए कुछ कर रहे हैं सर? सर आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सेंटेंस को करेक्ट करना चाहूँगा कि अंडर पासेस के हाइट्स गलत नहीं है. आज से 15 साल पहले जब इसको प्लान किया गया था, पीडब्ल्यूडी इंदौर ने ही प्लान किया हुआ था. उसके बाद उस समय ये स्ट्रक्चर्स हम लेके आए थे. दीज आर द पीयूपीज, पेडेस्ट्रियन अंडरपास, वेहिकुलर अंडरपास नहीं है सर वो, पहली चीज़. अब हमको क्योंकि इंदौर का डेवलपमेंट इतना तेजी से बढ़ गया है, दैट टू ऑन दिस साइड, कि दूसरा रिंग रोड जो हम अभी प्लान कर रहे हैं उसमें पहले से ही 100 मीटर विड्थ ले रहे हैं और 4 लेन सर्विस रोड का इंतजाम रख रहे हैं, विद पाइपलाइन जो यूटिलिटीज है उसका भी इंतजाम रख रहे हैं. ये आगे जो प्लानिंग है उसके लिए हमने कर रखा है. यहाँ पे जो आपने बात बताई है, अभी 4 वीयूपीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसका टेंडर किया हुआ है. एक MR10 के ऊपर, एक बड़ो 3-4 जगहों पे है वो,
तो वो बिट हमने लगाया हुआ है, अभी ठीक हो जाएगा वो। सर पर उस अंडरपास से हमारे विलेज रोड जा रहे हैं तो मिनिमम क्लियरेंस तो रिक्वायर्ड थे सर वहाँ पर। सर मिनिमम क्लियरेंस मीन्स व्हाट? मिनिमम क्लियरेंस इज जो हमारा पेडिस्ट्रियन है वो 2 मीटर है, 2 मीटर से ऊपर 3.5 मीटर वो हाइट है अभी। नहीं 3 मीटर हाइट है, रिक्वायरमेंट तो 4.8 प्लस होनी है सर। रिक्वायरमेंट वीयूपी की 5.5 है सर। अभी हमको उसके लिए डिजाइन नहीं हुए थे, इसको तोड़ के नया बना देना उचित भी नहीं है। लेकिन अब वो जो आपने बात बताई है, इसके लिए जहाँ जहाँ पे भी नहीं बने हैं, जो रोड डेवलप हो गई है, वहाँ पे हम वीयूपीज का प्लान कर रहे हैं। जैसे कि मेजर अभी जो MR10 जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है जी 6 लेन पे, वहाँ पे हम अभी 3 लेवल का फ्लाईओवर वहाँ प्लान किया है। वहीं से झलारिया रोड है, वहाँ पे हमने प्लान किया है। फिर हमने अर्जुन बड़ौदा पे प्लान किया है, फिर हमने राला मंडल पे प्लान किया है। ये जितनी भी साइट्स जहाँ पे जरूरत थी और स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए थे, वहाँ पे हमने इसको किया और सर्विस रोड से इसको अटैच करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सर मैं PD उज्जैन बोल रहा हूँ सर। विवेक जायसवाल साहब से प्रश्न है सर मेरा एक। सर अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर हम जो पेविंग कर रहे हैं, पेव्ड शोल्डर बना रहे हैं। अब पेव्ड शोल्डर का मैंने क्रस्ट जो बना दिया है वो मेन कैरेजवे के हिसाब से बना दिया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ओनली इन इमरजेंसी द मेन कैरेजवे ट्रैफिक विल कम टू द पेव्ड शोल्डर। अब इमरजेंसी में मेन ट्रैफिक जो 120 पे चल रहा है वो पेव्ड शोल्डर पे आ रहा है। व्हाट अबाउट द वल्नरेबल ट्रैफिक? जो मेरा स्कूटर चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, पेडिस्ट्रियन चल रहा है, उनके लिए एक रिस्क हैजार्डस हो रहा है। तो क्या ना मैं कच्चा शोल्डर दे रहा हूँ, अर्दन शोल्डर दे रहा हूँ, क्या मैं उसको पेवर ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 1-1.5 मीटर 4 फुट 5 फुट पेवर ब्लॉक अगर लगा दिया मैंने तो इट विल बी डेडिकेटली यूज्ड फॉर द वल्नरेबल ट्रैफिक। एक चीज़ तो ये। दूसरा प्रश्न ये है सर कि मैंने कई सारे बाईपासेस बना दिए। बाईपासेस बनाने के बाद में ढेरों सारे एक्सेस परमिशंस आ रहे हैं। एक्सेस परमिशन पे ऐसी एक्सेसेस भी आ रही हैं जहां पर मॉल्स बनने वाले हैं, जहां पर कॉलेजेस आ रहे हैं, जहां पर बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जो कि लगभग 100 करोड़ से 500 करोड़ तक के इनपुट्स डालेंगे। आप एक्सेस परमिशन देने के बाद में ALDL तो बना दी, किंतु ऐसे वल्नरेबल ट्रैफिक्स जो बोथ एंड साइड से आएंगे उनके लिए मैंडेटरी, क्या मैं सबवेज मैंडेटरी नहीं कर दूं कि वो डिपॉजिट हैंड पे एक सबवे बनाए ताकि आराम से ट्रैफिक लेफ्ट और राइट में जा सके और मेरे मीडियंस को नहीं तोड़े, मीडियन को जंप नहीं करे। तीसरी चीज ये है सर कि मैंने स्लिप रोड्स पे और मैंने कनेक्टिंग रोड्स पे मैंने ड्रेन कम फुटपाथ बनाया है। ये ड्रेन कम फुटपाथ मेरा रेज्ड है, जो लगभग की 225 mm ऊपर है FRL से। वो मेरे लिए आने वाले टाइम पे हैजार्डस हो जाता है। क्या मैं उसको लोड बियरिंग ड्रेन्स बना सकता हूं ताकि वो सेपरेटेड रहे, फर्दर वाइडनिंग हो सके, और जहां पर जब भी एक्सेस परमिशंस वगैरह देता हूं मैं, वो मेरे डैमेजेस नहीं करें, उस ड्रेन ब्लॉक्स को कभी भी डैमेजेस नहीं हो। तो ये 3 प्रश्न मेरा ये है जायसवाल साहब से। काइंडली IRC के सीनियर मेंबर्स होने की वजह से इसको एड्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमें सहूलियत मिल सके। थैंक यू पूर्विया साहब। हमने आपके जो पॉइंट्स हैं तीनों नोट किए हैं, और जो पहला पॉइंट था आपका पेव शोल्डर के ऊपर, DG सर ने भी बताया था कि उसका एक सोल्यूशन निकाला है। अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे वो एक सोल्यूशन इसका अवेलेबल है हमारे पास। और यहाँ पे बेसिकली तो हम रंबल स्ट्रिप, जो हमने हमारी वाइट स्ट्रिप्स है, उसको लगा सकते हैं फ्रीक्वेंट इंटरवल पे पूरे पेव शोल्डर पे। इवन सर ने तो शायद पूरे 100 किलोमीटर पे सैंक्शन किया है 1.5 मीटर विड्थ में। तो ऐसी चीज़ हम भी उसको लेके आते हैं, तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे, जो कि ड्राइवर को अलर्ट कर देगा। वो अपने 7 मीटर कैरिजवे से बाहर जा रहा है तो अलर्ट होके वापस अपने मेन कैरिजवे पे आ जाएगा। दूसरी बात आपने बताया कि एक्सेस परमिशन में सर, एक्सेस परमिशन की जहां तक बात है, बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सर, और वो कोई भी अंडरपासेस नहीं बनाते हैं और वल्नरेबल ट्रैफिक्स काफ़ी एक्सीडेंटल प्रोन हो रहा है। इसके लिए देखिए, आप वहाँ पे हम लोग रोड बना चुके हैं, प्लान एंड प्रोफाइल डिसाइड कर चुके हैं, और बड़ी रोड आने वाली है। उसके बाद ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ के लिए बेसिकली अब हमको, इसीलिए हमारा सबमिशन ये है कि जहाँ पे भी ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है उसकी हाइट ऑलमोस्ट 1.8 या 2.1 मीटर्स के आसपास जरूर रखें हैं, जिससे कि
इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर या आने वाले 1 साल में हम वहाँ पर, मैं सारे अपने जो असिस्टेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं जिनको जो कि ये सारी परमिशन को प्रोसेस करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को, प्रोजेक्ट को प्लान करते समय ध्यान रखें और ये अंडरपासेस का प्रोविज़न हम वहाँ पे दे पाएँ, हम सबवेज का प्रोविज़न दे पाएँ, ऐसा प्रावधान रखना है। अभी भी जो प्रोजेक्ट है जो आपने बताई है बातें, उसको हम ध्यान रखेंगे। तीसरा जो आप बता रहे हैं ड्रेन्स का, तो ड्रेन्स को हर जगह एक्सेस नहीं करना। मेन कैरिज वे पे जो रोड के साइड में ड्रेन्स हमारी बनी हुई है, हर जगह से उसको एक्सेस नहीं देना है। डिज़ायर्ड जो हमारी लोकेशंस है वहीं पे हम प्लान करें और वहीं पे लोड बेयरिंग ड्रेन को लगाएं, जिससे कि मेन कैरिज वे पे एक्सेस डेजिग्नेटेड लोकेशन से ही आए। ठीक है, ये हम प्लान करें। थैंक यू सर। सर मेरा सर आपसे सर ये क्वेश्चन है कि अधिकांश एक्सीडेंट 83% ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तब ये क्लियर होता है कि इनकी मतलब जो है स्पीड जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। तो जैसे आपने 8 लेन में बताया वहाँ सब व्यवस्था हो रही है, लेकिन 2 लेन 4 लेन यहाँ पे प्रॉपर सर जो है मतलब सुधार नहीं लागू हो सकता। सर मेरा ये सोचना था सर, यार सुझाव था 85% जो है रोड यूज कर रहे हैं पब्लिक, तो जैसे रेलवे पुलिस उस टाइप से सर हाईवे पुलिस भी सर होनी चाहिए जो कि मतलब ये सब चीज़ें लागू करे, जो स्पीड से चल रहे हैं या अतिक्रमण कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं सर। क्योंकि कोई भी दुर्घटना जब हो जाती है तब ओवर स्पीड का जो है इशू आता है, पहले उसको कंट्रोल नहीं कर पाते सर कोई भी। सर मैं आपको बताऊं, जो पीटीआई की रिपोर्ट में ओवर स्पीडिंग है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हमको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है हमने उसको ओवर स्पीड में डाल दिया है। लेकिन हम जो नेशनल हाईवेज हम बना रहे हैं सर, वो तो स्पीड के लिए ही बना रहे हैं। आज आप जो भी प्लान कर रहे हो, आप ट्रेवल टाइम कम करने के लिए प्लान कर रहे हो, आप स्पीड 100 देना चाहते हो, आप 80 की स्पीड देना चाहते हैं। तो नेशनल हाईवेज पे जो आप बता रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग रोड है वहाँ पे आपने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है सर। हमको हर हाल में सोचना है कि हम कर पाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा। नहीं, लेकिन जैसे जहाँ पर सर स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हैं या वार्निंग साइन बोर्ड है, लेकिन जनरली जो है मतलब ड्राइवर्स उसको मतलब कि अनदेखी कर देते हैं और उसके बाद भी स्पीड से जो है चलते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? नहीं बिल्कुल, जहाँ आपने ये जो बात बताई है, इसके लिए हम वहाँ पे जो रंबल स्ट्रिप्स है या फिर जो हमारा मार्किंग है, ट्रैवर्स बार मार्किंग है, उन सब चीज़ों को यूज़ करें, जिससे कि उसको ड्राइवर को बार बार ऐसी किसी वल्नरेबल लोकेशन पे ड्राइवर को बार बार पता चले कि नहीं यहाँ पे मुझे स्पीड धीरे चलाना ही है। तो इस तरीके के इक्विपमेंट्स हम करें, और इसीलिए मेरा आग्रह था कि हम जितने भी एसईज या चीफ इंजीनियर्स हैं या फिर आरओज हैं, इनको एनुअली कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, एनुअली रेट निकाल के रख लेने चाहिए और 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए, जिससे कि हम जिसको चाहो उससे काम करा लें कि जाओ वहाँ पे 3 ट्रैवर्स बार मार्किंग लगा दो। इस तरीके की चीज़ें हमको जब हम करके रखेंगे, अपना ये होमवर्क करके रखेंगे, तो हम जल्दी सक्सेसफुल होंगे और एक्सीडेंट में भी मतलब तेजी से कमी आएगी। थैंक यू। हेलो सर, वन मोर पॉइंट टू बी एडेड इन दिस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि ये नेटवर्क को डेवलप करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकता है, जिसमें क्या है कि स्पीड लिमिट को आपने बैरियर कर दिया। व्हीकल इज क्रॉसिंग एट 90 kmph, आपका वो स्पीड लिमिट उधर 90 है, सो व्हीकल इंटरेक्शन विद द बैरियर सेज 90 और ऑटोमेटिकली वो व्हीकल जिस ओनर के रजिस्टर में अकाउंट में जाएगा उसका फाइन उससे डिडक्ट होगा। आफ्टर 3 फाइन दैट हिज लाइसेंस विल बी गेट कैंसल्ड। सो सच मैंडेटेशन हैज़ टू बी देयर बाय गवर्नमेंट। अगर वो मैंडेटेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लोगों के दिमाग में वो मेंटेलिटी डेवलप हो जाएगा कि स्पीड लिमिट में स्पीड लिमिट से क्रॉस करना ही नहीं है। Hello sir, I have 3 small questions. First question is regarding the roads on the hilly areas, especially on the hilly areas. For cross drainage works, we are using pipe culverts sometimes, like NP2, NP3, 1200 dia or thickness, whatever be the it is. But when we check the actual reality of the ground, these cross drainage works are not sufficient for the passage and box culverts are required. But is there any guideline or it will be implemented later that box culverts are mandatory instead of pipe culverts of minimum size, so that they will suffice the requirement of the culverts, especially on the hilly areas where the drainage is large and we are using the pipe culverts which are of no use? This is my first question. My second question is regarding hilly areas, like if we will go to the northeast roads, there generally intermediate site ISD roads were more popular. But there we will see that on the nights there is no street light provisions on the roads.
So is there any guideline in the IRC codes that minimum this lux intensity is required at the night, like at this much of interval there are street lights that must be compulsory to be provided? Because if we will talk about the state major district roads, like road connectivity between Guwahati to Shillong and all this way, there is hardly a street light we will found on the road. And on the night, if we doesn't have our vehicle lights, then it's very hard to travel. This is my second question. My third question is regarding national highways and major district roads, where there is a junctions, major junctions like NH and MDR. We will see there are some locations where black spot we will find out. So we can implement this type of things, like when there is a black spot, we have to open we have to make some open space for collision area, that open ground, so that if vehicle will collide, then also there is a very less chances to damage something. So, but I haven't find anything in the highways yet that there is any open area for catering these collisions of junctions, so that it will reduce the cost. Thank you. Hello. I will answer your first query. You were asking about the provision of Hume pipe culverts vis-a-vis box culverts. So it depends on the catchment area, how much flood water is coming there. Minimum diameter in national highways, it is 1 meter, that is NP3. And box culvert, it can be higher dimensions also. So it depends on the area and the location where you want to provide the culvert. So pipe culverts, they have their own advantages and disadvantages. About your second query, about lighting on the roads, I don't think there is provision in the IRC code. Only in intersections. Only intersections area. Only in intersections area we will provide that. Solar. As far as the lighting is concerned, for national highways, we have the guidelines that it is provided at all the intersections and elevated structures and ROBs, ROBs and bridges. Other places we cannot have the lighting throughout the entire road network. So presently that is the guideline. As regards the box culvert, already I think he has explained that for national highways, we have a guideline that pipe diameter is NP4, 1.2 meter is the minimum diameter. If it is less than that, and it is, required to be, we have to upgrade that to 1.2 meter. So that is the requirement. Otherwise, it is the catchment area which will decide. And mostly we want to avoid the pipe culverts because clogging issue is there. So when we are constructing new culverts, we try to have either slab culvert or box culverts. थैंक यू डीजी सर। सर मैं नितिन अग्रवाल पार्थ इंडिया लिमिटेड से हूँ। मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे डायस पे और हॉल में काफ़ी एमिनेंट इंजीनियर्स हैं। सर एज अ पेडेस्ट्रियन क्या मुझे लेफ़्ट साइड पे चलना चाहिए कि राइट साइड पे चलना चाहिए? अगर मैं राइट साइड पे चलता हूँ तो कम से कम मैं सामने से आने वाले ट्रैफिक को देख पाता हूँ। ये एज अ नेचुरल सिटीजन मेरा प्रश्न है सभी गणमान्य। It's a good question. When there is a designated footpath is there, you are supposed to walk on that footpath, whether it's a left side or right side. If there is not a designated footpath, you are advised to walk on the जो ट्रैफिक सामने आ रहा है उसको देखते हुए वॉक करना है, so that you will be in a position to safeguard yourself. That is a basic fundamental which is expected as a person who is any pedestrian who is using the road. थैंक यू सो मच सर। ये मेरे जो बेसिक इंस्टिंक्ट यही बोलता था, बट मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस बात की जानकारी 99% वॉकर्स को नहीं रहती। हम लोग कीप लेफ्ट दिमाग में ऐसा बिठाते हैं कि हमें लेफ्ट में ही चलना है। सही तो है। शायद अगर इसकी जानकारी दी जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट, कम से कम अगर कोई ट्रैफिक गलत आ रहा है तो मैं अपने आप को बचा तो सकूं, देख सकूं। सही है सर। इवन स्कूल जोन मैनुअल में हम लोग जरूर इसको लिखा भी है, एक स्टेटमेंट भी लिखा है। थैंक यू सर। Thank you. We are now running short of time. We have to move for lunch. So I'll request Dr. Mohan to sum up.
Thank you, sir. Everybody are just waiting for lunch. I don't want to stand in between the lunch and each one of you. Just, हम बहुत लेट हो गए सर, हम सम अप करेंगे, आप लंच टाइम में आप बात कर लीजिए और प्लीज। ठीक है, अभी आज तो हम लोग 4 प्रेजेंटेशन थे टेक्निकल सेशन 5 में। So different areas have been covered, starting with road technology aspects, especially using like a eye tracker, how it can help the human enhancing the road safety aspects, which has been presented by Dr. Mohan Rao. So it gave insight about using it and also how the integration can be done to enhance road safety. And second presentation was an exhaustive presentation about the host of things going on in the state of Madhya Pradesh, with a specific focus on Delhi-Mumbai Expressway, wherein we are going to get what to say, a sort of world-class highway which expressway is coming up. So we got an insight to the entire things, and also the other initiatives taken by the NHA in this to enhance road safety in different sectors falling under the state of Madhya Pradesh. Mr. Shri Vivek Jaiswal ji has presented. And third presentation was an interesting presentation about vehicle technologies for road safety, where Mr. Sagar Bendre has from NATRAX has presented the aspects about technology, different type of in-vehicle technologies which can be utilized, which starting from ADAS to host of other upcoming things, even in the countries like USA, UK, or the European countries where it is at the infancy stage. Also he has given an insight to the thing, and also as we see in India, we are trying to use things like ADAS and all, and that gave us insight about what is in store for us, which can come from abroad, or otherwise what in-house research going on in cities like one IIT professor who is doing it on other aspects related to technology gave. Lastly, the presentation on road safety intervention is again an interesting presentation by Dr. P.K. Agarwal. He started with the hypothetical framework about intervention, and finally he summed up by giving different aspects about development of indices. And in fact, just I want to tell for the people who are, because we see in this forum people using mainly the action driven approach. For them this may be slightly off the record, but at the same time for the people who are using for black spot development, for hazard locations, I request and advise all the people to use IRC 131, wherein the countermeasures have been given in a more practical way. So you can really utilize it to develop your black spot in a more which can become really in saving the lives of maybe couple of lives if you have saved it using the black spot countermeasures which are given in that IRC document pertaining to your road. You will be able to really do your duty. So this is what I would like to summarize. Thank you, sir. सर मेरा छोटा सा एक प्रश्न था, ये आप प्लीज ड्यूरिंग लंच आप कर लें, वी आर गेटिंग लेट हैं, अभी और भी फॉर्मेलिटी हैं. Thank you, sir. I request the chairman to please felicitate the presenter with a token of appreciation. I request Mr. Anil Kumar Sharma, Council Member from Himachal Pradesh, to please felicitate the Chairman.
I request Mr. Jaswant Singh, Council Member from Himachal Pradesh, to please felicitate the co-chairman. I request all the delegates to please proceed for the lunch. As we are running behind the schedule, I request all the delegates to be back in 45 minutes.
Now, please request the presenters of this session, Mr. B.P. Borasi, Chief Engineer, Madhya Pradesh Public Works Department, Mr. Rajiv Lochan, Chief General Manager, National Highway Authority of India, Mr. S.F. Patil, Chief Engineer, Karnataka Public Works Department, Mr. Vijay Chaudhary, Superintending Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Mr. Sunil Verma, Superintending Engineer, Madhya Pradesh Road Development Corporation, Mr. Sandeep Dikshit, DCP Police Department, and Mr. Atul Gargav, Team Jan Akrosh, and Mr. James Markle from World Bank. All the presenters are requested to please take their seat on the dais. I request Mrs. Shanul Saxena, Assistant Engineer, Madhya Pradesh Public Works Department, to please welcome all the presenters. Now, please request the chairman to please conduct the session. Thank you. Welcome to all of you in this last technical session of the two-day seminar on road safety, current scenario and way forward. And we had earlier 5 sessions were very extremely informative, and we had the interaction, very live interaction, question answers. And now this session we have first is the keynote presentation, and that is by Mr. James Markland of World Bank. And then we have the presentations of and success stories of different departments and different stakeholders. As we all know that World Bank is actively engaged in the road safety activities throughout the world. In fact, in India also they are assisting our various state governments as well as central government in formulating our World Bank, our policies related to road safety as well as greening of highways. In fact, that is what I was explaining you, that for preparation of the document on black spot also I was offered because we have in ministry a separate zone, externally added project zone, EAP zone, which is headed by an additional secretary level officer. So I was offered that this document should be prepared at the earliest, and we want that IRC can take up this work through engaging a consultant under World Bank project. But somehow we completed this without the assistance and in-house work. But then there was another area, another document which they had already prepared was road safety audit manual. A draft was prepared by World Bank through their own consultant, and they wanted that to make it useful for all the stakeholders. They approached IRC that this document should be IRC publication. But as you all be knowing that in IRC we have a system of technical committees, because all our documents are discussed in detail
in our respective technical committees, and then they are recommending to apex committees, which is headed by DG himself, and then they are going to the council, and council finally approves the document. So without this, we cannot publish a document of any other stakeholders. So for this also, when in 2017, I was given a draft which was prepared by basically World Bank, and then we found that to make it useful for our country, we need to have a lot of changes in that document. And that document was introduced in our committee, the technical committee of road safety. World Bank experts, they made the presentation to the committee, and then finally, after 1.5 years of detailed discussion and making it more user-friendly, we are seeing the present shape of that road safety audit manual. So that first draft was prepared by World Bank, so I must compliment them for this contribution to the IRC document. Now also, in last month, we had a meeting with James also, and then other World Bank experts. They want in some more areas on road safety, and they want to come out with some basic drafts. So that we are discussing, and definitely we will like to get the international experience also involved in our documents. So with this background, and I would invite James on his views about what are the various contributions which global action which they have taken for reducing road accidents. So Mr. James from World Bank. It helps if you turn on the microphone. Thank you very much, sir, for your kind introduction. It's a big pleasure to be here in Indore, and thanks very much for inviting us. It's it's a real honor to be here. My presentation is going to be structured around 3 questions. The first one is why the road safety is important for the World Bank and why it should be important for governments everywhere. There's 2 reasons. There's the big picture, the world's sustainable development goals. 2 of those goals feature the road safety. There's specific targets to halve the number of deaths and injuries by 2030, and also to provide people with safe access so that they can move around without concerns. More specifically for India, I think we see that the road safety crisis here really has a very high economic impact. 87% of victims are male. They're the breadwinners of families, and when after accidents, basically those families are left in a very precarious position. Again, a big proportion of those victims are 45 or under, so they're the people who are really producing economically for the country. So it's a major issue. A year and a half ago, the World Bank prepared a study to look at the poverty and social impact of crashes, and basically the burden is really disproportionately borne by by low-income houses. They're already in a fairly challenging position economically, and a crash in the family basically drives them further into poverty. So road safety, it's like a poverty and a developmental challenge, and that's really why the World Bank is involved. Vehicles have grown very rapidly in India, vehicle numbers. Deaths jumped up. They're not exactly following vehicle numbers, but they're at a kind of an alarmingly high level. So what's the World Bank doing about this? We don't have a kind of a global plan, but basically our approach is to adopt strategies, support strategies that are tailored to suit the needs of individual countries. As Sir said in his introduction, each country has its own particular challenges, and those need to be
looked after. The areas of intervention of the World Bank, we fund projects, and during the support to those projects, we try to give a great deal of technical input on road safety. We also prepare knowledge documents, whether it's helping clients to produce those or to produce reports. Also advocacy. People like myself and much more senior officials stand up at conferences and argue the case for road safety. Some of the lessons that we've learned, I think systematic and proactive assessments of roads is essential. Incorporating safety engineering in the designs and being consistent about it, that's also important. These are things that we've heard earlier on. As is the need for multi-sectoral interventions. That's really, I think, the key challenge. Something that we'd suggest and that we're learning is that corridor-type approaches, a network-level approaches, may well be more effective in terms of using the resources that are available rather than focusing on black spots, because on a corridor approach, it's easier to bring together the enforcement and the health service. So this should not be new to anybody. We argue for a system approach where you have safer roads, safer vehicles, people that are safer and better prepared for the road environment, and safer speeds as well. And that really requires road safety management to bring all of these solutions together. You need collaboration across the sectors. You have to set priorities for the road engineering, and road engineering that encourages good road user behavior. If you make the road wider, people are probably going to go faster. If the road goes through a town and you make the road wider, that's perhaps not a good thing. Those are the kinds of things that we need to look at. Enforcement of traffic rules, effective trauma care, well-constructed vehicles that protect people and anybody that the vehicle might accidentally hit. Road users, they all need to know how to behave around the road. Analysis of crash data, that's really critical. We've heard about that this morning. But this collaboration and coordination, bringing all of these bodies together, that's really the challenge. I think what we can see from this graph is the two blue blocks below the line. Those show what engineering can do. If the block on the right shows the efforts and the improvement in level of incidents, crashes, if you put a lot of effort into road safety improvements. But that leaves a big gap, and that gap needs to be filled by the enforcement, by emergency response, awareness campaigns and so on. And that's really filling that gap is really the only way that we're all going to get to this halving of road crash fatalities. So let's look a little bit about how we can change the situation. What can we actually do? I've said before, we need to look at the data. I mean, it's astounding really that 70% of deaths involve vulnerable road users. We've heard about them earlier on. Speeding contributes 69% of fatalities on national highways. You know, these are the pointers that show us where we should be focusing our efforts. Vehicle condition, helmet use, seatbelt use, those are all important. The majority of fatalities are on the major roads where the speeds are higher, and most of them in the open interurban sections. Turning to the money a little bit, as I come from the World Bank, we always like to look at that a bit.
these numbers come from the New Zealand Land Transport Authority, and they may not be entirely, they may need a bit adjustment, but I think they give an idea of if you want to achieve these goals of halving road crash fatalities, you need to spend about 10% of your road sector budget on enforcement. That's what they do. It's quite a lot of money. And the enforcement it's about 50% of the, 20% of the total expenditure if you class it by road safety and non-road safety expenditure. So enforcement is important, is the message there. The approach, I'll run through this fairly quickly because we've heard a lot of this morning. Collect the data and look at it, analyze it, understand it, ask questions. The IRAD system, I think many of you will be aware of that. It's being rolled out. That data should be a rich source to help us solve this problem and target our efforts. Road safety audits should be happening. Road safety assessments, IRAP assessments, road safety reviews. There's all sorts of names for these things, but basically people who have a good understanding of road safety looking at roads and seeing what's going wrong. Look at this data and then use the data to prioritize between the 4 E's, the engineering, the enforcement, emergency response, education. If you have a lot of accidents that are due to speed, obviously the enforcement and education and unfortunately the emergency response are big parts of that. Again, I mentioned earlier, use a corridor approach that allows you to focus all of the enforcement along a particular section of road. Enforcement doesn't really work that well for black spots, but if you have police vehicles that patrol along 100 kilometers of road where there's a high number of deaths per kilometer, then you can make fairly efficient use and effective use of those resources, and the same for emergency response. So improve the engineering, introduce the enforcement and trauma care, first responders. We have examples of that. Also in our projects in Kerala, Andhra Pradesh, and also more recently work done by the Save Life Foundation with Morse on the Pune-Mumbai corridor. And finally, and really importantly, keep evaluating the results and refine what you're doing. What's effective, what isn't. What things that aren't effective, don't do them anymore or reduce the budget. Looking a little bit more detail at these various areas, the in-depth engineering. You need to look at a road almost meter by meter, 100 meters by 100 meters. What's the environment in each place? Roads are designed on laptops these days, but they need to be designed by people who go out and look at the roads. Because each location is different, and the numbers of vulnerable road users, the issues will also be different. In terms of enforcement, link this to social media, broadcasting, so that when the police start their patrols or speed control, then people aren't surprised. They understand why the police are doing it. Start to, as the government here did in the COVID times, quite effectively. People saw a big risk, but everybody went around properly protecting themselves and wearing masks. We need to try to encourage that same behavior for road safety. Mobile enforcement, I think that on many roads can be very effective. Fixed gantries serve their purpose, but
encourages motorists to stop and then accelerate and where the gantries are. But if they don't really know where the speed guns are, then they're a bit more careful. User speed display signs, we saw an example of that on the Delhi Mumbai Expressway. Train the police patrol officers so that they know how to stop vehicles, that they don't cause a danger themselves. Emergency response is something that we learned very much from our project in Tamil Nadu, is that ambulances need to have their locations optimized, use the data on crashes to do that, and also communicate between first responders and the trauma care centre so that you can plan treatments. Engineers, they have a very big role in this. We've spoken about using the data. I think 3 points at the bottom. If you need more land for safety purposes, work harder to get that land. Demand cross sections that suit all road users, not just prioritized cars. And if an international solution addresses your problem, then use it. There's facilities for that in the IRC code, but it's very hard in practice to do that. Something that's quite close to my heart is the question of deviation from standards. Designers can deviate from standards, but that creates basically black spots. Whenever somebody deviates from a standard, you should be producing a mitigating plan. How are you going to prevent an increase in accidents at that deviation? Things that might be useful: use narrow lane widths in urban areas or settlements. Have protected 2- and 3-wheeler lanes, traffic calming measures. A couple of examples. This is a photo from the Karnataka project. A good cross section. The safety barriers, lanes are divided up in accordance with use, and you see the IRAP scores have gone up significantly as a result of these improvements. Andhra Pradesh, for a relatively modest amount of money, significant reductions in crashes and fatalities were achieved. So to summarize, really I think the big message is proactivity before reactivity. Focus on the engineering, enforcement, education, rather than having to resort to the emergency response, trauma care, and the economic stress that's caused. Thank you very much, everybody. Good afternoon. Thank you, James, for this excellent presentation and covering all the aspects of road safety and your action plan and suggestions to carry forward. I think we can have a couple of questions before we move to the next part, that is the success stories. So, any specific questions to James? If there are no questions, okay. Yes, please. माइक है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक में अभी ब्लैक स्पॉट्स और इसके लिए क्या आगे कुछ फ्यूचर प्लानिंग है? अभी क्या ब्लेज रोड्स इतनी नाबार्ड की सैंक्शन होती हैं, सब वर्ल्ड बैंक से उसमें होती है, नाबार्ड से होती है, उसमें कुछ प्लानिंग का है? ब्लैक स्पॉट is asking for planning about black spots in World Bank projects. Hello? Okay, just need to.
As I hinted in the presentation, we actually prefer a corridor approach. There may be particular cases where black spots are important, but we'd encourage road authorities, ministries, to start to move away from a black spot approach, to prioritize by taking the fatalities per kilometer along roads, and that allows you to rank roads in terms of where the highest numbers of people are being killed. And really that's where you should start. Thank you. जब जो कॉरिडोर है उसमें जंक्शन डेवलपमेंट के लिए कुछ इंटरसेक्शन जो आते हैं उसमें I think for junctions that needs to be part of the engineering. You need to look at who's using the junction, what the movements are, how many 2-, 3-wheelers are there, how many pedestrians are there, and put in the measures that deal with that, whether it's traffic lights, grade separated, pedestrian crossings. You need to, basically vehicles need to slow down when they come to junctions. And in many countries they use roundabouts to do that. I know that they're not popular here, but perhaps this is something that you should start to look at. Thank you. Thank you. Sir, I am Manish Asati, Project Director, NHI. Sir, you must be having experience of many countries with respect to India also, and you must have been seeing the situation or the core issues here also. My question is, what are the 5 most important areas which can, if we can address those issues, so accident can be reduced in a considerable manner, in your view, sir? Okay, thank you. I mean, I can come up with 2 or 3 straight away. I think in going to the previous speaker's question about junctions, I think providing proper entries, acceleration lanes, deceleration lanes, storage space at junctions, I think that's something that really struck me as I drove along, primarily the dual carriageways. Also, an issue on dual, triple carriageways is the question of providing service roads, because not having service roads, that's why people drive the wrong way down dual carriageways, which is I don't know if that causes many accidents, but it's certainly frightening for me as a passenger or a driver when I see it. I think finally, I think lane discipline, I think that's important. Obviously, it's going to be something that will take time to solve. But one way I was with the chief engineer of the Uttar Pradesh Expressway Authority, and he was saying that vehicles start to go to their right lanes when they see police cars coming up behind with lights flashing in the distance. Drivers need to start to be made aware that that behavior isn't acceptable. Thanks. Thank you, sir. Sir, I'm Nitin Agrawal from Path India Limited. Lane discipline, as you just mentioned, India has been making 4-lane and 6-lane roads, divided carriageways, maybe over the past 15 years, 20 years. But how, is there a specific training which can be given for lane discipline? Because truckers don't know, everybody wants to drive at close to the median. Is there a video available somewhere, or what can be adopted? I mean, I don't know of one, but I think, road safety media campaigns, they need psychologists, they need a range of people who understand how to change people's behavior, because sometimes you can give them a message and they do exactly the opposite from what you want. Before working in India, I used to work in Ethiopia, and you used to have exactly the same problem, big tipper trucks in the fast lane.
but how, I'm not aware of anything that can change that, but that's an initiative I think that you should take up. I think one initiative in this regard has been taken by Delhi government. In Delhi, actually buses were just moving around in city. So when they started enforcing this lane discipline and they started putting huge fines, I think now they're all in line and you find that long queues of buses, though it is little problem to those who are turning in different direction because their queue is continuously moving. But anyway, I think some discipline has come in the movement of buses, particularly in Delhi city. So I think similarly enforcement is a very important issue, and penalties, that is what we have seen in the COVID time when that Motor Vehicle Act amendment was issued and enforcement fines were increased. I think some discipline has come. So I think this is one of the way how in India it works. I don't know how it works in other countries, but in India it works if you put heavy fines and enforcement. The study says, I think other countries, if you find the studies or literature study, that is the other way. They don't believe in the enforcement. But here we believe in the enforcement. Sir. Yes, please. Mr. James, I have two issues. You see, we have a target and objective of reducing the accidents to 50% in the next decade or so. This seems to be an ambitious target. On my national highways and state highways, the data shows that 60% of the accidents are happening on the network of national highways and state highways. That means 40% of the accidents are happening on the major district roads or village roads. So to achieve the objective of reduction to 50%, that means on national highways and state highways, I will have to reduce the accidents from 60% to 10%. That means it comes to 10%, and then I am taking no action for reducing the accidents on the major districts and village roads. So this seems to be an ambitious task. So my question is that while we are focusing on accident reduction on state highways, national highways, unless we tackle the 40% component of the accidents which are happening on the other roads, unless we make an effort to reduce the accidents proportionally there also by 50%, our objective of 50% reduction in next 10 years so seems to be a far-fetched thing in my view. Next, another question is from World Bank point of view. You see, as on date, I am unable to collect the accident data on real-time basis. So if I want to plan the rectification measures or what are the engineering measures, what are the enforcement measures I need to take, I need to have the exact data on my road network as to which are the vulnerable sections, which are the priority sections where the accidents are happening as on today or in the recent past 3 months, 6 months, so that I can prioritize my network, national highways, state highways, that which are my focus corridors or sections where I need to invest my engineering measures or enforcement measures. So unless I have that real-time data, because presently what is happening, I am getting data after 2 years, 3 years, and that is of no use because by the time lot many changes have happened. Probably World Bank study has been undertaken at the ministry level also, that IRAD program has been developed that to collect the accident data. So how the World Bank can help me to put a system in place so that in the next 6 months or 12 months I can have a real-time data of the accidents happening, I can analyze them, some crash analysis can be done, and that may help me in planning my road safety action plan. So if I can have that system in place for accident data collection, it will help me in planning my road safety action plan also. How to address these two issues? Perhaps to start with your second question, the IRAD question. I mean, in principle, the IRAD system can address what you're looking for. Now, I think
it's still a fairly new system. It needs refinement, and I think it also needs making available probably to more officials in the states, in PWDs, in districts, so that, you know, as you say, you get the real-time data. But as I understand it, if the police are efficient in inputting the data, then there's a way to distribute that information. And I think I have colleagues here who work in Morth who can perhaps give you a little bit more detail on that. On the MDRs and rural roads, it's more of a challenge, agreed, because of the enormous number of those roads. I mean, there's a large proportion, I mean, 40% is a big proportion of the deaths, but the length of the road in relation to the other roads is much higher. It must be 70, 80% of the road network, I guess. And I mean, I would suggest that a community type approach, teaching people, convincing people that, you know, driving fast, and I'm sure fast driving is the biggest problem, maybe drunken driving, is irresponsible in terms of the community as a whole. Maybe that's an area that you should focus on. I did, in trying to address the problem, we did debate amongst ourselves having some kind of a social media approach whereby people are encouraged using their smartphones or dash cams actually to record bad behavior and send it somewhere, whether it's the police or a media house, TV station, just to name and shame people, yeah? I mean, is that a way that we can increase enforcement? Because that's, I think, really one of the issues. Thank you. I think now we move to the next part, and remaining questions can be addressed later. So next part is the success stories from different departments. So in this series, first is from Madhya Pradesh PWD by Sri B.P. Borosi, Chief Engineer. 10 minutes is, please complete in your presentations in 10 minutes. Good afternoon, respected DICE and all delegates and my dear friends. I would like to give thanks IRC for providing opportunity to me. IRC, yes, second. सर केस स्टडी है मेरा, लेकिन कल भी इसके बारे में काफ़ी लेक्चर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन हो चुका, लेकिन मेरा टॉपिक स्टडी ऑफ ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन ऑन NH30 इन रीवा सिटी। सर जो इसमें टॉपिक मैंने कवर किए हैं, दिस आर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, नीड ऑफ द स्टडी, लिटरेचर रिव्यू, कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, केस स्टडी, conclusion and discussion, and example and references. Sir, driving safety is a key or lasting issue in the field of the transportation. The frequent traffic accident can seriously affect the safety of residents related to the life and property. Road traffic continue to be major development issue. A public health concern is the leading cause of death and injury across the world, killing more than 1.35 million people globally, as reported in the Global Status Report on Road Safety 2018, with 90% of these casualties take place in the development country. As per the World Health Organization, the accident-related data are known to be 8th leading cause of death and the first largest cause of death among the children age 5 to 14 and adult age 15 to 29. Globally, 54 of the accident-related death as pedestrian
cyclistic I think and considering the motorcyclist. time constraint, if you can come straight to your, your study, that will be better. जी sir. Because otherwise you will lose that particular focus. Okay sir. This data we have been discussing for 2 days. Road traffic injuring are currently estimated to be 9th leading cause of the death across all age group globally, and predicted to become a 7th leading cause of death by 2030. Sir, ये important point है sir. जी sir. Sir. So objective of the study to minimize the number and severity of accident that will occur on the new modified or modified road, to avoid the possibility of scheme giving rise to accident elsewhere in the road network, to recognize the importance of the safety in road design to meet the need and perception of all type of road user and achieve a balance between the need where they may be in conflict, to reduce the long-term cost of the scheme, bearing in mind that unsafe design may be expensive and even impossible to correct at later stage, to improve the awareness of safe design practice by all involved in the planning, design and construction and maintenance of road. Sir, need of the study, road traffic issue moreover have become a backbone of major injury death in recent. The problem lie between the negligence and the false approach toward the better analysis of traffic event. The liability of road accident supposed to be vary to various reasons such as the drunken driver, natural causes, weather condition, pedestrian crossing, brake failure, tire bursting. It is the fine remedy if the factor could be analyzed, grasped and act to take right measure. To avoid road mischief, it is not enough to just improve the road condition, but elsewhere need to control the traffic accident happening by the analysis and cause and effect of regulations. Sir, these are literature views. No, sir. Okay, sir. The cause of accident, sir. More speed beyond, sir, ये already discuss कर चुका है, लेकिन सर मेरा एक निवेदन है सर ये जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जब हम प्लेन में जाते हैं तो हमें सीट बेल्ट के लिए अवेयर किया जाता है सर. तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम जरा से भी दुर्घटना यदि हमारी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कवर कर लेना चाहिए सर. मेरा ऐसा सर आप कर सकते हो तो सब कुछ कवर करो, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ आपको. सर टाइम सबको सर आपको जो केस स्टडी जो किया है वो कोई इम्पोर्टेंट हमारे लिए. सर लिटरेचर स्टडी तो सभी ने करनी है. सर ये मेथोडोलॉजी है सर. आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, एक्सीडेंट डाटा एनालिसिस, साइट स्टडी एंड पब्लिक ओपिनियन, safety audit of black spot, reporting of mitigation measure, implementation mitigation measure, safety awareness campaign. Sir, case study of Riva city. In the study, the total stretches length of NH30 is 15 km. The section of NH traverses through a flat terrain of mostly agricultural belt alignment of Riva. Border road is mostly passing through the plain terrain, and some stretches of road passing through the rolling terrain having short portion. The project road is the National Highway 30, old NH, the Highway NH30 connected Varanasi to Kanyakumari, and NH7 is major north-south national highway in India that run through the state of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka and Tamil Nadu. This section of NH30 traverses through a flat terrain of mostly agricultural belt. FIR has been launched during the last 3 years, out of which 3 are fatal accidents. The chainage of black spot and Mangawa cross junction is chainage 206 plus 420. It has been observed that the straight stretch and road geometric satisfy all the standard. The cross road is a major district road connecting the village Mangawa to other villages Hanumana, and finally to Bakunpur on Riva Bankutpur road. It is all weather BT road with the approximate length is of 18 km. It has been found that there have been 2 UP flyover 1.382 km away towards Riva side and 1.02 km away on Hanumana side on NH30.
सर ये कैश स्टडी है, यहाँ पर जंक्शंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये डिटेल्स में दे रखा है सर मैंने। लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी जंक्शंस, जो कल भी प्रॉब्लम आई थी कि जंक्शंस को हम यदि प्रॉपर डेवलप कर देते हैं सर, तो वहाँ पर हम एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है सर। इसके बारे में पूरा दे इन द स्टडी द टोटल स्टेजेस लेंथ इज NH सर, या सॉरी सर, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन मनगावा बाईपास जंक्शन NH 229, दो सिमिलर ब्लैक स्पॉट थे सर उसके साथ में। देर इज नो हाई मास lighting, so increasing the lighting night visibility. High mask light will be provided at the junction. The accident is due to high speed, therefore speed shall be lowered down at intersection. So speed limit measure such as bar marking, rumble strip, road stud are required and recommendation. There is a stud animal along the roadside and intersection. It recommend boundary wall fencing should be provided to keep animal off road section. Wherever animal access is therefore, so instant need to control the excessive vegetation. The pavement deterioration, transverse longitudinal alligator cracks, edge cracking and potholes has been seen the many of the places showing that the surface of pavement is damaged. Hence recommended maintenance work should be done. There are no speed breaker at the minor road, so it will recommend the speed breaker along with signboard should be provided at the road section. Sir, vehicle park on the roadside should also cause the traffic flow to be disturbed. This should be avoided to strict rule of law enforcement. Sir, black spot improvement measures, short term and long term. Placement of road marking, placement of road sign, highway lighting, ensuring safety barriers, junction development, improvement of the vertical and horizontal alignment, the proposed reconstruction, rehabilitation, widening of the road structure, advanced warning, guidance by means of the sign and devices, speed control, clear efficient traffic control, protection of work, safe access for construction of vehicles. 1 minute left, sir. Study demand a modern system of quality and safety control. The road surface of the road maintenance and operation. The careful road safety audit conduct at all stages of the road construction from planning to operation will allow to identification, eliminate the already at the stage. Thus, some measure to eliminate this road section should be taken. It is necessary to determine the list of factors which influence the accident rate. Knowing the specific factor that have negative impact on road safety, it will be possible to offer number of recommendations for improvement road safety on specific road section according to recommendation from the manual of the road safety. By auditing road section with the high accident rate, a great attention to pay environment factor as well as a road factor on occurs. Sir, these are Y-type junctions, details drawings, sir. These are reference. सर इसके साथ सर एक वीडियो सर कल डॉक्टर राजेश सक्सेना साहब ने जो आए थे, उन्होंने जो हमें गोल्डन पीरियड में कैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता था उस पेशेंट को कैसे ले जाते हैं सर, उसके बारे में 30 सेकंड का वीडियो है सर। इसको ऑन करना सर, ऑन करना है सर। हाँ देखो ये, हाँ देखो कहाँ पे है आपका ये वीडियो, कहाँ है इसमें वीडियो का? नहीं ये तो है तो, लेकिन वीडियो का कोई लिंक डाला नहीं है, वीडियो का कोई बटन नहीं दिख रहा है नीचे अटैच किया। हाँ वीडियो का कोई नहीं था, फ़ोटो आया बस। हाँ रवि चिंता मत कर बेटा, चल अस्पताल चल रहे हैं अपन, अस्पताल चल रहे हैं, चिंता मत कर बेटा, ठीक हो जाएगा। अभी आज सागर में इलाज हो गया ना बेटा, अब लेके वहीं चल रहे हैं, एमआई रेफर कर दिया तेरे को, चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, चल रहा है बेटा ना, वहाँ डॉक्टर को भी बोल दिया अपने एमआई में, चिंता मत कर।
che sappiamo che stava più interessante. सर हमारे 2 दिन का सर 2-3 मिनट और लेना चाहूँगा सर, यदि टाइम दे तो सर। सर माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग बुक होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकें, समझ सकें और नीचे तक हमारी बात को अच्छे से चली जाए। इसी कड़ी में सर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल करके मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में चालू की है सर, जिससे कि यहाँ के हमारे हिंदी भाषी प्रदेश के बच्चे बहुत अच्छे से समझकर अच्छी भाषाओं में उस भाषा में समझकर अच्छा काम कर सकेंगे। उसी कड़ी में जिससे कि आज हम ब्लैक स्पॉट की बात कर रहे हैं, ब्लैक स्पॉट के सेमिनार भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन उसको हमारी यहाँ पर हम बैठ के बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमारी बात बहुत अच्छे से नहीं जा पा रही सर। तो उसके लिए हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है हिंदी भाषा में भी हमने इसको प्रयोग किया है। ब्लैक स्पॉट को कैसे डेवलप किया, ब्लैक स्पॉट क्या होता है और उसके क्या क्या मेजर्स हैं, उसके सेफ्टी उसको कैसे कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाते हैं सर। मैंने इस बारे में एक बुक लिखी है, उसके अंदर मैंने रोड सेफ्टी के बारे में चैप्टर 8 मैंने ब्लैक स्पॉट के बारे में दिया है सर, और ट्रैफिक काल्मिंग मेजर क्या होता है उसकी परिभाषा क्या है, वो IRC 99 के बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिससे कि मेरी अप्रोच है कि जहाँ मैं सिवनी, बालाघाट, मंडला में मेरे इंजीनियर, भिंड, मुरैना के मेरे इंजीनियर यदि समझ जाएंगे तो बढ़ने चले कि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है आज की डेट में जो मैक्सिमम हमारे इंडिया का है, यदि हमारे वहाँ के इंजीनियर हमारी भाषा को टेक्निकल भाषा को समझ गए तो बढ़ने चले कि जो हम 50% फर्टिलिटी रेट कम करने की मैं मान को 60 to 70% तक हम फर्टिलिटी रेट को कम कर सकते हैं। ऐसे सेमिनार हम नीचे तक ले जाके करें, जिससे कि यहाँ पर हमारे जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, हमारे डेलीगेट्स आए हैं वहाँ पर वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके नीचे तक के स्टाफ को मोटिवेट करें। मोटिवेट करेंगे 5 से 6 बार, 6-7 बार, तो हमारे इंजीनियर्स नीचे तक भी बहुत समझ जाएंगे और उसको अच्छे से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर। यही जब हम रोड सेफ्टी की बात करें तो रोड सेफ्टी बहुत बड़ा पैरामीटर है सर। इसको यदि हम बात करें तो स्कॉच मेथड एक ME में हमने पढ़ी थी सर, कि जिससे भी यदि बड़ी समस्या है, सब बड़ी समस्या को हल करने के लिए यदि हम एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे तो कभी हल नहीं कर पाएंगे। तो उसको ऐसी बड़ी समस्या को यदि पीसेस में हम ले लेंगे, पीसेस में एक एक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत अच्छे से फिर असेंबल करके उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम बात करें यदि रोड सेफ्टी की बात करें, रोड की बात करें तो एक तो मेजर पॉइंट आ गया हमारा, जंक्शंस आ गया सर, हमारे कर्व आ गए। यदि जंक्शंस भी हमारे सिंगल लेन से लगाकर सिंगल लेन से लगाकर 4 लेन तक सर। अभी आपका बहुत और भी बहुत सर ओके सर इस वेरी केस स्टडी तक लिमिट रखो सर इस पहल को ध्यान देंगे सर, मेरा ओपिनियन बस इतना है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट इज बाय श्री राजीव लोचन, चीफ जनरल मैनेजर लीगल NHAI। Respected dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, friends, ladies and gentlemen, ये लास्ट टेक्निकल सेशन है, समय कम है इसलिए मैं जल्दी अपनी बात ख़त्म करूंगा। सर ने बताया मैं NHAI में CGM लीगल के तौर पे अभी काम कर रहा था, लेकिन सिविल इंजीनियर हूँ। पहले मंत्रालय में 5 साल निदेशक सड़क सुरक्षा के तौर पे काम किया और रूरल रोड्स में भी सड़क सुरक्षा में काम किया था। तो मुझे जब कहा गया कि सड़क सुरक्षा में योगदान कीजिए तो ये जिम्मेदारी मैंने ऊपर से ली, क्योंकि मुझे इसमें मन लगता है। इसमें प्रॉब्लम इतना है, जब 5 साल मैंने एज डायरेक्टर रोड सेफ्टी किया तो देखा इस सेक्टर में इतना काम होना है, इतनी मिजरी है, इतनी लोग मर रहे हैं, मतलब अंडर रिपोर्टिंग है डेटा में, जो दिखता है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ग्राउंड पे। और अपने इंजीनियर भाइयों से यही मेरा निवेदन है कि रोड्स हम डिज़ाइन करते हैं व्हीकल ओनर के पर्सपेक्टिव से, तो ये थोड़ा सा हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। हमें जो वल्नरेबल रोड यूज़र्स हैं, जिन पे ज़्यादा फेटालिटी और
एक्सीडेंट्स का ज़्यादा ब्रंट जिन पे हो पड़ता है, तो उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सड़क सुरक्षा का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऑफ सोशल इक्विटी भी है। सड़क पे कितना स्पेस किसको मिलेगा, सिर्फ गाड़ी वालों के लिए ही स्पेस नहीं देना है। जो पैदल, हम लोग खुद भी पेडेस्ट्रियंस होते हैं बहुत मर्तबा, हमेशा हम गाड़ी में नहीं होते हैं हम। और अल्टीमेटली जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कहीं भी अर्बन नेशनल हाईवेज पे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट अर्बन एरियाज़ में जो पेडेस्ट्रियन एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, जब तक हम उसको एज वैलिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं समझेंगे, तब तक हमारे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का समस्या सॉल्व नहीं होगा। तो हम बहुत जल्दी मुझे बहुत खुशी है कल से वल्नरेबल रोड यूज़र्स पे सभी ने, और क्या एज इंजीनियर्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है, वैसे एज इंजीनियर्स मुझे डॉक्टर कडियाली से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि वी नीड टू इंजीनियर द बिहेवियर ऑफ रोड यूज़र्स। थ्रू इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस वी कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ रोड यूज़र्स। दे शुड बिहेव इन द मैनर इन विच वी वांट देम टू डू एंड नॉट एज दे विश टू डू। तो जैसे हम चाहते हैं उस हिसाब से बहुत सारे इंजीनियरिंग मेजर्स हैं, जैसे आपने गोल चक्कर या राउंड अबाउट बना देते हैं, नैरोइंग ऑफ लेन्स कर दिया, रंबल स्ट्रिप बना दिया, चैनलाइजिंग कर दिया। तो इस तरीके के चैनलाइजिंग से जैसे इफेक्टिव विड्थ भी घट जाता है, तो आदमी स्पीड थोड़ा सा साइकोलॉजिकली कम कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें जो सभी ने बताया है एज इंजीनियरिंग मेजर्स, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम यूज़र्स को ब्लेम करने के बजाय पहले हम जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। तो NHAI में क्या इनिशिएटिव चल रहा है, 2 मिनट में उस पर बता दूंगा। वल्नरेबल क्रैश क्या होता है, नेशनल हाईवेज़ का शेयर बहुत हाई है फैटेलिटीज़ में, और कोविड के दौरान फैटेलिटीज़ घटी हैं, लेकिन नेशनल हाईवेज़ का शेयर उसमें थोड़ा बढ़ गया है। वल्नरेबल रोड यूज़र्स कौन से हैं, जिनके कल डॉक्टर सिकदर ने बोला हु डू नॉट हैव अ स्टील शेल अराउंड देम, मतलब पेडेस्ट्रियंस, 2 व्हीलर राइडर्स और जो ठेला गाड़ी और दूसरे जो होते हैं। तो ये लगभग इनका देखेंगे तो जो नेशनल हाईवेज़ पे फैटेलिटी है उसका 60% लगभग यही पैदल यात्री, 2 व्हीलर राइडर सबसे ज़्यादा हैं, और कुल मिला के लगभग 60% हो जाते हैं। तो इनके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ एक्सेस कंट्रोल्ड रोड है वहाँ इनका उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी ज़्यादातर नेशनल हाईवेज़ एक्सेस कंट्रोल्ड नहीं है, मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस हैं। जब तक पेडेस्ट्रियंस और इनके लिए हम अलग से स्पेस नहीं बना पाते, सर्विस रोड्स भी हमारे होते हैं, कई बार कंटिन्यूस नहीं होते हैं, कई बार लैंड एक्विजिशन इश्यूज़ और दूसरी समस्याओं के कारण हमारे सर्विस रोड्स कंटिन्यूस नहीं होते हैं। तो इनके लिए स्पेस हमें मान के चलना होगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी सुरक्षा भी हम सुनिश्चित करें। हाई VRU क्रैशेस की रीजंस ये इन सब से आप लोग सभी अवगत हैं। जो हम VRU के लिए स्पेसेस देंगे उनकी क्या पर्पस है, तो सेफ्टी फ्रॉम मोटराइज्ड ट्रैफिक, सिक्योरिटी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़, कंटिन्यूटी, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री मूवमेंट और कंफर्टेबल मूवमेंट उनका हो, ऐसा करके। और उनका स्पेस डिज़ाइन करने के लिए हमको क्लासिफाइड वॉल्यूम काउंट्स करने होंगे, उनके लैंड यूज़ क्या है अलॉन्ग द हाईवे उसका भी ध्यान रखना होगा, और एक्चुअली ये VRUs क्या पाथ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई पेडेस्ट्रियन अगर बस स्टॉप पे उतर के अपने डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है तो क्या रास्ता लेता है, उन सारी चीज़ों को स्टडी करके उनके लिए हमें अरेंजमेंट करना होगा। अभी एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस हैं VRUs के लिए, नाम पे ऐसे शोल्डर्स, वो VRUs के लिए नहीं है, लेकिन अभी जब कुछ नहीं है तो शोल्डर्स उनके लिए लास्ट रिफ्यूज है। फुटपाथ्स बिल्टअप एरिया में हम देते हैं, हमारे मैनुअल्स में, गाइडलाइंस में सभी जगह है, लेकिन हमारे जो एक्चुअल रोड्स हैं ग्राउंड पे वो थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं। ये हमारे IRC SP 87 में प्रावधान दिए हुए हैं। ये रेलिंग्स हैं और टेबल टॉप क्रॉसिंग है और उस तरीके की बहुत सारी चीज़, सर्विस रोड है अलॉन्ग द मेन कैरेज वे, ये सारे प्रावधान, ये सारे प्रोविजंस हैं। फिर एड ग्रेड क्रॉसिंग, मिड ब्लॉक इंटरसेक्शंस, ग्रेड सेपरेटेड क्रॉसिंग, इन सारी चीज़ों का प्रावधान है हमारे मैनुअल्स में। एक चीज़ जैसे ट्रैफिक कामिंग मेजर्स ऑन मिड ब्लॉक सेक्शन, ये भी दे रखा है। ये अंडरपास हमने दिया, फुट ओवर ब्रिज यूज़ नहीं हो पाते हैं, उसके लिए भी स्टडीज़ की आवश्यकता है। जंक्शन, ये जहाँ छोटी सड़कें, कई बार रूरल रोड्स भी आके हमारे नेशनल हाईवेज से मिलती हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरत है। एक बार
यूएनएसकैप ने कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, उसमें विशेष चर्चा का यही विषय था कि अलग अलग रोड ओनिंग अथॉरिटीज़ आपस में कैसे तालमेल करती हैं, क्या उनमें बातचीत करने का कोई फॉर्मल मैकेनिज्म है, क्या रूरल रोड वाले स्टेट हाईवेज वालों से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, अदरवाइज वो जंक्शन के एरिया नेग्लेक्टेड रह जाता है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो अभी महावीर सिंह साहब भी बोले थे 40% जो रूरल रोड्स पे होते हैं, तो ज़्यादातर ये जंक्शंस और इंटरसेक्शंस जो हैं वो बहुत ही क्रूशल एरियाज़ हैं, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और रूरल रोड वाले को, स्टेट हाईवेज वालों को, सभी को मिल के बात करने की ज़रूरत है। लाइटिंग ऑन हाईवेज, ये एक ऐसी सिंपल फ्लेयरिंग ऑफ कर्ब्स जहाँ पे अंडर इंजीनियरिंग मेजर्स बहुत सारे हैं जिससे कि हम सुनिश्चित कर सकते हैं साइड डिस्टेंस वगैरह। अब 2 मिनट में आपको नेशनल NHAI में अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्या कदम उठाए हैं वो बता देते हैं। एक तो इंजीनियर्स को, जैसे मैंने बोला कि उनको उनकी शक्ति याद दिलानी होती है। अभी हमने रूरल रोड्स में भी था तो वहाँ ट्रेनिंग करवाई थी, और अभी CRRI में सर अभी जस्ट 15 दिन का ट्रेनिंग कंक्लूड हुआ। मैं पहले दिन भी गया था और आखिरी दिन भी गया था, और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद 40 इंजीनियर ने एक सुर से कहा कि अब हमको पता लग गया है कि हमें क्या करना है। पहले हम साइट पे जाते थे तो हमें लगता था डेफिशिएंसी है, लेकिन हमको करना क्या है ये हमको समझ में नहीं आता था। तो ये कोर्स बहुत अच्छा रहा। तो इस तरीके से उनके लिए अब NHAI में मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनका प्रमोशन डिप्टी मैनेजर टू मैनेजर, मैनेजर टू DGM तभी होगा जब वो ये 15 दिन का रोड सेफ्टी ऑडिट का कोर्स कर लेंगे। फिर एक हमने रोड सेफ्टी ऑडिट की भी पॉलिसी बना के NHAI के वेबसाइट पे लगा दिया है, जिसमें अलग अलग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी की जिम्मेदारी ईयर मार्क कर दी गई है। जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर की क्या है, रीजनल ऑफिसर की क्या है, जो ऑडिटर है उसका क्या है, जो डिज़ाइन कंसल्टेंट है उसका क्या है, सब, जिससे कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा सकें। फिर अभी नेशनल हाईवेज़ में DPR की ऑडिट तो होती थी, लेकिन वही डिज़ाइन जो कंसल्टेंट DPR कंसल्टेंट था वही अपने उसी की एक डिफरेंट टीम ऑडिट करती थी। तो अब उसका DPR की भी इंडिपेंडेंट ऑडिट की मंजूरी हो गई है, और उसका अभी कल ही उसका सर्कुलर जारी हुआ कि DPR स्टेज पे सभी DPR की इंडिपेंडेंट रोड सेफ्टी ऑडिट होगी, जिससे कि जो वल्नरेबल रोड यूजर्स या और जितने भी इंजीनियरिंग प्रावधान हैं वो हैं या नहीं वो सुनिश्चित किया जाएगा। कल नकवी साहब ने रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स के बारे में बताया था। मॉडल सेफ रोड्स का भी एक हम लोगों ने काम लिया है, मॉडल सेफ रोड्स एंड मॉडल सेफ कंस्ट्रक्शन जोन्स। सभी रीजनल ऑफिसर्स को बोला गया है कि वो एटलीस्ट 15 किलोमीटर के 5-5 स्ट्रेच डेवलप करें एज मॉडल सेफ रोड्स। उसमें से अभी बाय दिसंबर एंड उनका इवैल्यूएशन करके जो सबसे अच्छे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, और उनको कुछ रिकॉग्निशन भी किया जाएगा, और बाकी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा कि उनको रेप्लिकेट करें, वैसे ही रोड वो और बनाएं। कंस्ट्रक्शन जोन खास करके बड़ा ही एक विषय है जो IRC SP 55 में जो लिखा है और जो ग्राउंड पे दिखता है, कल शायद इसमें एक प्रेजेंटेशन भी हुआ था, तो वो बिल्कुल ही तालमेल कहीं नहीं होता है। ग्राउंड पे दिखता है और IRC SP 55, तो उसमें सभी को मॉडल सेफ कंस्ट्रक्शन जोन्स भी बनाने को कहा गया है, और फिर आगे उनको रेप्लिकेट करने के लिए बताया जाएगा। आगे के लिए रास्ता क्या है? एक तो जो भी हमारे मैनुअल्स गाइडलाइंस में VRUs के लिए ऑलरेडी प्रोविजंस हैं उनको हमें अपने डिज़ाइन में सम्मिलित करना है, और जो ये वल्नरेबल रोड यूज़र्स हैं उनके लिए सड़क पे यथोचित स्पेस का प्रावधान प्रबंध करना है। मतलब जैसे अभी मलेशिया में मोटरसाइकिल के लिए सेपरेट लेन्स उन्होंने दिया है फिजिकली सेपरेट करके, तो हमें भी जैसे देखना है कि अपने यहाँ भी पायलट करके देखना चाहिए कि एटलीस्ट जहाँ पे हम अर्बन एरियाज़ में जाने लगते हैं जहाँ मिक्स ट्रैफिक है, 2 व्हीलर्स की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम सेपरेट लेन्स देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और फेटालिटी भी बहुत अधिक है। तो करके हमें देखें, कोई इसमें फाइनल वर्ड कुछ भी नहीं है, अपने देश में स्टडी करके देखने की ज़रूरत है। कोई मेजर आप लीजिए, फिर उसका मॉनिटरिंग करके देखिए कि कितना इफेक्टिव है वो, तो ये करके हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरा है कि ये एक्सीडेंट एनालिसिस जो है, क्रैश इन्वेस्टिगेशन अपने देश में होता नहीं है, शायद उसकी एक्सपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद सेक्शन 135 के अंदर, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उसकी क्रैश इन्वेस्टिगेशन उसका होना चाहिए, जिससे कि क्यों हुआ, क्या कंसीक्वेंस हुआ,
किस तरीके के एक्सीडेंट का, जिससे कि उसके आगे हम रेमेडियल मेजर सही तरीके से ले सके। तो क्रैश इन्वेस्टिगेशन अपने यहाँ नहीं होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ क्रैश इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट टेक्निक्स बोलते हैं, जैसे एक्सीडेंट जैसे हुआ उसके पहले कई बार होता है एक्सीडेंट होते होते बचता है, ऐसे सरकमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वीडियो एनालिटिक्स को यूज़ करके पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टडी करके हम ये देख सकते हैं कि एक्सीडेंट किन कारणों से होते हैं। तो इस तरीके के स्टडीज़ करने की ज़रूरत है और VRUs के लिए उस प्रावधान करने की ज़रूरत है। फिर स्पीड कंट्रोल, स्पीड जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है, एक्सीडेंट होने का कारण है। और इसके कारण जैसे सभी ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो एक्सपोनेंशियली स्पीड के साथ एक्सीडेंट का कंसीक्वेंस खराब होता है। तो इसलिए हमें स्पीड कंट्रोल, तो हम पुलिस तो अपने देश में, जैसा किसी ने पूछा अभी, हाईवे पेट्रोल में 2012 में मंत्रालय में था, सभी नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल मीटिंग्स, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग्स में हाईवे पेट्रोल बनाने की बात, लेकिन अपने देश में बहुत गरीबी है, अभी तो शहरों में पुलिस नहीं है, हाईवे पे आपको पुलिस। तो एज इंजीनियर्स हम जो ये ATMS ITS जो कैमरा लगे हुए हैं उसको यूज़ करके ऑटोमेटिक चालान जनरेशन अगर करेंगे तो मे बी वी कैन हेल्प आ पुलिस ऑफिसर्स, तो एनफोर्समेंट में हम मदद कर सकते हैं। तो हमें इसे और देखना है, अभी हम कोशिश करेंगे, जैसे NHAI ने जैसे अभी बताया, PD रतलाम ने बताया कि उनका स्ट्रेच कंप्लीट हुआ है, वहाँ सब कैमरा और ये सब लगे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से तालमेल करके उसमें ऑटोमेटिक चालान जनरेशन की। तभी स्पीड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ये VRUs के लिए भी और जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनके लिए भी। बहुत धन्यवाद। Thank you for completing timely this your NHAI's experience. The next one will have a presentation from Chief Engineer Karnataka PWD Sri SF Patil. Good afternoon to all dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. Since yesterday, we are hearing about road safety. We have got more than a dozen quotes from IRC, around 9 special publications. Still, we want to learn. We want to understand what is the mechanism of this road safety. In front of us, world scenario is there, but even then, we are failing to control these accidents, fatalities, deaths. But Karnataka also doing a lot of activities in this regard. So I would like to take you to Karnataka experiment. Before that, I want to say life is only once. It is very, very precious. There is no second chance. Let us take an oath to reduce the accidents and accident deaths on the roads by giving the best of the best roads to our society and our people. So friends, before going to Karnataka model, what we have done, of course, we have developed our state highways with the help of World Bank, Karnataka State Highway Improvement Project 1, KSHIP 1 and KSHIP 2. With KSHIP 2, we have taken up one safe corridor project, demonstration project. So I have taken it as a case study. There you can see the findings. I mean, accidents rates have come down heavily, very heavily. So world has seen a COVID since 3 years now. We are coming out of that shadow. We hope in coming days, India is developing very fast. Our road infrastructure is also going in a very faster speed. Each day we are building 37 kilometers and even more. But how safe our roads are is a big question. Of course, it is not, I mean, roads are not good. It is the roads are good, but the users
we should target them. That is our main, today's discussion and deliberation really has recognized this road safety, these accidents has to be controlled. Otherwise, we'll be losing our fellow brothers day by day. Friends, I will just I have changed all safer roads, safer vehicles, safer speed, safer drivers. They were telling, but after discussion with my team, because I sit as a chief engineer North Karnataka, there I have taken one road for analysis. So I have changed some, these good vehicles should be there. Safer roads, yes, fully agreed. Safe speed, we should target speed first. Then careful road users, then sensible drivers, then comes positive and responsive behaviors of all. So Karnataka state has got 31 districts, 1,91,791 square kilometer with 6.4 crore population. In this, total vehicle population is 2.84 crore approximately, out of which 75 to 80% two-wheelers. So our road network is 2,79,356 kilometers, out of which state highway 7,332 kilometers, and national highway 7,332 kilometers, state highway 27,881 kilometers, MDRs, that is major district roads, 56,152 kilometers, village roads around 1,87,991 kilometers. So road safety we know. I don't want to go for a definition, but irony is that roads are improving whereas accidents are also increasing in an alarming rate. So there are a lot of causes for accidents, but I would like to bring to your this latest issue now, use of mobiles while driving. That is a major one. Second thing, heavy vehicles with high speed resulting in heating up of tires and use of neutral gears while driving down on downgrade gradients by truck drivers, especially what we have seen. And language barriers, some of course, road should speak on its own. So all the, language, there are around 7,000 languages are there in India. So all may not be 30 major languages. At least if they able to read and speak about the signages and signboards, it becomes very easy for them to understand what are the traffic signals. So road safety does not just occur, but it has to be practiced. World Health Organization key facts, friends, you just see this. United Nations General Assembly has set an ambitious target of halving the global number of deaths and injuries from road traffic crashes. Yeah, that statistics is there. I don't want to go through that. Yeah, one you can see approximately 13 lakh people die each year. 13 lakh, you can say one district total having around 13 to 15 lakh. Such people, if they die, what happens? You just think the scenario of a family, the people who lose their main person. So Karnataka State Initiative, we have established a road safety cell in the year 2014 itself under Transport Department. Second, nomination of the director of the road safety cell as a liaison officer. Third initiative, Karnataka State Road Safety Policy 2015 based on Decade Action Plan 2011 to 20. Then fourth, government order on protocol for identification of black spots. Then fifth, enactment of Karnataka State Road Safety Authority. So Karnataka Road Safety Cell, yeah, it has got objectives and how we should deal safety of road users. Then salient features of Karnataka State Road Safety Policy. There are, you can see vision safe road network for all road users with priority to achieve zero road accidents in the long run. So mission reduce accidents by 25% and fatalities by 30% by 2020. Of course, it has come in the 2015 itself, but 3 years total suffering due to COVID. You all know that. Analysis and collection of data is yet to come. So action done by these orders, strengthen road crash database system, safe planning and design roads, safe driving and other provision of corps of funds. So this is GO. Then Karnataka government order on black spots. Government order was issued. What is a black spot? We defined in the GO itself. Black spot is a stretch of road of about 500 meters in length in which either a
5 road accidents took place during the last 3 consecutive calendar years, involving fatalities or grievous injuries. Second one, 10 fatalities took place during the last 3 consecutive calendar years. So one more order on this black spot: objective collection, analysis, and compilation of black spots. So I take you to this details of black spots collected in Karnataka. So as on 30th of September 2022, we have recognized around 938 black spots covering 11 departments: PWD, NH, NHAI, KSHIP, KRDCL, NICE, BBMP, Smart Cities, CMC, and PRED and BRTS. So out of 938 black spots recognized, we have rectified 528, under progress 239, tender stage still 1, that is there. So remaining black spot 170. So there is a GO, Karnataka State Road Safety Authority has been formed. In the light of spiraling growth in road accidents, fatalities, and injuries in the state, and in order to control all the same by effective implementation of road safety measures in systematic manner, this Karnataka Road Safety Authority has been brought in. Stakeholders: Police Department, Transport Department, Public Works Department, Education, PRED, National Highway, and Health, and other departments. So this is a GO. I have taken a case study in my jurisdiction, that is the one road which has been built under KSHIP 1, phase 1. So that is taken in the same, it was constructed in the year 2006 to 2008. Now on that road, we have selected 62 kilometer stretch for Safe Corridor Demonstration Program project. So stretch of 62 kilometer state highway between Ergatti to Belgaum taken up by KSHIP on pilot basis with financial aid from World Bank in view of developing state-of-art highways. So SEDP implementation plan. Yeah. You can see road safety management, road safety, police enforcement, public information and communication. A road safety initiative adopted, improving engineering conditions, strengthening enforcement, enhancing road safety education, improving emergency medical response. Key objective, yeah, they are all there. This is history actually. This road, it is the oldest road what I have seen in North Karnataka in my jurisdiction. In the year, there was actually famine in 1878 and 79. Then this road was built. There is a monument pillar, I have taken that photograph. So road inventory, what 62 kilometer stretch under SEDP. As per records, upgradation of road work was taken up and completed under World Bank assistance under KSHIP 1. That package number also it is given 48. So KSHIP 1 length 2,414 kilometer, project cost 2,389 crores. World Bank share is also given. Similarly, second phase, KSHIP 2 is also taken. In that, we have taken this small stretch of 62 kilometers. So basically, KSHIP 1, we enhanced, like a road length, 3.75 to 5.5 meter wide road was done, even in some parts 7 meter wide. And this the package details of KSHIP 1. Then second, this is a safe corridor demonstration. This is a very important. With a 32 crores investment as estimate cost, commencement in the 2015 and completed in 2018. Total length considered around 62 kilometers. So funding, it is a KSHIP 2 fund only. Okay, in this KSHIP 2 scope, the Safe Corridor Demonstration Project, we have done major improvements to junction 7 numbers, signal junction 2 numbers, minor design to junction 2 numbers, passing zones 2 numbers, and parking areas 4 numbers, and W-beam crash barriers 20 locations, delineators 11, truck parking construction 3, widening of guard section at 2 locations, and construction of footpath with guardrail, bus bays and bus shelters, raised platform pedestrian crossings have been done. Purchase of police equipments, purchase of health equipments also done under this. So traffic census of that road actually, you can see that latest, it is in the month of February we have taken traffic census. So in the year 2012, the photograph was like that. Though it was developed under KSHIP, there were road markings, but they phenomenally we improved under this SEDP, Safe Corridor Demonstration Project. You can see 2019. See earlier photos top and 2019 photos down. You can see this. So road able to speak itself to the road users. So automatically they will use properly. Before improvement, after improvement, you can see this.
James are also World Bank. Yeah, yes, yes. This same photograph. Yeah, these are junction latest photos we have taken. I will come to findings. Yeah, all workshops, sensitizing all the stakeholder departments have taken place. Police, deployed alcohol breath analyzer, all almost under this SCDP. Yeah, I will come to this, 2 minutes I will take up. So this is a stretch we have taken from that road, main state highway SH20. Belgaum, there are 4 police stations. One police station, Belgaum, traffic, that is only 5 kilometer stretch, it has jurisdiction. Second police station has got 15 kilometer, third police station another 15, and the last police station has got 27 kilometer stretch. So this is a road crash data, police station wise we have collected recently. This is one police station, that is second police station. If you see this, here not Belgaum taken, this second police station, Marihal police station. So 2012 to 2021, you can see 2012 fatal crashes were 14, now it is a 6. So if you compare 5 years, I have compared it for 5 years, previous 5 years, percentage variations, 41% reduction in fatal crashes, 50% in non-fatal crashes, total crashes come down to 53.68%. Deaths have also come down heavily, injuries also have come heavily. This is really, for a 15 kilometer stretch, if you see this figures, week back we have taken this statistics. Second police station, you see 51% fatal crashes reduction compared to 5 years previous years record. Then non-fatal crashes 73%, and total crashes come down to 67%. Deaths also have come down heavily. Injuries also have come down heavily. So this is the third police station. There you can see injuries have come to 80% reduction. Fatal crashes 20% down. Non-fatal crashes 41% down. See, total crashes have come down 35%, and deaths also have come down 46%. So last, of course, this small stretch, Belgaum North Traffic Police Station detailed statistics. There we don't have, 2012 data, that's why I didn't compare. There also you can see a lot of reductions have taken place. So police department observation, what they said, it is overspeeding, drunken driving, not wearing helmets. These are findings actually, not wearing seat belts, use of mobile while driving, driving without valid license, reckless and dangerous driving, overloading, jumping up of road lights or road signals, not driving in a designated lane, other miscellaneous offences. Other issues also they may meet with an accident. Safe system approach, globally accepted safe system approach, supersede culture of holding road user alone responsible by shared responsibility of system providers and road users. Yeah. 1 minute, sir. So road users is responsible only for compliance of the traffic and driving rules now. So I don't want to go through these findings of national level issues. So day before yesterday also I did visit one road where our farmers are using this state highways. So tractors queue is with sugarcane. How to manage this menace actually? We can't give a separate lane also. So need of the hour, my suggestion, I take 1 minute. Important roads need to be identified to carry out re-engineering for road safety. Traffic rules enforcement by police, transport department needs to be implemented scrupulously. Social awareness programs have to be launched on large scale about road safety by using media, TV, theatres and involvement of local bodies, educational institutes. Monitoring is a continuous process of progress for tracking for compliance of the planned objectives. Road traffic monitoring by satellite, CCTV camera and levying heavy penalty for overspeeding has to be taken. You can take up NH ridges first on top priority basis. Restriction of two-wheelers on highways in vulnerable reaches and also encouraging use of public transport. Concluding remarks, British historian and philosopher of history Arnold Toynbee writes in a book, Study of History, as a human beings, we are endowed with the freedom of choice and we cannot shuffle off our responsibilities upon the shoulders of God or nature. We must shoulder it ourselves
It is up to us. It is up to us to respond creatively to the challenge of our time. Thank you, friends. Thank you for a very successful case study under K-SHIP program. So next one is from Himachal Pradesh, Sri Vijay Chaudhary. Success story. ये आगे पीछे कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है। नमस्कार इंदौर, नमस्कार चेयरमैन साहब, को चेयरमैन, माई को स्पीकर्स एंड द लवली डेलीगेट्स। क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट है तो मैं बहुत ज़्यादा वो ना बताते हुए सीधा हिमाचल प्रदेश में हम बात कर रहे हैं तो रोड्स आर ओनली वाइबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड total road network of Himachal Pradesh is 39,354 kilometers, and out of which 36,762 kilometers is with state PWD, and rest 2,592 kilometers are and with NH, and they are being maintained by NH being of the PWD, NHI, MORTH and VRO. बस थोड़ा सा मैं रोड एक्सीडेंट के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 2015 से पहले हिमाचल में कोई ऐसा डाटा अवेलेबल ही नहीं था कि सिर्फ पुलिस के डाटा से हम रिलाई करते थे। अगस्त 2015 में रेडम सिस्टम लागू होने के बाद अक्टूबर 22 तक के 20,503 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 8,227 लोगों की जान गई है। तो हम देखेंगे 2016, 17, 18 और 19 तक तो ऑलमोस्ट कोई एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड नंबर ऑफ पर्सन डाइड में फिगर्स में कोई चेंज नहीं है। 2020 में थोड़ा सा कम इसलिए है कि कोविड की वजह से, पर 21 एंड 22 में देयर इज अ स्लाइट रिडक्शन ऑफ अबाउट 5%। ये हम इस चार्ट में देखें तो ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग की वजह से यदि हम बात करें तो 14,435 एक्सीडेंट्स में से 5,671 लोगों की डेथ्स हुई है। और इसमें मोस्ट सीवियर जो है टर्निंग विदाउट केयर, लेफ्ट राइट और रिवर्सिंग में भी काफ़ी डेथ्स हुई है। रोड की क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो NH एंड स्टेट हाईवे लगभग 11,381 एक्सीडेंट्स में 4,000 के करीब के रोड डेथ्स अकाउंट करता है। वेराज विलेज रोड्स जो कि 80% के करीब हैं वो 4,962 एक्सीडेंट्स में से 2,749 डेथ्स को अकाउंट फॉर करता है। तो NH और NHI मेरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो हम क्या स्टेट हाईवेज, MDRs और विलेज रोड्स में इंटरवेंशंस कर रहे हैं उस पर मोस्टली फोकस्ड है। बाकी NH और NHIs अपने अपने इसमें ये काम कर ही रहे हैं। तो ये अगली स्लाइड ये है जी कि कॉज, जैसे ब्लाइंड कर्व, स्लिपरी रोड, नॉन प्रोविजन ऑफ पैरापेट्स वगैरह की वजह से कितने डेथ्स हुई हैं। पर मैक्सिमम इसमें ये एनालाइज करके ये आता है कि केयरलेसनेस ड्राइविंग की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। इसमें नेक्स्ट स्लाइड को हम देखें तो कैटेगरी वाइज मैंने व्हीकल्स और बसेस का दिखाया। तो 2 व्हीलर्स एंड कार्स, जीप्स एंड टैक्सीज जो है मोस्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सीडेंट्स को, वेयर एज बसेस, ट्रक्स और वो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में HP स्टेट ने रोड सेफ्टी पॉलिसी 26 दिसंबर 2016 को लॉन्च की है और इसके मेन फीचर्स हैं कि लोगों में अवेयरनेस रोड सेफ्टी के बारे में बताया जा सके। रोड सेफ्टी डाटाबेस की क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था तो इसके बेस पे फिर रेडम्स लेके आए ताकि हम इनको एक्सीडेंट्स को साइंटिफिकली एनालाइज कर सकें कि क्या इसके रीजंस रहे और क्या हम सेफ्टी इंटरवेंशंस उसमें डाल सकते हैं।
इसी में एक पार्ट था कि बीइंग स्टीप हिल होने की वजह से इसमें स्पीड लिमिट्स कुछ नोटिफाई की गई हैं NH, SH और MDRs के लिए, सिटी रोड्स के लिए कुछ लिमिट्स की गई हैं और विलेज रोड्स पे लिए तो फ्लैट 25 किलोमीटर पर आवर की लिमिट जो है नोटिफाई की है और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास तो ये 20 किलोमीटर पर आवर एज पर दिस नोटिफिकेशन ये फिक्स की गई है। इसको स्किप करते हैं। ये सारे पार्ट ऑफ दिस रोड सेफ्टी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि जुलाई 2015 में गवर्नमेंट ऑफ HP ने रोड एक्सीडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया सो दैट हम एक्सीडेंट्स को एनालाइज कर सकें और रेमेडियल एक्शंस को प्लान करा जा सके सो दैट रोड्स आर बिकम सेफर। IRAD वर्ल्ड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से एक फंडेड प्रोजेक्ट है और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। इसमें इसको 15 फरवरी 2021 को 6 पायलट स्टेट्स में 59 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था। हिमाचल में भी IRAD की जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं सबकी ट्रेनिंग्स दी जा चुकी हैं, यूज़र IDs एंड पासवर्ड्स क्रिएट हो चुके हैं और इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉन्च करने का प्लान है सो दैट एक अक्रॉस सारा डाटा एक जैसा है। हिमाचल ने HPRIDC एक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सब्सिडरी है जो कि स्टेट रोड प्रोजेक्ट्स और मेजर जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड ये एक रोड सेफ्टी कंसल्टेंट हमने एक हायर किया है TRL प्रोफेशनल एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज करके, जिसका जो कि हमें स्टेट हाईवेज और MDRs के लिए सेफ कॉरिडोर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए मास एक्शन प्लान और रूट एक्शन प्लान जो है वो PWD के लिए बताएंगे और ये अभी जस्ट इसमें भी ट्रेनिंग्स जो स्टेक होल्डर्स की हैं वो हो चुकी हैं और इन्होंने अभी डाटा एक्विजिशन का काम जो है कंसल्टेंट ने शुरू किया हुआ है। अब स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो PWD ने 2 तरह से काम किया है। एक तो रिएक्टिव अप्रोच में जो है कि जो जैसे स्टेट ने जो ब्लैक स्पॉट की डेफिनेशन अडॉप्ट की है वो MORTH की ही है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, जैसे जंक्शन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लाइक पैरापेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रैश बैरियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और एक इसमें हमने प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट की है जिसमें सारे जो हमारे फील्ड इंजीनियर्स हैं उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड अदर रोड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चा करके हम वनरेबल एंड जो बाकी एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनकी भी साथ साथ में हमने प्लानिंग क्या इंटरवेंशन होने हैं वो भी साथ साथ में प्लान करें। हिमाचल प्रदेश में हर रोड का प्री रोड सेफ्टी ऑडिट एंड फाइनल रोड सेफ्टी ऑडिट आफ्टर कंप्लीशन कंपलसरी अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में कर दिया है और जो भी प्रोजेक्ट्स 10 करोड़ की कॉस्ट से ज़्यादा के होंगे उसमें 0.25 टाइम्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो रोड सेफ्टी मेजर्स के लिए ही एक्सक्लूसिवली रखा गया है और जो 2 टियर ट्रेनिंग जो हमारी फील्ड इंजीनियर्स हैं उनको ये भी कंपलसरी किया गया और करीब मोर देन 100 इंजीनियर्स हैज़ बिन trained for carrying out the road safety audit. जैसे कि मैंने बताया प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के लिए हमने पोटेंशियल ब्लैक स्पॉट्स विद द हेल्प ऑफ पुलिस स्टेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और वनरेबल एक्सीडेंट स्पॉट्स की भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड एमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर दैट इज GVK EMRI. In order to prevent the fall of vehicles downhill, the crash barriers based upon the availability of funds and the priority are being installed in the state of Himachal Pradesh. And as per the direction of Supreme Court committee, the policy for draft policy for monitoring has also been formulated and finalized by the government in the year December 2020.
ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। ये देखेंगे हम ब्लैक स्पॉट्स टोटल जो हमारे थे 73 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से 67 इंप्रूव कर लिए गए हैं, 6 बचते हैं। वनरेबल स्पॉट्स भी जैसे बताया गया कि उसमें से भी हम 1382 आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से 864 इंप्रूव कर लिए गए हैं और 518 भी बचते हैं। पोटेंशियल स्पॉट्स में 6113 आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें 5068 इंप्रूव कर लिए गए हैं और केवल 1045 इसमें बचते हैं इंप्रूव करने के लिए। As a black spot improvement program, करीब 5.26 lakh running meters of crash barriers has been installed along the critical locations in various villages, MDR and state highways. But being hilly state, more crash barriers are needed. 6,200 numbers signboards indicating speed limits and providing cautionary information to the road users has also been installed. 286 number road junctions has also been improved under this scheme, and 24 number bridge approaches, narrow bridge approaches has also been improved. This is the figure in which 233 crores has been spent in the last 5 years, and the new initiative that roller crash barrier guardrail system has been installed on most 2 stretches of the NH 907 Nahan to Kumarhatti, and another NH 503 Mubarakpur to Daliara has been installed, and road speed limiting devices and leaker sensors has been provided to the police department to check the speed limit. 3 number trauma centers has been established in the 3 districts, that is Kullu, Bilaspur and Mandi, and 9 trauma centers are coming up, and they will be completed by the end of this financial year. And for the next financial year, 3 more trauma centers are coming up. As far as education is concerned, 1,838 number of schools affiliated with the HP Board of School Education has been brought. They will teach the students about the road safety and traffic rules from the class 6th to class 10th. And for that, the curriculum has been developed with the help of HP State Council for Education Research and Training, Solan. Nukkad Nataks are also being carried out to make the people aware about the road safety programs. Transport Department Road Safety Cell under the overall leadership of the Transport Director Transport has been established in the Department of the Transport. Automated testing center at Baddi is also coming up with the help of the Ministry of Road Transport at the cost of more than 16 crores, and this facility will be completed by the end of this financial year. Another command and control center at Shimla in the Directorate of Transport has also been set up with the an agreement with the CDAC has been signed in the year 2021 to track the vehicle movement. Another facility for driver training and testing is also coming up at Hamirpur, and here automated driver testing track as well as short-term and long-term induction training courses for driver of 2-wheelers, LMB and HMB are being introduced. So way forward, I must say education and awareness is the main key to the road safety assessment. And enforcement is being done using ITS tools, and heavy fines as per Motor Vehicle Act are also being enforced. Emergency medical care, as I have said, 3 more trauma centers are coming up, and hopefully they will be completed by the next financial year, and they will provide better medical care to the accident victims. By adopting safe system approach,
we can lead to the reduction of road accidents and injuries. The star rating of the existing roads can also be a good idea for safe roads. These are some glimpses of road improvement activities carried out. This is the picture showing the guardrail system installed on Nahan Kamarhatti and section NH 907. ये बीच वाले पिक्चर में आप देखिएगा एक ट्रक गार्ड रेल से टकराता है, ये वापिस सिस्टम में वापिस आ जाता है, मतलब रोड पे आ जाता है, ये डाउन हिल नहीं जाता है और इससे फैटलिटीज़ एंड एक्सीडेंट फैटलिटीज़ रिड्यूस हुई हैं। अभी ये जस्ट मार्च 2022 में ही इंस्टॉल हुए थे। These are the another junction improvement measures taken by the state. These are the pictures showing the city roads of Hamirpur, where 5-meter crash barriers and the speed breaker has been installed along with the footpaths for the pedestrians. These are the pictures showing the road marking and crash barriers. This is the picture showing the double metal crash barrier as a line. This is the picture showing the Nukkad Natak activity carried out in the month of February and March 2022 in Himachal Pradesh. Okay. Thank you. Thank you. Next is by the presentation from MPRDC by Sri Sunil Verma. Good afternoon, Chairman sir. Good afternoon. Good afternoon, friends. Good afternoon, इंदौर. सुनाई नहीं आया. लगता है कि हम इस क्लीनेस्ट सिटी में आकर के इतनी लवली हॉस्पिटलिटी को देख करके, अच्छा अच्छा खाना देख करके हमारे ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स नहीं कहेंगे. सो गिव देम द बिग हैंड फॉर द गुड वंडरफुल host of this program and the lovely audience. In fact, पिछले कुछ 2 दिनों में हमने बहुत सारे वक्ताओं को सुना है रोड सेफ्टी के संबंध में. काफ़ी अच्छी बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला. ये भी पता चला सब लोग कितने कंसर्न हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रहे हैं. और मुझे ये टास्क मिला है कि इसमें एमपीआरडीसी क्या कर रहा है. ऑफ कोर्स एमपीआरडीसी एमपी में काम कर रहा है और रोड सेफ्टी के बारे में मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमने ये रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट टेकअप किया था वर्ष 2014 में और इसके अंदर जो काम किए हैं हमने लगभग 5000 जीवन को बचाने में सफलता पाई है. आप सभी को पता है कि एक जीवन की कीमत जो MORTH के डाटा के हिसाब से है लगभग 92 लाख रुपए है. IIT दिल्ली का स्टडी है एंड MORTH की वेबसाइट पे है. तो 92 लाख रुपए एक लाइफ की कीमत है. तो 5000 इंटू 92 करो तो 4500 करोड़ की सेविंग जो है MPRDC ने अपने प्रयासों से की है. तो इस साल का टारगेट थोड़ा बड़ा है. हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 20% फैटेलिटीज़ को कम करें मध्य प्रदेश में. और आपको पता है 18,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएं, मौतें पिछले 12 महीने में हुई हैं. इस सभी के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है और रोड एक्सीडेंट से जुड़े हुए जो हमारे 12 स्टेक होल्डर्स हैं जो पिछले प्रेजेंटेशन में बताया गया, इन सभी की हमें आवश्यकता है, सभी के सहयोग की आवश्यकता है. तो
मैं अभी हमारी एमपीआरडीसी ने जो इसमें एक इनोवेटिव अप्रोच मैंने नाम दिया है कि फैसिलिटी रिड्यूस करने के लिए जो हमें कुछ करना होगा, तो मैं यहाँ कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, कोई डाटा नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे मालूम है सारे इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। एक महीने में अगर 1 घंटे का समय निकाल दो तो हमारा ये लक्ष्य हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हो? पीछे से आवाज नहीं आ रही लेडीज, क्या आप लोग ये कर सकते हो? दैट्स गुड। तो इसमें हमने अभी जो काम किए हैं, जियो मैपिंग हमने मध्य प्रदेश की सारी सड़कों की है, और उसमें जो ज़रूरी चीज़ होती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें पुलिस थाने, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऐसे वल्नरेबल पॉइंट इनको मैप किया है, सो दैट ये जो है हमारा एक असेट बन जाएगा कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हमें इस एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम को फैलाना है। दूसरा काम हमने किया है जीपीएस और एमडीटी डिवाइस, जो हमारे टोल के पास में जो एम्बुलेंसेस है जो बिना ड्यूटी के लगभग प्रतिदिन खड़ी रहती हैं, उनको हमने एक एमडीटी डिवाइस से फिट किया है, जिससे कि वो एम्बुलेंस पुलिस के डायल 100 में, एमपीआरडीसी के कॉल सेंटर में और पॉसिबली 108 के कॉल सेंटर में भी विजिबल होगी। तो इससे जब भी दुर्घटना के समय में उसकी आवश्यकता होगी, उसके डिटेल्स अवेलेबल हैं, वो उसको आप असाइन कर सकते हो। तीसरा काम हमने क्या किया है, एक कॉल सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया है जो कि 1099 के नाम से है। रोड एक्सीडेंट विक्टिम उस पर कॉल करेगा तो उसको एम्बुलेंस तुरंत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी में आ जाता है। बट इसमें एक कमी थी। कितने लोगों को पता है कि 1099 टोल फ्री नंबर है एक्सीडेंट हेल्पलाइन का? एनीबॉडी? वेरी फ्यू, लगभग किसी को नहीं पता है। वेरी ट्रू। कारण क्या है कि इसकी पब्लिसिटी नहीं होती है। और अभी मैं नेशनल हाईवे की बात देख रहा हूं तो वहां पर एक 1033 फोन नंबर है। फिर मैं अगर विलेजेस पे देखता हूं तो वहां एक 108 नंबर है जो हर एम्बुलेंस पे चिपका रहता है। शहरों में देखता हूं वो डायल 100 की गाड़ियां घूमती रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं जो दुर्घटना के समय में मदद तो करने के लिए हैं, पर हम किसको पुकारें वो नहीं पता, और उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर मैं पुलिस को फोन करता हूं तो पुलिस की वैन पहुंच जाएगी, एम्बुलेंस पहुंचेगी क्या? पॉसिबल नहीं है। उनको दोबारा वहां जाकर के देखना होगा, भाई अब 2 एम्बुलेंस भेज दो या 1 एम्बुलेंस भेज दो। और ये जो पूरा समय है जो हमारा लॉस होता है, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि घायल व्यक्ति की चिकित्सा अगर गोल्डन आवर्स में कर दी जाए तो 90% चांस उसके बच जाते हैं, 90% लोग उसमें बच सकते हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने लिया था नर्मदा के जो ट्रॉमा सेंटर के थे, अगर गोल्डन आवर में आप ले आओ तो उसको बचाने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड कि आप ट्रॉमा सेंटर रोड के किनारे किनारे खोल दो। तो मैंने ये सड़कों पे मैप किया है। हॉस्पिटल तो हमारे हर 25 किलोमीटर के अंदर में एक हॉस्पिटल है, अलग से हमें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम उनको थोड़ा सा इक्विप करें, और इसके अलावा मैं आगे बताता हूं, अभी सब लोग जो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के डाटा के संबंध में, आपने देखा है कि हमारी 80%, किसी ने 82 बताया, किसी ने 75 बताया, इतनी सारी एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो सिर्फ ओवर स्पीडिंग या ड्राइवर की गलती से हो रहे हैं। इज इट ट्रू? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। कुछ तो कमी है, क्योंकि ये डाटा कौन कलेक्ट कर रहा है? इंजीनियर कलेक्ट करते हैं क्या? बहुत कम है। डाटा कलेक्ट होता है पुलिस की एफआईआर में, वो भी तब जब मौत हो जाती है तो वो रीजन लिखते हैं। अब किसको जिम्मेदार बताएं? क्या वो इंजीनियर को जिम्मेदार बता सकते हैं? बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि वो तो सीधे सीधे जो खत्म हो गया उसके नाम से भैया ठीक है ओवर स्पीड किया था, या उसने रैश ड्राइविंग किया, या नेग्लिजेंट किया, एंड वी फिनिश दैट केस, सो दैट दैट चैप्टर इज सील्ड देयर। एंड देन कुछ दिनों में ज्यादा मौतें हो गई तो वो एक ब्लैक स्पॉट बन गया कि ना भाई इंजीनियर लोग आओ अब देखो अपना। पर हमारा ये काम है कि हम उन सभी एक्सपर्ट के एक्सीडेंट डाटा हम कलेक्ट करें। कौन करेगा? चिंता करने की जरूरत नहीं, आपसे थोड़ा सा इनपुट लेना है, पर उसके लिए एजेंसी है। आपने अभी देखा है एक आईरेड बनाया हुआ है, वो काफ़ी कुछ डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन हम सन 2014 से एक फॉर्मेट बना करके एमपीआरडीसी अपनी सड़कों का डाटा कलेक्ट कर रही है, और मैं आगे वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि हमारे डाटा जो है किस तरह से हेल्पफुल हुए हैं हमें अपनी सड़कों के सुधार के लिए। तो एक्सीडेंट डाटा की में क्या रिक्वायरमेंट है,
ये काफ़ी स्टडी हुई, IIT में वर्कशॉप हुई, और हमने भी एक वर्कशॉप की MPRDC में काफ़ी हाई लेवल की, जिसमें हमें पता चला कि 70-72 पॉइंट हैं ऐसे जो हमें उस एक्सीडेंट के स्पॉट के बारे में इकट्ठे करने हैं। बड़ा वॉल्यूमिनस काम है, पर वो हम कर रहे हैं, जिससे कि हमको एक्सीडेंट एनालिसिस की, अभी हमारे MSCT के प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि वो एनालिसिस करते हैं। अगर डाटा अच्छा नहीं होगा तो एनालिसिस करने से रिजल्ट अच्छा आएगा क्या? मुश्किल है। तो अब हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे डाटा की क्वालिटी अच्छी रहे, और या उनको जितने डाटा लगते हैं, आप किसी भी रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जाइए तो जो हमारे एनालिसिस्ट हैं उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि जो डाटा है हमारा बड़ा कम है, या वो देखने से ही लगता है कि डाटा में कुछ गड़बड़ी तो है। तो अभी हमें जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे सही ढंग से डाटा कलेक्ट हो, और जितने वाइड स्पेक्ट्रम है डाटा का, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन हो सकता है वो हमने डिज़ाइन किया है, एंड वी आर कलेक्टिंग इट। आई विल शो यू। फिर इसके बाद में हमको सबसे ज़रूरी काम जो था उस डाटा करने के बाद में उसका एक एनालिसिस करके, एक वर्कशॉप करके उसका एक सोल्यूशन पाता करो कि भाई अब ये डाटा का करूँगा क्या। आप सबको बिजी रखना नहीं है, उस डाटा के एनालिसिस करेगी रिसर्च टीम, एंड देन विल फाइंड आउट कि यार ये टिपिकल प्रॉब्लम है, तो उसका एक सॉल्यूशन जनरेट करे, एक टिपिकल सॉल्यूशन जनरेट करे, उसका एक एस्टिमेट जनरेट करे और आपको दे दे, जिसके लिए फंड देने के लिए हमारे WHO बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी है, और हर स्टेट लेवल पे एक रोड सेफ्टी कमेटी बैठी है। फंड की कोई कमी नहीं है, फंड मिलेगा, एस्टिमेट आपके हाथ में, फंड मिलेगा तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों पीछे? अगर एस्टिमेट सैंक्शन है, आप सारे रोड इंजीनियर्स हैं, तो हमें काम करना है या नहीं? बिल्कुल करना है, और यही हमारा काम है, और बड़ा आसान है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे हम क्यों है, अभी जैसे मैंने बताया 18,000 मौतें होती हैं एक साल में, तो कितनी मौतें बचाना चाहेंगे आप लोग? वेरी ट्रू, क्योंकि डॉक्टर सिकदर ने, प्रोफेसर सिकदर ने बताया था कि वो 70 मौतें बचाने की बात कह रहा था। यार 70 तो अलाउड है मेरा, तो फिर जब देखा कि वो भी हमारे नियर एंड डियर होंगे, तो हमें तो सबको बचाना है। तो लेट अस हैव इन द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट 20% का टारगेट। तो इसके लिए हमारा वर्कशॉप के बाद में दूसरा जो जरूरी काम होता है, आइडेंटिफाई द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेनिंग दिस दैट रोड। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भैया ये जो एक्सीडेंट डाटा मैंने कलेक्ट तो कर लिया वॉल्यूमिनस, किसको दूं? जिसकी रोड है उसको, जो उसका इंजीनियर इंचार्ज है, जो मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको पहुंचाऊं। हमें पता ही नहीं होता, आज पूरे प्रदेश में देखो या पूरे देश में देखो, सड़कों का जाल तो है। अभी कर्नाटका में बता रहे थे कि मेरी 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं, बट डू वी नो अगर किसी रोड पे मैं क्लिक करता हूं तो उसका इंजीनियर इंचार्ज कौन है? पता नहीं चलता, हमारे यहाँ पे भी नहीं पता चलता। तो सबसे बड़ा गैप यहाँ आ जाता है। जो डाटा एनालिस्ट है, डाटा इंजीनियर है, वो तो डाटा तो इकट्ठा कर रहे हैं, अब किसको देना है? तो ये भी हमने मैपिंग किया है कि वो रोड किसकी है, उसका इंजीनियर इंचार्ज कौन है, उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर कौन है। अगर ये मालूम होगा तो वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू देम ऑन मंथली बेसिस कि लोग सर ये आपकी सड़क है और आपकी सड़क पे इतने सारे एक्सीडेंट इस साल हुए हैं। तो आप जो है 1 महीने में कभी एक आध बार वहां जाते हैं या आपकी टीम जाती है, तो जरा देख लेना सर इन पे क्या क्या पॉइंट है। वो थोड़ा सा आपका फीडबैक चाहिए होगा। 1 घंटा दे पाएंगे? यस प्लीज, जरूर दे पाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है ये। देन अगला मैंने जो काम किया है, इंटीग्रेट वेरियस स्टेक होल्डर लाइक डायल 100, 108, 112, 1033, IRAD, अभी दुनिया भर की एजेंसी हो गई, 1099 भी है इसमें। अगर ये सारे लोग जुड़ जाएं तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, यूजर का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। यार डायल 100 पे भी फोन करो तो एक्सीडेंट के संबंध में जो जानकारी है वो 1099 को अपने आप आ जाएगी, IRAD को अपने आप आ जाएगी। सो दैट हमारे पास में न सिर्फ हम एक्सीडेंट विक्टिम तक पुलिस, एम्बुलेंस और इंजीनियरिंग डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि उस विक्टिम का जान भी बचा सकते हैं। हॉस्पिटल भी कनेक्टेड है इससे। तो ये एक इंटीग्रेशन का काम हुआ है। फिर जो बात हुई पोस्ट ट्रेना के लिए या एक्सीडेंट से बचने के लिए, ट्रेनिंग टू द रोड यूजर्स, स्टूडेंट्स, पीपल स्टेइंग नियर द हाईवेज। तो बेसिकली इसमें जो एक बात आई थी कि हम इस ट्रेनिंग को क्यों देना है, सबसे पहला एम तो है हमारा टू क्रिएट गुड सेमेरिटन्स। किसी ने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया था, जीवन मित्र। हम जीवन मित्र क्रिएट करेंगे। इस साल का हमारा टारगेट है 15,000 जीवन मित्र हम विभिन्न जगहों पे क्रिएट करेंगे। और आपको पता है कि एक व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल किसी विक्टिम को पहुंचाता है तो एमआरटीएच में भी प्रपोजल है, सर को पता है 5,000 रुपए से ज्यादा देने का एक सेमेरिटन को प्रावधान है। बहुत जल्दी अप्रूव होगा क्योंकि नाउ इट इज इन द मोटर व्हीकल एक्ट। ये एक्ट में है कि हमारे वो सेमेरिटन को जो तंग करते थे पहले, अब उसको इनाम मिलेगा। तो हमारे ये जो 15,000 मित्र हैं, अगर 1 महीने में 2 लोगों को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया
10,000 रुपये उसका हो गया, उसको तो मैंने रोजगार दे दिया। तो बड़ा आसान काम है ये, हम सब कर सकते हैं। तो वी हैव टू क्रिएट गुड सैमरिटन्स, प्लस जो रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना से बचाव के लिए जो रोड साइड लोग हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो गाड़ियां वाले हैं, उनकी भी बचाव हो जाएगी सर। इसके अलावा एक्सीडेंट डाटा और उसकी एनालिसिस करके डिस्ट्रीब्यूट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना रोड यूजर्स में थ्रू फिल्म्स, बैनर्स एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड्स गाँव के लिए। एंड देन एक सबसे अच्छा था जिसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारी जो टीम है यहाँ पर, हमारे सेक्रेटरी साहब मिस्टर R.K. मेहरा, मिस्टर नरेंद्र कुमार हमारे ENC एंड मिस्टर G.P. मेहरा, इन्होंने अपने प्रयासों से एक मध्य प्रदेश में पहली बार एक स्कीम को कंसेप्टलाइज किया था। उसका नाम था एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, और काफ़ी मेहनत करने के बाद में उसके टेंडर डॉक्यूमेंट भी बने और पायलट बेसिस पे उसको 5 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करने की पूरी तैयारी थी। कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द रोड एक्सीडेंट विक्टिम, दैट वाज द फुल नेम। तो बेसिकली था ये कि अभी ये अगर हम लगाते हैं तो तब ये स्कीम कंप्लीट होती है कि वो जो बंदा एम्बुलेंस वाला हॉस्पिटल में ले जा रहा है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जा रहा है। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए उसको आसानी से मिल पाता था क्या? कोई जानता ही नहीं है। गुड सैमरिटन तो वहाँ छोड़ करके आ गया, और उसके बाद में जो है डॉक्टर कहता है यार इसका क्या है, कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक वो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे। तो इसको बचने के लिए हमने एक स्कीम डिज़ाइन की थी, सर ने अपने प्रयासों से उसको अप्रूवल भी लिया था। एंड अभी शासन के निर्देश हैं कि ये स्कीम जो है हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू चलेगी, और आईरेट के भी हमारे जो डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर MPRDC के, उन्होंने भी कहा हम इसको आईरेट के थ्रू भी ले रहे हैं। तो ये मतलब ये है कि फिर इसका कंप्लीट हो जाता है कि हम रोड एक्सीडेंट विक्टिम की जान सही में बचाने में कामयाब होंगे। अभी जो मेरा टॉपिक था कि भाई MPRDC ने हमारा इसमें रोड एक्सीडेंट के बारे में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट थे, मेरे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाइड थे 137, 43 रोड्स पे, वो सारे के सारे टेम्परेरी रेक्टिफिकेशन तो हमने इमीडिएटली कर दिया था। परमानेंट रेक्टिफिकेशन के लिए 51 नंबर्स की में से 37 का हमने काम कर दिया है 10 हाईवेज पे, और हमने हमारे एक्सीडेंट डाटा से टॉप 3 हाईवे को आइडेंटिफाई किया जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा दुर्घटना वाले क्षेत्र थे। रीवा हनुमना रोड, लेबर जावड़ा और जावड़ा नया गांव रोड एंड भिंड इटावा रोड, इनको तीनों को मैं हमारे पोर्टल पे, वेबसाइट पे अवेलेबल है ये डाटा, और इसके थ्रू हमने इनको सेलेक्ट करके इन पे काम किया फोकस्ड मैनर में, और बड़ा सारे ब्लैक स्पॉट को सील करने के लिए, एक्सीडेंट को कम करने के लिए इस पर प्रयास किया है सर। और इसके कारण हमारे वहाँ इन तीनों रोड एक्सीडेंट की काफ़ी कमियाँ हुई हैं। और इसके अलावा हमने बाकी सड़कों पे एक्सीडेंट रिड्यूस करने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए DPR बनाई हैं, और क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द ऑल स्पॉट एक्सीडेंट स्पॉट का कर रहे हैं, जिससे हमारे एक्सीडेंट रिड्यूस करने के लिए होंगे। और इससे मेरा जो है हमारे रोड जो है पॉट होल फ्री बना करके जंक्शंस वगैरह को इम्प्रूवमेंट करने का काम MPRDC ने किया है। और ये सब हमने जो किया है, इसके अलावा एक और काम किया है, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम टू सेव 5,000+ लाइव्स। तो मैं सर अभी थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा, मैं एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा, जस्ट 2 मिनट सर। ये एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम जो है बड़ा जरूरी है, इनोवेटिव टेक्निक थी, ये MP वाज द पायोनियर स्टेट। तो उसमें हमने एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम में क्या काम किया है सर, सन 2014 से हम इस पे काम कर रहे हैं, बट वी आर नॉट पॉपुलर, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग अबाउट द एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम इन एनी फोरम सर। सो आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स, यस सर, आई विल गो क्विकली सो दैट पीपल हैव गॉट द आइडिया, अदरवाइज नॉट मेनी पीपल आर जस्ट सेड कि अभी 109 पता नहीं, बट क्या कर रहा है, आई विल जस्ट शो यू फ्यू स्लाइड्स ओनली सर। I'll not go the theory and all these things, I'll give some the sketches only, like this sir. Whenever an accident takes place, a caller who can be anybody, जो हमारा एक जीवन मित्र बोले या गुड सैमरिटन बोले या जो भी पासर भाई है, वो फ़ोन करेगा, कहाँ फ़ोन करेगा, 1099, 100, 108 या 103, किसी में भी कॉल करेगा। अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो है हमारी एम्बुलेंस है, हमारी टोल्स पे हैं सर। 1033 पे जैसे मुझे बताया गया कि 55 से ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे NHAI के पास में एम्बुलेंसेस है सर। और इसके अलावा PWD, NH और MPRDC के करीब 102 टोल प्लाजा हैं जिस पे एम्बुलेंसेस हैं। इसके अलावा 800 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस हमारी 108 की हैं, और कुछ जीवन मातृत्व योजना की कुछ 200 एम्बुलेंसेस। इस तरह से हमारे पास में जो सारा डाटा है, ये सारा मैप पे है, जिसमें कि हमें जहाँ भी हमने लाइव लोकेशन इसकी रखी हुई है एम्बुलेंसेस पे, वो हमें विजिबल होता है, और एक नियरेस्ट एम्बुलेंस को हम वहाँ पे पुश कर देते हैं ड्यूटी के लिए। एंड देयर आफ्टर हम वो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि वो मैप्ड है, वहाँ पर हमने उस एम्बुलेंस को डायरेक्ट कर देते हैं कि इसको यहाँ पर ले जाओ, सो दैट विद इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स का टाइम है कि उसको हॉस्पिटल बंदे को पहुँच जाना चाहिए, सो दैट डॉक्टर कैन
that treatment can be given within that golden hour. That is the task, sir. So how do we do that thing, sir? We have got the command and control center, 18-seater 24/7 call center, sir, which has got the basically lane connectivity through our all the toll plazas. And we have got the video connectivity also through a video wall and through all the toll plaza with PTZ camera, so that we get the live videos, and more so at many places in the road vulnerable points, some the video have been installed so that these things are available, and then the datas are available, which can be monitored even after the other aspect like security and somebody hit and run cases may, sir. So we are making these things available to the police department also whenever this thing is. And through these toll plaza, through those video camera, we have watched the कोरोना में बड़ा effective था. जब ये हमारा ट्रैफिक कोरोना में सारा बंद था, तो कॉल सेंटर पे हमारे आरटीओ साहब और हम लोग की सारी टीम बैठी रहती थी कि देखने के लिए कि वहाँ से लेबर मूव कर रहा है एंड ऑल दिस थिंग, तो उस समय बड़े हेल्पफुल थे सर ये. तो दिस वाज द थिंग सर टू मॉनिटर दिस थिंग. टोल प्लाजा पे मेरे ये सारे लगे हुए हैं सर. टोल प्लाजा पे जो एम्बुलेंस होती है वो एक MDT डिवाइस इसमें आप देख रहे हैं, तो ये एक MDT डिवाइस आई विल शो यू. दीज आर द एक्सीडेंट डाटा सर, जो मेरे पास में पिछले 5 सालों में जो कलेक्ट हुए हैं, लगभग 7वां साल है अभी. हर साल कितने मुझे कॉल आए, कितने एक्सीडेंट को मैंने सर्व किया और कितने सेकंड में रिस्पांस किया. टोल प्लाजा वाले को होता है अगर 2 सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो पेनल्टी लगती है, तो ही हैज़ टू पिक अप द फोन विद इन 2 rings एंड देन एम्बुलेंस इज टू बी पुश्ड अप. देन ये तो हमारा पिछले 5 सालों का काम था. अभी हमने इसमें एक एनहांसिंग कैपेबिलिटी का एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से हमने एक और इसको प्रोजेक्ट लिया है. वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो इसकी कैपेबिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरे मध्य प्रदेश में इसको लगा रहे हैं सर, जिसमें हम इन सब चीज़ों से इंटीग्रेट कर रहे हैं. टोल प्लाजा में हम जो है सर ये एक MDT डिवाइस फिट कर रहे हैं. ये पहले तो हमारे डायल 100, 108, 112 एंड 1033 को इंटीग्रेट करना काम है, सो दैट जो एक्सीडेंट डाटा है वो कलेक्ट हो और शेयरिंग ऑफ द एक्सीडेंट डाटा टू द कंसर्न डिपार्टमेंट हो जाए सर. ये हमारा हाई लेवल रिजोल्यूशन डायग्राम है, हाउ इट वर्क सर. वी कैन सी इट लेटर ऑन, द प्रेजेंटेशन विल बी अवेलेबल हियर. इट्स ऑल schematic diagram, you can very well go through that thing. And this is the basically this is addition of the road, digitalization of our roads, not from the Google. Our our people have gone physically with our GPS and then track that route along with the registered their point of interest, hospital, whatever we are requiring, all the vulnerable point, bridges and all, along with the names and designations of the concerned agency. So that is very important, sir. And then this is the mobile data terminal. So this is our 8-inch screen, just like what we see in the Ola and Uber cab. So once you fit that screen into your ambulance, so this ambulance is visible to the police people also, because we have given a link to that and to our call center also, so that the people can see from there their ambulance is sitting there, and when the accident call comes, you know that location. Now the dial 100 people have got the device from where they can accurately point out your location, so that once you know your location and they see the accident spot physically onto the map, and they see the ambulance nearby available, and they see what is the next hospital available. So with that, they just push that thing, and the 30 minutes time will be further reduced, sir. Then route guidance to the through MDT device, we are giving instructions to the paramedical staff sitting in the ambulance, so that they can be guided and they can be given some treatment. They are connected 108 tele doctor also, so that they can also guide in case of critical need. They will also be guided, look what you have to do is there, what injection and whatever is to be given, oxygen देना है and all, क्योंकि उस इंजरी को कैसे हैंडल करना है अभी वीडियो में दिखाया हमारे साथी ने. तो इसके साथ में हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, तो हॉस्पिटल वाला बंदा भी रेडी है कि you know this casualty is coming and their operation theater and whatever is there, so we can save some time in that also, administration of that thing. And since the accident insurance scheme was also planned, so he was not too worried about the payment thing, sir. So then ये सारे जो हमारे सर एक्सीडेंट MDT डिवाइस में जब ये ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है, तब तक वो हमारे स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि इट इज एंगेज्ड, and thereafter once he is free, that the duty is completed, the ambulance is free for the assignment of the next duty. So that will be the thing, sir. Then accident collection form. As I was telling you, we have designed this accident form almost 3-4 years back, which was having more or less similar to what IRAD has designed now, and they are having some of these data now.
तो ये सारा काम हमारे एक्सीडेंट डाटा में सर, अलॉन्ग विद देयर वीडियो, द लोकेशन ऑफ द दिस थिंग, सो these things are available, name of the driver, persons and all, along with their video and the photographs also, sir. And for the publicity, we had a short film, sir. If your time permits, I'll just take few seconds to show you the film or the road safety, whatever we are doing, sir. So this is the सड़कें पहुंचाती है आपके अपनों तक, आपकी खुशियों तक, लेकिन कभी कभी ये सफर अनहोनी में बदल जाता है। अनहोनी को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जिंदगियों को बचाया जा सकता है। नमस्कार, एमपीआरडीसी एक्सचेंज फोन सिस्टम। इधर पे फंदा के पास में एक एक्सीडेंट हो गया है। जी सर, निश्चित ही मैं आपकी सहायता कर रही हूँ। 2015 में हम लोगों ने सुरक्षित परिवहन के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम था एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम। उस दौरान हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोगों को सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचा सकें एवं उसका त्वरित इलाज शुरू करा सकें। प्रदेश में 100 से भी ज्यादा ARS एम्बुलेंसेस टोल बूथों पर तैनात हैं, जो अपना काम पूरी तत्परता एवं सावधानी से कर रही हैं। किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना होने पर आपातकाल की सेवाएं लेने के लिए डायल 100 अथवा 1099 पर कॉल करें, जिससे सही समय पे एम्बुलेंस अथवा पुलिस वाहन भेजा जा सके। 108 की निकटतम एम्बुलेंस का भी उपयोग कर घायलों को गोल्डन आवर्स में चिकित्सा सहायता प्रदान कर जीवन बचाया जा रहा है। मानव जीवन अमूल्य है, मानव जीवन को बचाना हम सभी का उद्देश्य है। MPRDC का एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम। थैंक यू सर। So to give the reach to the rural population, sir, we have designed this information board and placing to all the almost about 1500 boards in the various junctions and the villages we are placing, so that people know about the thing, what is to be done apart from the training. And of course we are organizing training to have the mitras. Okay, already you have Sir, double the time over just 1 minute more, sir. This is the accident website. This is available on the website, sir. So these things we can have, sir. Accident. You give this, we'll make it available on our website. Right, sir. Okay. Thank you so much, sir. Thank you for the patient hearing. I think this is a very informative presentation because there are a lot of local engineers, so I think this is good information for them, and we'll make all these presentations available on our website of IRC. So the next one is now from the other stakeholders. So first is from Police Department, Sri Dikshit, DCP. Sri sir. टाइम चालू हो गया भाई, जल्दी करो। इंडियन रोड कांग्रेस की 2 दिवसीय वर्कशॉप के अंतिम सत्र में लगभग अंतिम वक्ता मध्य प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से मैं आप सभी को नमस्कार प्रेषित करता हूं। संबोधन ही संबोधन में हम मन की बातें भूल गए, अमरवेल सी बाहों में भंवरे बनकर झूल गए। माननीय मंत्री जी के कल इनॉग्रेशन सेशन के बाद से आज तक अभी तक के जो वक्ताओं का निचोड़ ये निकला, जो समस्याएं सामने आई, क्या डाटा रियल है, रियल टाइम में मिल रहा है, सही है कि नहीं है, रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, गुमटी लगी है, नेशनल हाईवे पे रोड बन रहा है, उसके बाद में बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। आगे आने वाली चीजों में और आप जिक्र करता जाऊंगा, आप इशारा समझ गए होंगे। योजनाएं बनती हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 साल पहले हैदराबाद घूमने गए, वहां से लौटकर आए और सुबह जो उनकी तत्कालीन बैठक होती है वो इमरजेंसी में बैठक बुलाई गई और 11 बजे निर्देश हुए कि भोपाल शहर को सुंदरतम बनाना हैदराबाद जैसा, तो अपना प्रेजेंटेशन दें। सभी विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। ट्रैफिक ने एक अपने ऑब्जर्वेशन से, ओनली ऑब्जर्वेशन, कोई इसमें तकनीकी योगदान नहीं था, सिर्फ हमने अपनी ड्रोन फोटोग्राफी के माध्यम से एक योजना तैयार की। कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगा, चूंकि सभी लोग भोपाल के ऑफिसर्स हैं तो
लोग उसका इशारा समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने अपनी एक योजना बनाई, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालीन, तीनों इस प्रकार की इसमें प्रयास थे, छोटे छोटे प्लान थे। पॉलिटेक्निक चौराहे आप देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी डेली जाते हैं, आप सभी लोग वहां से गुजरते हैं, छोटा सा डिवाइडर बनना है पॉलिटेक्निक चौराहे का, रविंद्र भवन के सामने से कैन पैदान तराय तक का। इस तरीके के छोटे छोटे इशारे मैं आपको करता जा रहा हूं, आप देखते जाएंगे। और इसमें चीज़ों भी बहुत स्पेसिफिक हमने की थी, बताई भी चीज़ें हैं कि किस तरीके की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और छोटी छोटी अपनी दैनिक जो ग्रे स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट भी इसमें शामिल किए गए थे सर, और ब्लैक स्पॉट भी शामिल किए गए थे, जिनमें छोटे छोटे से उपचार के बाद में इन समस्याओं का समाधान हम ट्रैफिक मूवमेंट प्लस रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए हम कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन बहुत हाई लेवल पर प्रदेश स्तर पर प्रेजेंट हुआ किसी और के द्वारा। समस्याएं जो थी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी थी सर। फीडिंग रोड दिया सर, लिंक रोड नंबर 2 से 3 पे जाने के लिए एकमात्र रोड है हमारे पास में माता मंदिर से जाने का। मैंने फीडिंग रोड की खोज की पंचशील नगर से, जो आज इसमें आगे दिखाऊंगा आपको। पंचशील नगर से एक छोटा सा रोड जाता है सर, आप देखेंगे 15 फीट चौड़ाई है, अतिक्रमण है सर। जिम्मेदार एजेंसी कोई और हो सकती है, पर इस रोड को यदि चालू कर दिया जाए तो हम 2 नंबर लिंक रोड से सीधे 3 नंबर लिंक रोड तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे सुझाव के साथ में मैंने एक लघुकालीन उपाय और मध्यकालीन उपाय प्रस्तुत किए, साथ में दीर्घकालीन उपाय भी प्रस्तुत हुए। जैसे आप देख रहे होंगे इस तरीके के दीर्घकालीन उपाय भी हमने इसमें साथ में अपने प्रेजेंटेशन में रखे गए। परंतु आश्चर्यजनक चीज ये है कि सर बड़े उपाय, मैं जहां तक सारे साथी लोग बैठे हुए हैं और सीनियर अफसर से बैठे हैं, इसमें से 50-60% और पाइपलाइन में या पूरे हो चुके हैं, परंतु छोटे छोटे चीजें हम नहीं कर पाए सर। पेड़ की छटाई जो मैं आपको दिखा रहा था पिछली स्लाइड्स में निकल गई है, वो पेड़ आज भी वहीं के वहीं विद्यमान है, जिसके कारण हमारे एक्सीडेंट्स के कारण बन रहे हैं। ये सारे प्रयास हमारी तरफ से हुए। कुछ इसमें हमने इनोवेटिव भी दिए थे, जो भोपाल में नो एंट्री के इश्यूज होते हैं, पार्किंग यार्ड का निर्माण, इसके लिए अभी तक जमीन आवंटन की रेवेन्यू के द्वारा चिन्हांकन भी शायद संभव नहीं हो पाया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सर, हम सब इसी के पार्ट हैं, परंतु एक बात का जिक्र कर रहा हूं कि इश्यूज क्या है। इस तरीके से ये धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हमारे कुछ एनक्रोचमेंट थे, उनका बात किया था, कुछ उसमें मैंने अपने प्रेजेंटेशन में सुझाव भी दिए थे। पश्चात जो दुर्घटनाएं हुई, डेटा जो आपके पास है वही डेटा हमारे पास है, हमसे हमारे द्वारा आपके द्वारा प्रस्तुत हुआ। वही डेटा के आधार पर मैंने भोपाल शहर का स्पेसिफिक एनालिसिस किया, उनका कारण और निदान उसके सब निकाले गए, कब कौन सी किस समय में कौन सी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, कारण क्या रहे हैं, उनका वही कारण लगभग जो ओवरऑल नेशनल लेवल का हमारा जो रिफ्लेक्शन है वही आया। ओवर स्पीडिंग, मोबाइल पे बात करना, ड्रंक एंड ड्राइविंग, डाटा क्योंकि लगभग एक ही था। सुबह शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में दुर्घटनाएं ज़्यादा होना, ज़्यादातर दुर्घटनाएं ग्रामीण रोड पर से मुख्य रोड पर आने के कारण होना, 2 व्हीलर्स की होना, बिना हेलमेट के नहीं लगाना, इस तरीके के ये पूरा क्लासिफिकेशन करके, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता इसलिए स्लाइड अलग अलग दिखाना चाहता हूँ। भोपाल शहर के मैंने दुर्घटनाओं का आकलन किया और आकलन करने के पश्चात में ये रिजल्ट पहुंचे जो जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, किस तरीके की दुर्घटना, 2 पहिया वाहनों में किस तरीके से घटना हुई, आयु लिंक के आधार पर हमने किस तरीके से विभाजन किया था, और इस तरीके से सारी चीजें करी। करने के पश्चात हमने इसका एनफोर्समेंट जो हमारा मुख्य दायित्व है उस पर आए। एनफोर्समेंट करने के लिए जो अभी माननीय निर्मल सर ने भी जो कहा कि एकमात्र उपाय होता है चालान। सर चालान बढ़ाने के लिए हमने स्पेशली सबसे हमारे भोपाल में कमिश्नरेट लागू हुआ, स्पेसिफिक ट्रैफिक के लिए और फोकस हो गया, तो हमारी जो बल वृद्धि थी वो लगभग डबल हो गई। जो हम लोग 250 लोगों में काम चलाते थे, आज के समय पर 600 लोग काम कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस में। तो एक तो उपलब्धि हमारी ये रही, इससे हमारा एनफोर्समेंट बढ़ा। हमने अपने जो अपने चालान द्वारा बनने थे पुलिस द्वारा, उसके बढ़ते हुए 72% की वृद्धि आज तक कर ली है सर, अक्टूबर के माह तक कर ली है। और साथ में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ITMS के जो चालान है हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के, हमने 122% तक की वृद्धि आज की स्थिति में कर ली है। मोटर व्हीकल एक्ट की मुख्य धाराओं का हमने चालानी प्रतिशत बढ़ाया। जो कारण हमारे थे ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग, इसको हमने टारगेट लेकर चले। और भोपाल में सर एक बहुत, आप लोग भी सब देखते होंगे, सारी चीजें होंगी, स्पेशल हमने मॉडिफाइड वाहन के साइलेंसर स्पेशली टारगेटेड थे, उसमें 2 व्हीलर्स वाले जो थे, जो स्टंटबाजी जो होती है बहुत मुख्य समस्या होती है, उसको टारगेट करते हुए हमने अभियान चलाया। और इसमें हमने जो जबकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होने के बाद भी हमने कंपाउंड नहीं किया और सारे मामले कोर्ट में भेजे, और एक गाड़ी पर कम से कम 15 से 20 हजार तक का चालान इसमें हुआ है सर, ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी हुआ और मॉडिफाइड साइलेंसर में भी। इस तरीके से हमने इसमें जो कार्रवाइयां की हैं सर, आप रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे सर, इसमें हर मद में सर लगभग जो है कई गुना चालान आप देख सकते हैं।
तीन सवारी से लेकर मोबाइल पर बात करने से लेकर ध्वनि प्रदूषण, मॉडिफाइड साइलेंसर एक ही विषय है, उन पर लेकर हमने कई गुना तक कार्रवाइयां करी हैं और इसका परिणाम हुआ कि भोपाल में लगभग स्टंटबाजी नहीं के बराबर हो गई है। ITMS का एक इशू आया अभी कल, एक वक्ता ने कहा था कि मुख्य शायद सबसे ज्यादा बताया कि दिल्ली में 23% तक इसका अनपेड चालान की वसूली का मेन जा रहा है। भोपाल में सर जनवरी तक की स्थिति ये थी कि हमारा अनपेड चालान की जो वसूली थी वो मात्र 14 से 15% थी। हमने प्रयास किए, हमारा प्रयास था सर लोक अदालत, पहली बार शायद मध्य प्रदेश में तो हुआ है सर, शायद हो सकता है नेशनल लेवल पर यह प्रयोग हुआ हो। हमने लोक अदालत के माध्यम से जो ITMS के लोग थे उनको नोटिस जारी किए। आज की स्थिति में हमारा सर चालानी प्रतिशत हो गया 41%। शायद मुझे लगता है MP में तो सबसे ज्यादा है सर, इंडिया का आप लोग आकलन करके बता पाएंगे कि यह प्रतिशत किस तरीके से हुआ। ITMS के साथ में हमने और भी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जो ITMS का फीड था हमारा, जो कैमरों का फीड था, चूंकि ये नगरीय प्रशासन द्वारा देखा जाता है, इसके हमने 17 मुख्य पुलिस स्थानों पर अपने जो सीनियर ऑफिसर्स को कंट्रोल रूम के में इनका फीड प्राप्त किया, जिसके द्वारा हम ट्रैफिक की मैनेजमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और VIP मूवमेंट्स में साथ में बड़े जो आयोजन होते हैं उसमें इसके द्वारा हम ट्रैफिक का संचालन भी करते हैं। ITMS के द्वारा जो टेक्नोलॉजी इसके द्वारा हम PA सिस्टम का यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा अनाउंसमेंट करके हर चौराहे पर, कुछ चौराहे पर हमारा चौराहे की मैनलेस चौराहे हमने डेवलप किए हैं। बल्लभ भवन चौराहा सर जिसको कह सकते हैं, रोशनपुरा चौराहा, जो हमारा मेन नहीं होता है, ट्रैफिक पर्सन सिर्फ वॉच करता है, बाकी हम PA सिस्टम के माध्यम से और ITMS की चालानी की कार्रवाई के द्वारा से ट्रैफिक का वहां कंट्रोल करते हैं। ये सारी स्थितियां की। इसके पश्चात में सर जो निचोड़ 2 दिन की चर्चा का आया, इशारा मैंने पहले ही किया कि हम लोगों के बीच में जहां तक है स्टेट लेवल पर माननीय मेहरा साहब मीटिंग लेते हैं, स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी की, रोड सेफ्टी एजेंसी की मीटिंग हो चुकी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत कुछ ठीक हो जाता है, परंतु नीचे लेवल पर जब हम जाते हैं, भोपाल जैसे शहर में भी तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या इसको हम सब डिवीजन लेवल पर कहें, आपके SDO होते हैं, हमारे ACPs होते हैं सर, वहां कोऑर्डिनेशन की बहुत जबरदस्त कमी है सर। सामान्यतः हम लोगों के लेवल पर, सीनियर लेवल पर तो एक बात हो जाती है, हमारा परिचय है सर, पर नीचे लेवल पर एक छोटी सी बात भी होगी कि ब्लैक स्पॉट बना कोर्ट चौराहे पर, कोर्ट चौराहे से निर्माण भवन की दूरी है 100 मीटर, मेरे ऑफिस की दूरी है मात्र 150 मीटर। कोर्ट चौराहे का रेक्टिफिकेशन कौन करेगा सर, आज तक डिसाइड नहीं हो पाया। व्यापम चौराहा ब्लैक स्पॉट बना, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सब परिचित है इसलिए मैं उदाहरण देते चल रहा हूं। ब्लैक स्पॉट बना तो सिर्फ चौराहा किसका है सर, वो अलग एजेंसी का है सर। नगर निगम कमिश्नर साहब कहते हैं वो आगे की रोड मेरी है, लेफ्ट रोड दूसरे की है, राइट रोड दूसरे की है। मैं भी पत्र लिखता हूं सर, पत्र आप भी लिखते हैं सर, आदान प्रदान चलता रहता है सर। MPRDC को पत्र लिखा कि पेट्रोल पंप वाले कट पॉइंट्स बना रहे हैं, सॉरी माफ करना सर, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि हम लोग एक परिवार में बैठे इसलिए बात कर लेना उचित होगा। वहां से जवाब आया सर रोड कट रहा है, FIR करिए, प्रॉपर्टी आपकी है, FIR तो आप करोगे, FIR लिखने वाले हम लोग हैं सर, तैयार हैं हम लोग उसके लिए। छोटे छोटा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का इशू है सर, बाकी समस्या कोई नहीं है। हर लेवल पर हर आदमी अपने तरीके से एफर्ट से पूरी तत्परता से काम कर रहा है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे PWD हो, चाहे अन्य विभाग हो, पर हमारा कुछ विभाग में कमी हो सकती है, इशारा आप समझ पा रहे होंगे। परंतु इन छोटी छोटी समस्याओं का हम एक मंच पर बैठेंगे सर, और ये मंच नीचे लेवल पर जाएगा सर, तो हम इसका रिजल्ट दे पाएंगे। इसके लिए कुछ मेरे छोटे छोटे सुझाव थे सर, कि हर लेवल पर सर एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। कोई भी निर्माण कार्य हो, चाहे बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे रोड से रिलेटेड हो, उसमें हर संबंधित विभाग की NOC आवश्यक होना चाहिए, चाहे वो DPR लेवल पर उसकी परमिशन हो, चाहे आगे लेवल पर हो, चाहे एग्जीक्यूशन लेवल पर हो। आर्च ब्रिज बनता है सर, ब्रिज बनने के बाद में चलाने के लिए हमको दे दिया जाता है सर, वो समस्या हम झेल रहे हैं सर, उसको हम अपने टेम्परेरी मेजर्स लगाते हैं और उसको करा के चला रहे हैं सर। तो ये एक निवेदन सर, ये एक निर्माण आप एक माध्यम हो सकते हैं सर। तो इस छोटी छोटी समस्याओं का समाधान इस तरीके से हो सकता है, एक कमेटी का गठन हो। रियल डाटा के लिए सर, गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के लिए स्थल के निरीक्षण के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए, जो प्रावधान भी सर इसमें है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, परंतु व्यवहारिक रूप से इसका संभव नहीं हो पा रहा है, जिसमें उसमें तो DM और SP का भी सर प्रावधान है कि विजिट करेंगे और कमेटी में सारे लोग होंगे, पर व्यवहारिक रूप से इसका भोपाल लेवल पर तो मैं नहीं देख पा रहा हूं सर। परंतु मैंने सर एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे जो DSPs हैं, SCP हैं सर, उनको हम एक दुर्घटना का वास्तविक कारण ज्ञात करने के फॉर्मेट डेवलप किया मैंने, बहुत सरल फॉर्मेट है, आईडिया जैसा क्लिस भी नहीं है,
और बहुत जिसमें सिर्फ वो घटनास्थल पर जाते हैं, कोशिश करते हैं सेम डे पहुंचे, नहीं तो दूसरे दिन भी पहुंचेंगे, तो उस घटना के चक्षुदर्शी आसपास के लोगों से बात करके घटना का वास्तविक कारण वो ज्ञात करते हैं, वो भेजते हैं सर हम लोगों को, और उसके आधार पर एक हम अपना एनालिसिस बना रहे हैं। परंतु चूंकि एक ऑफ द रिकॉर्ड चीज है, वो एक सिस्टम में नहीं है वो फॉर्मेट, इसलिए हम उस चीज को आगे उस कारण को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हर दुर्घटना में हर FIR में वही लिखा रहता है रेस एंड निग्लिजेंस। तो उस कारण हमें मालूम होता है कि गाड़ी के अंदर दारू की बोतल मिली है, घटनास्थल पर पहुंचने वाला मैं, उसमें 4 बोतल दारू की मिली है, कुछ पीते खाली मिली, कुछ भरी मिली है, तो मैं बता पाऊंगा दुर्घटना स्थल क्या हुआ, कारण क्या रहा सर। तो इस तरीके से वास्तविक कारण ज्ञात करने के लिए हम एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन करें सर, जो सभी विभागों के इसमें सारे लोग हों, वो जाएं और इस तरीके से किए आएंगे। कुछ सुझाव सर जो नीचे हैं वो सामान्य तरीके के सुझाव हैं सर। भोपाल में टूरिस्ट स्पॉट्स में पार्किंग व्यवस्था का इशूज है सर, साथ में मॉल्स का, बड़े बड़े मॉल्स बन गए, पार्किंग इन्होंने जो एनक्रोचमेंट कर लिया, इस पर बहुत मेरा तो सोचना होता है कि सर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का सर ये आदेश है सर, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बना हुआ है सर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है सर। इसका जो भी विभाग पालन नहीं करते हैं या जो भी प्राइवेट अथॉरिटी पालन नहीं करते हैं, सीधा सीधा अथॉरिटी जी जो बात कर रहे थे अभी, उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि लीगल प्रोविजन जो भी हो, IPC अलग अपनी बात कहती है, जो भी जो संपत्ति विरूपण अधिनियम अलग प्रावधान कहता हो, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट दिया है तो इस सुप्रीम कोर्ट का अवमानना की श्रेणी में आता है। इसका जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ में अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। कुछ छोटे छोटे और भी सुझाव मेरे रहेंगे सर, परंतु जो इस मंच से संबंधित नहीं है, यही मेरा कहना है सर। धन्यवाद। धन्यवाद। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको फ्लैग करने के लिए, और हमारा एक दूसरा नज़रिया भी हमें उससे भी अवगत कराने के लिए धन्यवाद। अब इस क्रम में लास्ट प्रेजेंटेशन बाय NGO टीम जन आक्रोश, उनकी तरफ से अतुल गार्गव। Thank you. Thank you, sir. Chairman, sir, and co-chairman, sir. And for you all, 2 news from my side. One is a good news and one is a bad news. Which you want to know first? Okay, good news. I am the last speaker, is good news for you. And bad news is that I generally speaks 1 hour. So once again, welcome you all in Indore, the cleanest city, and soon it will be a number 1 in road safety and traffic awareness. मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने शुरू करूं। सुरक्षित ट्रैफिक मिशन हम सबका जन आक्रोश। फ्रेंड्स, माय प्रेजेंटेशन इज नॉट अ केस स्टडी, बट इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन टू यू, एंड दैट इज जन आक्रोश, दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम नागपुर बिफोर 10 years. And now it has been spread in so many cities of Madhya Pradesh and overall India. सभी जगह सभी लोगों ने वही बात की, डेटाज आर ऑलमोस्ट सेम। आपका कल से लेकर आज तक जो भी बहुत सारे स्पीकर्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अब्रॉड, एंड डेफिनेटली यू विल बी गोइंग बैक होम विथ अ टेक होम मैसेज, एंड वो बहुत जरूरी है for any seminar, or this is international seminar you are attending since yesterday only. So what is happening? यही सब हो रहा है हमारी रोड्स पे। जो सारे स्पीकर्स बात कर रहे हैं कि बाइक सवार, सभी ने बोला होगा आपको कल से कि 2 व्हीलर के एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। बाइक सवार देखिए आप, ये कहीं का बिल्कुल लाइव वो है, लिया गया है, जो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, क्लैश हो जाता है। जन आक्रोश is concerned because India is
नंबर 1 इन रोड एक्सीडेंट, सभी ने बोला ये। हम लोगों के पास 2 से 3% व्हीकल है, लेकिन एक्सीडेंट की जो डेथ्स हैं उसमें 11% पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का ये है। ये भी आप सभी लोगों ने कल से लेकर आज तक सुना होगा। 400 लोग रोज डेड बॉडीज के रूप में घर पर वापस आते हैं, ये भी आप लोगों ने कल से बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। और 78% जो है, अभी भी किसी ने बात की कि 18 to 45 ईयर्स एज ग्रुप होता है, एंड ओवर 60% एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व टू व्हीलर। सब ने बात की, बिकॉज ये टू व्हीलर जो चलाने वाला है, जो सेगमेंट है, उसको हमें पकड़ना है, उसको हमें ट्रेन करना है, उसको हमें एजुकेट करना है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वर्किंग फॉर द लास्ट 10 years to prevent accidents by increasing awareness in all road users about importance of obeying laws and rules of the road, by making road users realize the consequences of accidents। ये हम लोगों के जो जन आक्रोश के जो काम है, जो हम लोग करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ मिलके, क्योंकि सरकारें बहुत कुछ करना चाहती हैं, पुलिस बहुत कुछ करना चाहती है, डिपार्टमेंट्स बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जन आक्रोश जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और इसके लिए हम ना कोई रेन्यूमरेशन लेते हैं, ना कोई सैलरीज लेते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से इससे जुड़े हैं। मैं आपको बताता हूं मैं जन आक्रोश से क्यों जुड़ा हूं। ये कुछ वर्ष पुरानी बात है सर, मैं शिमला से अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहा था और गुना से 5 किलोमीटर पहले मेरी सुमो का रोड एक्सीडेंट हुआ, और उसमें जो ड्राइव कर रहे थे मेरे मित्र, उन्होंने ना बेल्ट लगाया था, ना मैं साइड में बैठा था, ना मैंने बेल्ट लगाया था, और उनको अच्छा नाश्ता किया था उन्होंने, तो उसके बाद हल्की सी झपकी लगी हाईवे पे, और सुमो में उस समय वो पावर स्टीयरिंग आने शुरू हुए थे, और उन्होंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया, एंड वो सुमो 10-15 पलटियां खाते हुई नीचे गिरी, और मैं उसमें से आगे का जो विंड स्क्रीन होता है उसको तोड़ता हुआ गया ऊपर, और ऐसा का ऐसा गिर गया नीचे। मेरे कई साथी लोग हैं, सब जानते हैं। और उसके बाद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, और शायद 1.5 mm बच गया था, जिसके कारण मैं बच गया, आप लोगों के सामने खड़ा हूं और बात कर रहा हूं, अदरवाइज मैं शायद हमेशा जिंदगी भर व्हील चेयर के ऊपर होता। तो ये मुझे लगा कि हम लोग कितने लापरवाह हैं। यदि वो सीट बेल्ट लगा होता तो शायद ये घटना नहीं घटी होती। यदि मेरे दोस्त को ने झपकी आ रही होती तो गाड़ी रोककर एक तरफ यदि झपकी ना ले ली होती झपकी, तो शायद ये ना होता। तो ये सब चीजें हमें, जैसा अभी सर ने बताया कि अब हम लोगों को इमोशनल उस पर भी जाना होगा, हमें लोगों को एजुकेट करना होगा, हमें लोगों से आगे बात करनी होगी। तो ये जन आक्रोश इस काम को करने के लिए आगे तत्पर है। एंड जो मैंने आपको बताया उसमें बाय फॉलोइंग वीकली प्रोग्राम्स, हम लोग अलग अलग सिटीज़ में, जैसा आपको भी मालूम है सर, हम लोग चौराहों पर जाकर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाकर काम कर रहे हैं। टारगेट ऑडियंस जो है हमारा, वो सारे ग्रुप के, सारे एज ग्रुप के लोग हैं, ड्राइवर्स, पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोचिंग क्लासेस। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको और हमको जरूर समझना होगा कि इस जो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉमिसिंग जनरेशंस कैरी ड्रीम्स इन आइज फॉर देयर फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, एंड मोस्ट वल्नरेबल, जोश ज़्यादा है, होश कम है। अभी सब ने यही बात की। हमें उसको, वो टारगेट है, उसको पकड़ना है, उसको हमें उसके लिए जरूर काम करना है। हम लोग जो जन आक्रोश में आपके साथ मिलकर करना चाह रहे हैं, मेजर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, कल से लेकर आज तक हम, और कल से लेकर आज तक हम सब एक ही बात क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर हेयर टू डिस्कस रोड सेफ्टी। तो हम लोग जब रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें कॉमन होती जाएंगी, सारे स्पीकर्स लगभग कहीं ना कहीं से वही पॉइंट्स लेके आने वाले हैं। तो ये सब रीजंस है, अनट्रेंड ड्राइवर्स हैं, ओवर स्पीड है, रॉन्ग साइड ट्रेवल है, ड्रंकन ड्राइविंग है, केयरलेसनेस है, और ब्लैक स्पॉट्स जो आपने बताए वो हैं, उसके बारे में भी बहुत से काम हो रहे हैं। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो अपने छोटे बच्चों को, 18 साल से कम बच्चों को मोटरसाइकिलें और बड़ी बड़ी पावरफुल मोटरसाइकिल दिला देते हैं, और उसके बाद वो लोग एक्सीडेंट कर गुजरते हैं। ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेटेस्ट रीजंस ऑफ इंजरीज एंड डेथ क्या हैं। यही सब रीजंस है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और जो इससे पहले मेरे साथी वक्ताओं ने भी आपको बताए हुए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल टेम्परेरी से लेकर परमानेंट इंजरी, डेथ, फैमिली सफर, सब कुछ खत्म होने वाली बात होती है। एंड नो वन इज स्पेयर्ड। ये आप देखिए, ये नाम जो सामने दिख रहे हैं आपको, साइरस मिस्त्री, जो बिलियनियर रहे होंगे,
और एक मजदूर आदमी जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, किसी को छोड़ते नहीं है जब हम लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं चाहे रोड खराब हो, चाहे ब्लैक स्पॉट हो, चाहे कुछ हो, ये नाम देखिए, विनायक मेटे, अजरुद्दीन के बेटे, गोपीनाथ मुंडे, प्रिंसेस डायना, जसपाल भट्टी, आनंद अभ्यंकर, एक से एक नाम और लंबी लिस्ट है। ये सब कहीं ना कहीं यही सब रीजन रहे होंगे। और हमें क्या करना होगा, हम लोग कल से शायद आप लोग सब टेक होम मैसेज में यही ले जा रहे हैं, व्हाट शुड वी डू, ऑल रोड यूजर्स मस्ट ओबे रूल्स। ये सब चीजें जो हैं कल से आप लोगों ने पढ़ ली है और हम समझते हैं कि हम जन आक्रोश के साथ मिलकर आप लोगों के साथ ये काम निश्चित ही करना चाहेंगे। और यहाँ पर चूंकि हम लोग इंदौर में बैठे और मैं इंदौर से हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इंदौर ब्रांच जो है जन आक्रोश की, ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने 1 अगस्त को यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया। और बेसिकली इनफैक्ट जन आक्रोश इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ नितिन गडकरी जी। उन्होंने इसको नागपुर में शुरू किया था आज से 10 वर्ष पूर्व। और यहाँ पर मेरे साथ इंदौर शहर के जो उपाध्यक्ष हैं, सुधीर हरदास जी वो हैं, विपिन जी हैं, रवि जी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। और मध्य प्रदेश जो हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शंकर ललवानी एंड मेयर पुष्यमित्र भार्गव, दे बोथ assured us फॉर फुल सपोर्ट। और निश्चित ही हम लोग इसमें काम कर सकेंगे। हम लोगों ने 1 अगस्त को यहाँ की 8 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU किया है, क्योंकि हमें उन बच्चों को ट्रेन करना है, क्योंकि हमारी जनरेशन तो अभी कई सारे चालान सर बचा चुकी है। हम तो जब कभी फंसते थे तो फ़ोन कर देते थे आप जैसे मित्रों को कि भाई साहब हमें बचा लीजिए, और या किसी नेताजी को फ़ोन लगा के हम लोग बच जाते। लेकिन अब वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि अब पुलिस भी बदल रही है, अब लोग भी बदल रहे हैं, और हमें उस न्यू जनरेशन को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें ट्रेन करना होगा। तो हमने 8 यूनिवर्सिटीज़ को, और जो सहोदय ग्रुप है यहाँ का, जिसमें 120 स्कूल आते हैं, और उन लोगों को अपने साथ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, रोटरी इंटरनेशनल को, और इन सबको अपने साथ लेके हम लोगों ने MOU किया। हम लोग धीरे धीरे वहाँ पर जाना शुरू कर रहे हैं, और वहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशन सेमिनार, और सारे इंस्टीट्यूट के लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये नितिन जी जब हमारे इस प्रोग्राम में आए थे, रविंद्र तासखेड़ीकर जी फाउंडेशन स्टोन है इस जन आक्रोश संस्था के, और ये उनका एक इंटरव्यू है, वी डाई ऑन द रोड फॉर डिसरेस्पेक्टिंग लॉ। हम लॉ को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए मर रहे हैं। बहुत सारा काम किया हुआ रविंद्र जी ने। एंड ये 1 लाइनर्स हैं जिनकी सबने बात की, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा क्यों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नजर हटी दुर्घटना घटी, मर गए तो बच गए, लेकिन अपंग हो गए तो जिंदगी भर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नियमों का पालन करें, एक समझदार नागरिक बने, गर्व करें अपने ऊपर कि मैं नियमों का पालन करता हूं, और औरों को भी समझाएं। ये काम हम लोग जन आक्रोश के थ्रू आपके साथ, आपके पार्टनरशिप में हम लोग कर रहे हैं, और आगे भी करना चाहेंगे। आप में से जो भी हम लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहेगा, वो हम आगे इसमें बढ़ के और काम करते रहेंगे। हमारे इंदौर ब्रांच के प्रेसिडेंट तरुण मिश्र हैं, आज वो बाहर होने से यहाँ पर आ नहीं पाए, और उनके बिहाफ पे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेरी टीम है, हमारी इंदौर की टीम है, उसके द्वारा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you for the good work being done. Thank you. I think now we come to the 1 or 2 questions, because we don't have time. So Mr. Rajesh Gupta, he has some question, ARTO Indore. So he has any issue? सामान्य मंच सभी को नमस्कार। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ प्रेजेंटेशन तो खैर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बस एक दो शेयर करूँगा, बस 2 या 3 मिनट में। सर, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सर, झाबुआ में पोस्टिंग थी मेरी सर, AR DTO झाबुआ के रूप में सर।
2015 में। 2 महीने बाद ही सर, आपको याद होगा 12 सितंबर 2015 पेटलावद ब्लास्ट ट्रेजेडी हुई थी सर। 104 लोग मरे थे सर उसमें, उनकी जो जानें गई थी सर। तो 2, 4, 6, 8 रोज बाद एक आदमी मेरे पास आया और मेरे पैर छूने लगा। ऑफिस में बैठा था मैंने कहा क्या हो गया भाई? मुझे लगा कि वो उसकी गाड़ी छुड़ाने आया जो हमने जब्त कर ली थी। उस वक्त हमारा पुलिस के साथ ज्वाइंट अभियान चल रहा था ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, वहाँ बहुत गंभीर समस्या है सर। तो उसे पैर छुए, मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब आप लोगों ने हमारी जान बचा ली। मैंने कहा कैसे? बोले सर शुक्रवार की शाम को आपने मेरी गाड़ी ओवरलोडिंग में, जब हम मजदूरों को लेकर लौट रहे थे, मैं करीब 18 से 20 मजदूरों को लेके जाता था, वो आपने थाने में बंद कर दी। तो सर दूसरे दिन सुबह 8 बजे में सेठिया रेस्टोरेंट, जहाँ से सर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो जो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर मैं 18 से 20 मजदूरों को लेके रोज़ 8 बजे मैं वहाँ पर जो है नाश्ता करके और फिर मजदूरों को मजदूरी पर ले जाता था। तो सर वो ये कह रहा था कि सर आपके कारण हमारी जान बच गई। और वो संयोग से सर उसने न्यूज़पेपर वालों को बता दिया, मुझे पता नहीं था। अगले दिन पेपर में आया कि परिवहन विभाग के अभियान ने जो है 18 जानें बचा ली सर। तो जबकि वो जॉइंट एक्शन थी सर हमारी पुलिस के साथ। इसी तरह से एमपीआरडीसी के सर ने अभी जब बताया कि कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करते हैं तो बहुत सारी सक्सेस हासिल होती है सर। झाबुआ को ही मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एमपीआरडीसी के पाटीदार साहब बैठे हैं, एनएच के मनीष असाटी साहब के साथ मैंने काम किया है सर। माछलिया घाट झाबुआ जब जाते हैं इंदौर से, बड़ा ही खतरनाक घाट है सर। पूर्व में बहुत एक्सीडेंट हुए थे, बहुत लोग मरे वहाँ पर। माछलिया घाट में जो टर्न है वो भी बड़े खतरनाक हैं और फॉरेस्ट के कुछ इश्यूज थे वहाँ पे। तो अब तो वो सीधा हो रहा है और अब तो बहुत अच्छा रोड बन रहा है, लेकिन उस वक्त सर बड़ा खराब था। हमने सर कलेक्टर साहब के कहने पे रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक के बाद पूरे रोड का सर्वे, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी, रोड एजेंसी भी और आरटीओ पूरा सर्वे करके उसको हमने पॉइंट नोट किए। हमें कोई डेफिनेशन नहीं मालूम ब्लैक स्पॉट क्या है क्या नहीं, उस वक्त नहीं पता था। अभी वो तो हमने परिभाषा में देखा कि ऐसा ऐसा है। 3 साल पिछले 5 साल में ये जो है 500 मीटर के अंदर जो भी 5 क्रैश हुए हो या 10 फैटलिटीज़ हुई हो। पर मेरा ये कहना है एक जनरल ऑब्जर्वेशन से कि मैं अगर गाड़ी ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ क्या क्या होना चाहिए था। तो सर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पाटीदार साहब ने नियमों से हटके भी जहाँ रोड मार्किंग करानी थी रोड मार्किंग कराई, इवन अपने खर्चे से कराई। बोले सर इसका अप्रूवल नहीं है। मैंने कहा सर ये जाने तक का हम वेट नहीं कर सकते किसी का, इसको कैसे भी करवाओ। तो उन्होंने करवाया सर, गांव में भी करवाया। और एनएच ने सर जो ये क्रैश बैरियर्स होते हैं उन पर रिफ्लेक्टर भी लगवाए। पुलिया जो वल्नरेबल थी वहाँ 2-3 बसें गिर गई थी पिछले कुछ दिनों में सर, वहाँ पर भी उन्होंने करा। तो सर मैं बता रहा हूँ कि इन सब के बाद एक्सीडेंट के केसेस बहुत कम हो गए। और ओवरलोडिंग में जो हमने जॉइंट एक्शन की थी झाबुआ में, रेगुलर करते थे, हफ्ते में 1-2 दिन सर हम सड़क पर निकलते थे पुलिस के साथ। बहुत कोऑपरेशन मिलता था एसपी साहब का भी और कलेक्टर साहब का भी। तो सर मैं अब ईश्वर की कृपा कहूँ या हम लोगों के सम्मिलित प्रयास कहें या जनता की अवेयरनेस कहें, हालांकि ओवरलोडिंग की समस्या कम नहीं हुई है। जीपों में 20-20, 30-30, 40-40 लोग बैठते हैं सर मधुमक्खी के छत्तों की तरह, वो अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन 6 सालों में, जब 6 साल सर पोस्टेड रहा, मुझे याद नहीं कि कोई एक भी व्यक्ति कहीं ओवरलोड जीप के एक्सीडेंट में मरा हो सर, एक भी व्यक्ति। 2 एक्सीडेंट, 2 लोगों की मौत हुई। एक स्कूल बस के टक्कर लगने से एक बच्चे की मौत हुई, एक महिला की मौत हुई और एक पेटलावद तरफ एक बस खड्डे में उतर गई थी, उसके कारण सर बस ये 2 मुझे याद हैं। लेकिन इसके अलावा सर झाबुआ जैसे गंभीर ट्राइबल बेल्ट में, लेकिन यहीं पर दुख की बात है कि मोटरसाइकिल सवार, अब तो बहुत सारी बातें हो गई, वहाँ हेलमेट भी नहीं पहनना और ये सब कुछ चीज़ें, एक बाइक पे 4-4 लोग बैठ के और इतनी तेज चलते हैं सर कि एक पेटलावद में मेरे समय में ही 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई और 5 लोगों की जाने गई। तो खैर वो तो एक अलग चीज़ है। इसी तरह से सर कहूँगा कि हमने
इंदौर में भी पुलिस के साथ जो है सर, पुलिस हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। अब इंदौर की स्टोरी बता रहा हूँ सर। पिछले 6 महीने में पुलिस ने जो हमको लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भेजे हैं लेटर्स कि इन्होंने रेड सिग्नल जंप किया, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, तो सर उसमें हमने पिछले 6 महीनों में 8,000 से ज़्यादा लाइसेंस सस्पेंड किए हैं सर, 8,000 से ज़्यादा। और जो भी कैंपेन होती है सर, हम यद्यपि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहना चाहूँगा कि इल इक्विप्ड और इल रिसोर्स्ड है कहीं ना कहीं, ये कहना पूरा गलत नहीं होगा, तो फिर भी हम सर साथ में काम करते हैं ये लाइसेंस। और जब वो NH की बात आई, मुझे याद आया कि अगर आपने जो प्रपोज्ड है कि नेशनल हाईवे पे हम लोग कैमरे लगा देंगे, अगर कोई स्पीड वायलेट करेगा तो वो अगर हमसे लिंक कर देंगे, जैसे अपने DCP साहब ने भी कहा था कि RTO के साथ उसको चालान को लिंक कर दे, ITMS का बोला था, वो लिंक हो जाएगा, हम ऑटोमेटिकली उनका लाइसेंस सस्पेंड करके उसका प्रचार प्रसार करा देंगे कि ये जो है इन्होंने लाइसेंस वायलेट किया है, इसलिए इनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। तो सर हम पूरा तैयार हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है सर। स्कूल बसेस के लिए बस एक बहुत ही एक गंभीर सजेशन कहो या कुछ कहो, DPS की एक ट्रेजेडी हुई थी सर इंदौर में, बाईपास पे हाईवे से एक बस गिर गई थी और 6 बच्चे उसकी जाने चले गई थी सर। तो मैंने एक सजेशन दिया था, शायद उस वक्त भी उसको उतना काम नहीं दिया गया। मेरा ये सोचना था कि समस्या की जड़ पे प्रहार करना चाहिए, वो ऐसे कि बड़े शहरों में बड़ी स्कूलों के लालच में लॉन्ग डिस्टेंस से लोग जो है वो अपने बच्चों को भेजते हैं और वो लंबी दूरी तय करती हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं, इवन ट्रैफिक कंजेशन होता है और हमारे बच्चे 1-1 घंटे 45-45 मिनट सफ़र करते हैं तो वो भी धुएं से प्रभावित होते हैं। आते आते उनकी पलकें ऐसी बोझिल होती है, वो हम देख ही नहीं सकते। तो मेरा सिर्फ उसमें एक सजेशन था कि क्या हम ये नहीं कर सकते कि बड़े शहरों में कम से कम वहाँ शुरू करें कि स्कूल्स जो भी हों वो विद इन सर्टेन डोमेन, चाहे 3 किलोमीटर कह लो, 4 किलोमीटर कह लो, वहीं के लोगों के बच्चों को प्रायोरिटी दें अपने यहाँ के एडमिशन में। अगर कोई इससे बाहर का, कोई देपालपुर का, महू का या और कोई लंबी दूरी का अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उससे ये कंडीशन हो कि भैया इसकी सुरक्षा की, इसको अगर कुछ हो जाता है तो स्कूल पूरी तरह से जवाबदार नहीं होगा, यद्यपि वो पूरी कोशिश करेगा। तो सर ये ऐसा हो जाए तो हर इलाके में अच्छे अच्छे स्कूल्स खुल जाएंगे और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बसेस, तो हमारे बच्चों का समय भी बचेगा और हादसे भी बहुत कम होंगे सर। और स्कूल को बहुत ज़्यादा बसों का लोड भी नहीं झेलना पड़ेगा और घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा जाता है उस स्कूल में और हमारा बच्चा जा रहा है इसमें, तो तुम उसमें क्यों नहीं भेजते हो? जब पिता कहता है कि भैया वो स्कूल इतनी दूर है, उसकी फीस नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो बस उसी को लेके भी झगड़े हो जाते हैं। तो वो झगड़े ऐसे होते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या फिर बाद में क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से सर ये एक सजेशन था। एक इंश्योरेंस को लेके बात आई थी। इंश्योरेंस में सर मेरा ये कहना है, जैसे MPRDC ने जो कहा वो एक कमेटी बना के कि हम हॉस्पिटल वाला तुरंत इलाज शुरू कर दें, मेरा तो नेशनल लेवल पे ये आग्रह है कि बीमा कंपनियां इतना बीमा करती हैं लोगों का, इतनी प्रीमियम लेती है, कितने लोगों को क्लेम देती है वो, इतने एक्सीडेंट होते हैं, तुरंत कितने लोगों को क्लेम देती है। शायद इसका एनालिसिस करेंगे तो आंखें खुल जाएगी कि उनकी कमाई ज़्यादा होती है, क्लेम डिसबर्सल बहुत कम होता है और उसमें भी जूते घिस जाते हैं, जो विक्टिम होता है उसकी तो हालत खराब हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के पैटर्न पर क्या हम कोई एक्सीडेंट रिलीफ पैटर्न, नेशनल एक्सीडेंट रिलीफ फंड नहीं क्रिएट कर सकते? उससे सारे हॉस्पिटल्स को लिंक नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट जैसे भी होता है, चाहे कैसा भी हो, आपको अगर कोई लाया है गुड समैरिटन, उसका पहले इलाज करो, जो भी खर्चा होगा आप उसका बिल बनाओ, उसको जो है बाद में जो है एक्सीडेंट रिलीफ फंड, नेशनल एक्सीडेंट रिलीफ फंड से जो है दे दिया जाएगा। अगर ये कर दिया जाए सर, तो ये बीमा कंपनियों की ये जो कहना चाहिए कि ज़्यादा प्रीमियम लेने की और ये भी सब चीज़ें जो है कम हो जाएंगी। मैं तो कहता हूँ कि बीमा उस वक्त के लिए अनिवार्य भी नहीं होना चाहिए, इसलिए एक्सीडेंट रिलीफ फंड में जाना चाहिए, सबका बीमा ऑटोमेटिकली कर देना चाहिए। खैर,
वीएलटीडी का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर डिपार्टमेंट सर बना रहा है सर, और वही जो कह रहे थे ना कि जुड़ जाएंगे, तो हम उस पर कमांड कंट्रोल सेंटर से पैसेंजर व्हीकल्स में जो लगवा रहे हैं, हम बैठे बैठे देख लेंगे भोपाल से या ग्वालियर से कि किस स्पीड में जा रहा है। अगर वो रूट डेविएट भी कर रहा है, परमिट कैंसिल हो जाएगा। स्पीड अगर वायलेट करेगा वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हम लोग जो है ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं, उसका परमिट सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना था सर। और हेलमेट के लिए भी कैंपेन हम करते रहते हैं। अच्छा, हेलमेट में बस एक लाइन, हेलमेट इसलिए नहीं पहना जाता कि वो आपकी जान बचाता है। हेलमेट ये कहकर प्रचार करना चाहिए कि वो आपको सदा जवान बनाए रखता है। कैसे? धूप में आपको जो है तेज धूप से बचाता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, ठीक है, लपटों से बचाता है, शोर से बचाता है, आपके कान ठीक रहते हैं, आपके बाल असमय सफ़ेद नहीं होते, तो आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो अगर ये प्रचार करें कि हेलमेट इसलिए पहने कि आप जवान बने रहेंगे, तो मेरे ख्याल से होली, दिवाली, बर्थडे आदि सारे त्योहारों पर गिफ्ट देने की अगर हम परंपरा डेवलप कर दें, ये वार फुटिंग स्टेज पे अगर सब तरफ इसका प्रचार करें कि हम गिफ्ट में मिठाई के डिब्बे, हार, फूल, ये वो सब कुछ देने की बजाय अगर मेरे भाई के पास हेलमेट नहीं है या मेरी बहन के पास हेलमेट नहीं है तो मैं उसको हेलमेट गिफ्ट जरूर करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं गिफ्ट करूंगा। तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। अभी वैसे तो ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन अगर कोई है, कोई बहुत ही प्रेसिंग क्वेश्चंस हो तो वो हम देख सकते हैं। हाँ, सारे प्रेजेंटेशंस हम IRC की वेबसाइट पे अवेलेबल कराएंगे। और बताइए। जहाँ तक सर हेलमेट का सवाल है, जहाँ तक हेलमेट का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हेलमेट लगा लेने के बाद में उसमें गर्मी भी बहुत होती है, कान बंद हो जाते हैं और पीछे की आवाज़ नहीं आती। इस चक्कर में ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। तो हेलमेट को इतना सॉफिस्टिकेट बनाया जाए कि तो वजन में हल्का हो, दूसरी बात को पीछे से जो आने वाले वाहन है उसकी आवाज़ आए, ताकि हेलमेट लगाने वालों को तकलीफ ना हो, क्योंकि हेलमेट लगाने से बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, पसीना आता है और आदमी परेशान हो जाता है। तो हेलमेट की डिज़ाइन को चेंज करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे इंदौर से उज्जैन का जो टोल टैक्स है वो मात्र 30 रुपये है 50 किलोमीटर के रोड में, और वही इंदौर से धार का जो टोल टैक्स है वो 300 रुपये है। तो इस प्रकार से दूसरी तरफ इंदौर से धार तक की जो रोड है वो भी बहुत खराब हो रही है। NHAI की अथॉरिटीज यहाँ बैठी हुई हैं और RDC की अथॉरिटीज भी बैठी हुई हैं, जबकि इंदौर से उज्जैन की रोड ज़्यादा अच्छी है और उसके बाद में भी उसमें 30 रुपये लगता है, और इंदौर से धार में 300 रुपये लगता है 550 किलोमीटर का। तो ये इतना ज़्यादा अंतर क्यों? और आखिर जब आपने पेट्रोल में 25 रुपये के पेट्रोल में 110 रुपये वसूल किए, गाड़ी की 2 लाख रुपए की गाड़ी में आपने 3 लाख रुपए टैक्स वसूल किया, तो सड़कों पर इतनी वसूली क्यों और डकैती क्यों? मैं रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को रोड डकैती कॉर्पोरेशन बोलता हूँ और राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग डकैती प्राधिकरण बोलता हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डकैती डरी जाती है, रोड की सेफ्टी भी नहीं होती है, लोग परेशान होते हैं। तो यूज़र को आखिर आपने रोड सेफ्टी की जो बात कर रहे हैं, आखिर यूज़र को कहाँ का कितनी बार लुटना पड़ेगा ये भी देखना चाहिए, और उसके बारे में भी आपको नीति निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए, इसको भी समझें आप। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ये जो 2 रोड पे टोल के डिफरेंस की जो बात कर रहे हैं, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। अगर हेलो, इस पे जो टोल है वो मध्य प्रदेश का जो टोल रेट है वो लग रहा है, ये जो NH की जो टोल पॉलिसी है उसके रेट नहीं लग रहे हैं, इस वजह से ये डिफरेंस है। दूसरी बात, जो यहाँ से धार की जो सड़क है उसमें जो किलोमीटर्स हैं उसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये टोल उस पर आप जो कह रहे हैं वो लग रहा है 300। दूसरी बात कि रोड की हालत आप बता रहे हैं वहाँ पे कुछ खराब है, निश्चित बात है, वहाँ पे करीब 16 किलोमीटर खराब है, जिसको कि बनाने का अभी वर्क लगा दिया गया है, और वहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे थे, ये संज्ञान में था और इसको एक्शन लिया गया है। इसके अलावा भी वहाँ सुधारने के अभी और भी चीज़ें हैं जिसको कि हम प्रयासरत हैं।
नहीं, सुरक्षित रोड की प्रयास हर जगह हो रहे हैं। देखिए, आपने जो रोड टैक्स पे किया है, वो रोड टैक्स आपने गाड़ी के जो नॉर्मल रोड्स हैं जिसपे की टोल नहीं कलेक्ट कर रहे, मेरी बात सुनिएगा, जिसपे की टोल नहीं कलेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहां से आप इंदौर से निकले, आप अपने घर तक गए, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, यहां पे कोई आपसे टोल टैक्स नहीं ले रहा है। टोल टैक्स वहीं पे लिया जा रहा है जहां पे 4 लेन फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटी और लॉन्ग डिस्टेंस है, वहां के लिए ही टोल टैक्स को लगाया जा रहा है। आपकी बातों से सहमत हूं। मैंने आपको जो बताया कि रोड इंदौर से उज्जैन तक का 50 किलोमीटर का डिफरेंस है और धार शहर से बाहर निकलने के बाद धार तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जो सजेशन है नोट कर लिया, थैंक यू। सर एक लास्ट में कह रहा हूं सर कि सभी बहुत सारे के सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे उपस्थित हुए 2 दिन में, सभी ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने प्लान को डिस्कस किया है। इस प्लान के बाद में 2 दिन का जो भी निचोड़ है सर, वो 1 मिनट्स के रूप में हम सारे स्टेक होल्डर्स को जारी हो। हम सब अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग एजेंसी के रूप में, लेकिन जब हम इस मंच पे आए तो एक एजेंसी के रूप में उस जो वे को हमने टारगेट किया है उसको अचीव करने के लिए हर एक की क्या भूमिका होगी, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट काम करें सर। और नेक्स्ट आप ये सेमिनार कब करेंगे सर, इसमें भी हमको जरूर शामिल करें सर। जरूर इस बारे में एक तो सारी जितनी भी प्रेजेंटेशंस हुई हैं वो सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल कराएंगे। दूसरा, इसमें जो वे फॉरवर्ड में क्या हमें करना है और क्या रिकमेंडेशंस हैं 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस की, वो रिकमेंडेशंस हम ऑल दी स्टेक होल्डर्स जैसे एमपी गवर्नमेंट, पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी और मिनिस्ट्री प्लस आईआरसी तो करेगी अपने हिसाब से, जो भी कोड में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो सभी स्टेक होल्डर्स को हम उसको देंगे, वो उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि फर्दर एक्शन लेने की। आई थिंक नाउ एट द एंड आई विल रिक्वेस्ट माय co-chairman to sum up all these 7 presentations. Thank you, sir. Good evening to everyone. अभी जो प्रेजेंटेशन हुए वो 8 प्रेजेंटेशन हुए हैं अभी। सबसे पहले मिस्टर जेम्स का हुआ है जो वर्ल्ड बैंक से थे। उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया और निश्चित रूप से जो वर्ल्ड बैंक जो सहायता दे रहा है हम उनको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मैं ये जो इवेंट हुआ है, ये जो सेमिनार हुआ है, इस सेमिनार के लिए आईआरसी, एमपी पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी, लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सबके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बाकी के जो 7 प्रेजेंटेशन थे वो मेनली मिस्टर बीपी बोरासी जी का था। पहला जो रीवा शहर के बारे में था, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया अपने को। दूसरा था एनएचआई का था, श्री राजीव लोचन जी का था। तीसरा कर्नाटका पेरोली श्री एसएफ पाटिल जी का था। चौथा था हिमाचल प्रदेश से श्री विजय चौधरी जी का। 5वां था श्री सुनील वर्मा जी का एमपीआरडीसी से। 6वां था श्री संदीप दीक्षित जी पुलिस डिपार्टमेंट का। और 7वां जो था श्री अतुल गार्गव जी जन आक्रोश टीम की ओर से। सभी के द्वारा बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन इसमें दिए गए हैं। मेरे इस संबंध में कुछ सुझाव भी हैं, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। डाटा हमने देख के सभी ने कहा कि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ही प्राइम कंसर्न का विषय है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें भी इंटरवेन किया है। तो जो डाटा हमने जो देखे हैं उन डाटा से स्पष्ट होता है कि मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वो हमारे 2 व्हीलर्स और कार्स को मिलाकर के 60% रोड एक्सीडेंट हैं। और ये रोड एक्सीडेंट आपके रूरल एरियाज में ज़्यादा है, अर्बन एरिया की अपेक्षा रूरल एरिया में ज़्यादा है। तो 2 व्हीलर्स का जब हम बात करते हैं और कार्स की जब हम बात करते हैं तो हम हेलमेट की बात करते हैं और सीट बेल्ट की बात करते हैं कि ये यदि हम ये लगाते हैं तो हमारा जो फैटलिटी के चांसेस कम हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से फैटलिटी से कम होंगी, लेकिन और इसमें सीट बेल्ट ना लगाने और हेलमेट ना पहनने का चालान का प्रोविज़न भी है। बट हमने ये देखा है कि 2 व्हीलर्स का जो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट हैं वो आपके इंटरसेक्शन पर, जंक्शन पॉइंट पर मैक्सिमम है।
तो जंक्शन इम्प्रूवमेंट की हमने बात की है, लेकिन ये जंक्शंस पे आखिरकार एक्सीडेंट होते क्यों हैं? हमने इस बारे में थोड़ा सा हमें विचार यदि हम करते हैं तो हमने ये पाया कि जो साइड मिरर्स जो रहते हैं मोटरसाइकिल्स में दोनों ओर, वो 90% व्हीकल्स में मिसिंग हैं, या तो वो ठीक से अलाइन नहीं है, उनको पीछे वाली गाड़ी उनको दिखता नहीं है, वो सडनली टर्न लेते हैं और जो पीछे से जो गाड़ी जो आती है वो एकदम से उसको इम्पैक्ट करती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में हेलमेट और सीट बेल्ट के अलावा जो साइड मिरर्स यदि सही नहीं है, यदि प्रॉपरली अलाइन नहीं है, उसके लिए भी चालान का प्रावधान यदि किया जाए तो निश्चित रूप से जो टू व्हीलर्स का जो एक्सीडेंट है उसमें हम कमी लाने में हम सफल हो सकते हैं। और जहाँ तक एक्सीडेंट की बात है तो द मेन रीजन फॉर मोस्ट एक्सीडेंट इज द फेल्यूर टू फॉलो द रूल्स। हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। यस, even among the highly educated speeding beyond permissible limits is seen. When there are no watchdogs, they even skip the traffic signals and speed away. Only a disciplined motorist mindset is needed to avoid such tragedies. I hope कि हमारा आज का जो सेमिनार है, दो दिन का सेमिनार है, बहुत यूजफुल हमारा रहा है ये, और निश्चित रूप से यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं यहाँ से बहुत कुछ हम सीख करके यहाँ से जाएंगे और इसको हम फील्ड में अप्लाई करेंगे। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, तो जो चालान से जो पैसा कटता है, चालान का जो हम एक उसका रेवेन्यू के रूप में हम उसको अर्न ना करें, उस पैसे का उपयोग हम जो भी पुलिस डिपार्टमेंट की जो कलेक्शन हो रहा है थ्रू चालान्स, उस पैसे उस रेवेन्यू का उपयोग हम जो है उनका एम्बुलेंस परचेज करने में, मेडिकल फैसिलिटीज देने में, या जो सक्षम नहीं है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, या जो एक्सपेंसेस बियर करने में सक्षम नहीं है, उस राशि का हम उपयोग उस रूप में कर सकते हैं उनके इलाज के लिए। तो ये इस दिशा में भी हमें थोड़ा सोचना होगा। बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये जो 1 घंटे का जो कार्यक्रम था वो 2 घंटे से ज़्यादा करीबन आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा, और हमारा जो पर्पस था कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इसमें हम सुने, उनको समझें, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्लस कहाँ अच्छा काम हुआ है वो भी हमें पता चले। डिफरेंट स्टेट्स ने रोड सेफ्टी में काम किया है, पिछले करीबन 5-6 सालों से उसमें अवेयरनेस आई है हर एक स्टेट में। तो उससे जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो अगर हम सुने, और हो सकता है वो उनके हमें अच्छी लगे, जो भी चीज़ें वो हम इम्प्लीमेंट भी करने लायक हों तो इम्प्लीमेंट करें। पर्टिकुलरली इसमें एक जो कर्नाटका में केसी प्रोग्राम में उन्होंने जो डेटा बेस्ड जो दिखाया कि 50% कैजुअलिटीज़ कम हो गई हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, और हर एक कैटेगरी में, इवन चाहे वो माइनर इंजरीज हो, मेजर इंजरीज हो, एक्सीडेंट्स हो, सब में उनका इम्प्रूवमेंट जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए इस प्रोग्राम में केशिप में, तो ये एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। तो इसमें भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है कि क्या क्या उसमें एक्शन लिया था, क्या इम्प्लीमेंटेशन किया, तो वो एक अच्छा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री ने जो 2 प्रोजेक्ट्स पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें रोलर बियरिंग्स लगाई हैं, वो वैसे तो कॉस्टली है, हो सकता है इसलिए कॉस्टली है क्योंकि अभी इंडिया में कंस्ट्रक्शन वो नहीं बन पा रही हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रही है साउथ कोरिया से। लेकिन अगर इनका ये अगर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ हमारा, और इसमें वास्तव में कुछ मतलब एक्सीडेंट्स को कितना रोकता है, कितने कमी आई, तो और ज़्यादा प्रोजेक्ट सेंक्शन करें तो यहाँ इंडिया में ही वो बनाना चालू कर दें इस तरह की बियरिंग्स, और तो ये भी एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। MPRDC के जो एक्सपीरियंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे उसमें थे, और आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट कि वो क्या क्या काम किया उन्होंने और कैसे उसको इमीडिएटली आप उसको कैसे एड्रेस कर सकते हो इश्यूज़ को, एक्सीडेंट को कैसे इमीडिएट क्या एक्शन होता है, किस तरह से
क्या नंबर है, सो टोल नंबर और ये सब चीज़ें इन्होंने जो बताई हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमने व्यू पॉइंट देखा कि भाई उनका किस तरह से एक्सीडेंट प्रिवेंशन में और क्या स्ट्रेटेजी इन्फोर्समेंट कैसे करते हैं। पुलिस फोर्स भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव, पहले जो हमारी जो प्रॉब्लम थी इन्फोर्समेंट, हमारा को ये लग रहा था कि इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि पुलिस की जितनी रिक्वायरमेंट होती है इन्फोर्समेंट के लिए उतनी पुलिस फोर्स अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बताया दीक्षित जी ने कि भाई काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और पुलिस फोर्स इंक्रीज़ की है इन्होंने, तो इन्फोर्समेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और मध्य प्रदेश के जो दूसरे भी प्रेजेंटेशंस वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे। तो एनजीओ का जो काम है इन्होंने जिस तरह से बताया हमें कि भाई क्या काम कर रहे हैं और ये काफ़ी नोबल कॉज के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही हमें ऐसे नोबल कॉज में उनका साथ दें, इस तरह का हमारी आप सबसे अपेक्षा है। तो ये सारे ही अच्छे प्रेजेंटेशन हुए हैं और ये सब आपको हम अवेलेबल कराएंगे वेबसाइट पे। वर्ल्ड बैंक की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो ऑलरेडी जो इंडिया के डेटा की एनालिसिस जो इन्होंने बताई है वो हमारे पास भी हम डेटा बुक पब्लिश करते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से हर साल, और वही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। उसको ज़रूर लेके क्वेश्चन मार्क तो है कि वो अंडर रिपोर्टिंग होती है क्योंकि उसका सोर्स है वो एफआईआर है, और बहुत टाइम पे एफआईआर लॉस, पुलिस जो अगर सिंगल आदमी का कोई एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, उसका पता ही नहीं चलता कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो कई बार एफआईआर नहीं हो पाती है। कई बार उसको इंजरी हुई, माइनर इंजरी हुई, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद तो उसकी अगर प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो तो वो काफ़ी डेटा जो है हमारे नहीं कैप्चर हो पा रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं जो दूसरी एजेंसीज़ की हैं वो कहती हैं कि 50% करीब अंडर एस्टिमेशन है इस डेटा में। तो वो भी अभी जब ये हम इम्प्रूव कर दिया डेटा फॉर्मेट, तो शायद अब इससे इम्प्रूवमेंट आएगा जो नया डेटा फॉर्मेट आया है। और ऑनलाइन अगर ये लाइव किस तरह से अगर ये आ जाए कि एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग को भी हम जैसे ट्राई कर रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा ये डेटा में करेक्शंस आएंगे। तो डेटा जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक रियल कॉज हमें पता नहीं चले और किसी क्या प्रायोरिटी है ये पता नहीं चले, तो उसमें वास्तव में ये उतना इफेक्टिव हम उसका क्योर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे और इम्पोर्टेंट जो हमने आईआरसी ने अभी जो लेटेस्ट जो ब्लैक स्पॉट पे एक जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, अभी रिलीज़ किया है हाल ही में, वो भी काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है। अभी सभी पीडब्ल्यूडीज़ में आई थिंक वो जो इंजीनियरिंग मेजर्स के लिए उसमें चेकलिस्ट भी दी हुई है, बड़ा यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसको यूज़ करें। और इंजीनियरिंग मेजर्स को तो एटलीस्ट जो रोड इंजीनियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी एक्सीडेंट इंजीनियरिंग मेजर्स की वजह से नहीं होना चाहिए। अब तो पर्टिकुलरली ये इवन मोटर व्हीकल एक्ट में आईआरसी के कोड को अब डायरेक्टली आ गया लेटेस्ट अमेंडमेंट में कि अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो उस एजेंसी पे, उस पीडब्ल्यूडी पे, उस ऑफिसर पे एक्शन हो सकता है। तो अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि ये जो कोड में अभी जो हमने लेटेस्ट अमेंडमेंट्स किए हैं ये सारे इम्प्लीमेंट करें। सारे आप रोड इंजीनियर्स कम से कम वो डॉक्यूमेंट पढ़ें, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, साइनेजेस का डॉक्यूमेंट है, मार्किंग का डॉक्यूमेंट है या ब्लैक स्पॉट का डॉक्यूमेंट है, तो ये जो रिलेवेंट है, और ट्रैफिक कामिंग मेजर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 2 दिन के सेमिनार में हमने देखा, ज़्यादातर जो सबसे बड़ा रीज़न आया था ओवर स्पीडिंग का। तो अर्बन एरिया में तो काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा तो स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। जब कंजेशन बढ़ता है तो स्पीड होती नहीं है गाड़ियों की, तो उसमें भी अगर आप ट्रैफिक कामिंग मेजर्स कर सकते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया के लिए भी आईआरसी के काफ़ी डॉक्यूमेंट हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी एक डॉक्यूमेंट अभी निकाला है हाल ही में हमने 2 साल पहले, तो वो तो इजीली कंट्रोल हो सकता है जो। और जहाँ तक हाईवेज़ का सवाल है उसमें हमें देखना है कि जो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये है कि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे और जो सबसे ज़्यादा फंड जिसको हम दे रहे हैं वहाँ पे हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो समझने का है कि भाई क्या रीजंस हैं, उसकी एनालिसिस देखें आप। ये जो हमारे जो डेटा बुक है, एक्सीडेंट डेटा बुक, इसमें डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है हर रीजन का। ये फ्रीली अवेलेबल है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें आप ये पढ़िए कि भाई क्या लेटेस्ट 2020 के डेटा 19 में क्या हुआ था, 20 में क्या हुआ था, क्या रीज़न है, और उसका ये डिटेल एनालिसिस किया हुआ है।
और अभी हम जो नई पब्लिश करेंगे उसमें और भी हमारा एफर्ट है कि जो 2021 वाली जो आएगी उसमें ये एनालिसिस और भी साइंटिफिक तरीके से हो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो और उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर पाएँ और उतनी डिले भी नहीं हो। जैसे ये भी एक आया था इशू कि भाई ये काफ़ी डिले 2 साल के बाद पब्लिश होती है तो उतनी रिलेवेंस नहीं होती, तब तक वैसे ही लोग उसको ठीक कर देते हैं। तो अभी हमारा एफर्ट है कि उसको 1 साल कर दें 2 साल की जगह, कि सेम जैसे लास्ट ईयर का डेटा नेक्स्ट ईयर तक आ जाए पॉजिटिवली। तो ये एफर्ट है इस साल कि जल्दी से जल्दी हम उसको पब्लिश करें, अवेलेबल कराएं, ताकि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो ब्लैक स्पॉट सभी रोड के हैं, स्टेट वाइज ब्लैक स्पॉट्स हैं, नेशनल हाईवे के ही नहीं है, बाकी सबके हैं वो, तो सभी के लिए वो यूज़फुल होंगे वो डेटा। तो ये आई थिंक ये सब अगर हम इम्प्लीमेंट करें और रोड सेफ्टी को एज ए चैलेंज सारे हम जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सब एक चैलेंज की तरह हम काम करें। और जो हमारा टारगेट है, पिछली डिकेड में हम कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि 50% और बढ़ गए 50% कम होने की बजाय। तो इस डिकेड का जो टारगेट है कि 2021 से 30 में 50% रिडक्शन करने का, जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है और इंडिया ने भी उसको साइन किया है, तो वो हम कोशिश करें कि 50% तक लाने की कम करने की कोशिश करें। तो ये जो अगर सबसे बड़ा जो सक्सेस इस सेमिनार का यही होगा कि हम में से हर आदमी उसके लिए कंट्रीब्यूट करें, कि अपने से ही शुरुआत करें उसकी। सबसे पहले हम खुद अपने आप को देखें कि हम कितने ट्रैफिक के रूल मान रहे हैं। हम जब ड्राइव करते हैं तो ओवरटेकिंग रॉन्ग साइड से नहीं कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो रूल्स हम दूसरों को बता रहे हैं, जो यहाँ सिखा रहे हैं, वो अपने आप से शुरुआत करें उस रूल की। तो यही सक्सेस, इस सेमिनार की सबसे बड़ी सक्सेस यही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्ण देता हूँ। ये धन्यवाद। Thank you, sir. Can we please have a short video clip on the road safety? Lägg märke till vad föraren utsätts för. Redan här vid 70 km i timmen går den troliga gränsen mellan liv och död. I 90 km i timmen tränger trädet in över 2 meter. Instrumentbrädan och ratten hamnar i baksätet. Detta är en dödsolycka.
I thank Avantech for this very informative video. Now I request the chairman to please felicitate the presenters. Now I request Mr. R.K. Jain, Chief Engineer, Madhya Pradesh Public Works Department, to please felicitate the chairman and the co-chairman. Thank you, sir. Now we will take a short 15-minute tea break. I think we can finish in 10-15 minutes. After that, we can have tea break. Eh? Yeah. So I think that we can. Next session will start immediately. 2 minutes. Eh? Just please change this one. The Validity session, that is maybe another 10 minutes. The future is closer than we think. Using digital technologies, I request all the delegates to please be seated. We will be completing within 15 minutes. Please be seated. Resulting in smart engineering, smart manufacturing, smart project management, smart infrastructure. Our proven global expertise in infotech, as well as technology services, enables us to solve complex business problems at the convergence of the physical and digital worlds, both internally and for major clients across the globe, including
a large number of Fortune 500 companies. Disruptive technologies like the Internet of Things are changing the way we live and work. We are leveraging our rich engineering heritage with these new technologies to offer businesses worldwide services that enhance efficiency and productivity. By exploiting analytics for innovation, we are transforming the way these industries operate. Cities are the beating heart of the world's economy. Their speed and scale of expansion presents a choice: mega city turmoil or an inviting urban environment. A smart city. A smart city involves the application of information-based systems for better governance and services. With expertise in both infrastructure and new age technologies, L&T has the edge in implementing India's mission to make 100 cities resident-friendly and sustainable. I again request all the delegates to please be seated. We will take another just 15 minutes. We will take just 5 minutes. Please be seated. For thermoplastic road marking material and 2-component cold plastic paint. After having achieved the success locally, we have now spread our wings globally. I look after the domestic market. We have 380 customer base in the country and in the different areas from north, south, east, west. We have set up subsidiaries in Africa and in Asian countries like Kenya, Tanzania, Zimbabwe, South Africa, Sri Lanka, and very soon setting up subsidiaries in the Gulf and even in Southeast Asia. We plan to achieve this progress within the next 3 years and set up production plants also in these geographies. Welcome to the delegates once again. I request all the dignitaries to please take their seat on the dais. Mr. S.K. Nirmal, Director General and Special Secretary, Ministry of Road Transport and Highway and Secretary General of IRC. Mr. R.K. Mehra, Vice President, IRC and Secretary to Madhya Pradesh Public Works Department. Mr. Narendra Kumar, Engineer and Chief, Madhya Pradesh Public Works Department. Mr. G.P. Mehra, Project Director, PIU, Madhya Pradesh Public Works Department, and Mr. Sanjay Khande, Council Member and Chief Engineer to Madhya Pradesh Public Works Department. I request Ms. Shobha Khanna, Council Member to IRC, to please felicitate Mr. S.K. Nirmal. She is the senior most council member from the state Madhya Pradesh.
Now I request Ms. Neha Gupta, Council Member, Indian Roads Congress, to please felicitate Mr. R.K. Mehra. Now I request Ms. Kirti Chaudhary, Council Member, Indian Road Congress, to please felicitate Mr. Narendra Kumar. Now I request Ms. Bhuvna Joshi, Council Member, Indian Road Congress, to please felicitate Mr. G.P. Mehra. Now I request Mrs. Smita Bagul, Sub-Divisional Officer, Madhya Pradesh Public Works Department, to please felicitate Mr. Sanjay Khande. Now I request Mr. R.K. Mehra, Vice President to Indian Road Congress and Secretary to Madhya Pradesh Public Works Department, to please address the delegates. Respected Sri S.K. Nirmal sir, my colleague Narendra Kumar, G.P. Mehra, Sanjay Khande, he is the backbone of this session and this pura complete 2 days seminar, and all other dignitaries of the dais. Good evening and welcome to the valedictory session of 2 days international seminar. On behalf of the IRC and Government of MP, it was our pleasure to host this seminar. I extend my sincere thanks to all the participants who spared their time for this seminar. Our Secretary General, yesterday, he enlightened us with various codes and standards published and to be published in future on road safety, and they are very useful codes actually, and he provided some valuable insights on the vital indications on the road safety issues. हमने इन 2 दिनों के सेमिनार में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हुए हैं, स्पेशली रसिया में जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी पे काम हो रहा है, नेटपेक ने जो रोड एक्सीडेंट का जो स्टडी साइट पे जाकर के उन्होंने की है, उससे काफ़ी हमें हर स्टेट में हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और इसी तरह से जो ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट फॉर मिस्टर जेम्स ने जो दिया है, वो भी काफ़ी यूज़फुल था हमारे लिए। जायसवाल जी भी बता रहे थे स्ट्रे के कैटल्स के लिए कि उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन मेरा भी खुद अनुभव है कि होशंगाबाद और अब्दुल्लागंज जो रोड है उसमें अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें मैं खुद चूँकि अक्सर जाता रहता हूँ, तो उसमें अभी काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वो एक आपका सांची का एक पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी काफ़ी नेशनल हाईवे में हमारे स्ट्रे कैटल्स पे काम करने की ज़रूरत है। NGOs को भी आगे आने की ज़रूरत है। यहाँ जैसे कि जन आक्रोश NGO ने काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ इंदौर में काम कर रहे हैं, तो ऐसा सभी ज़िलों में काम करने की NGOs को आवश्यकता है। डॉक्टर राजेश शर्मा जिन्होंने ट्रामा सेंटर पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है,
और उन्होंने हाईवे पे हर 100 मीटर पे एक ट्रामा यूनिट खोलने का एक सजेशन दिया है, और हर 50 मीटर पे एक एम्बुलेंस होना चाहिए। इसी प्रकार आरडीसी का जो मेरे को सुझाव है, आरडीसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन आरडीसी के जो एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम है उसको एक्चुअली सभी से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। मैं भोपाल से यहाँ आ रहा था, मैं इंदौर सेमिनार में, तो एक्सीडेंट हुआ तो मैंने एक ट्रायल के रूप में आरडीसी को फ़ोन लगाया। तो मैं सोनकच्छ से लेकर के इंदौर तक मेरे पास 15 फ़ोन आए होंगे अलग अलग थानों से कि साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या हुआ है, आपकी लोकेशन बताइए। तो मेरा इसमें ये सुझाव था आरडीसी के लिए कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किया जाए कि हम जिस लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ है तो रिपोर्ट करने वाला मोबाइल से फ़ोटो खींच करके और सीधा अपने गूगल लोकेशन अपलोड कर सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स से एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और हम फैटिलिटी को बचा सकते हैं। तो इसमें बहुत जल्दी काम किया जाए। आरडीसी 2014 से काम कर रहा है एक्चुअली, हम लोग लेट हो गए हैं उसमें। थैंक यू। सेमिनार में सब जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, निर्मल सर। और ये फर्स्ट टाइम हम मध्य प्रदेश में आईआरसी का रोड सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे ये सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि ये चांस हमने लिया। इससे पहले ये उदयपुर में, जयपुर में हो रहा था, तो हमारे प्रदेश के इंजीनियर्स को काफ़ी फ़ायदा भी उसमें होगा, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request Mr. S.K. Nirmal, Director General and Special Secretary to Ministry of Road Transport and Highway and Secretary General to Indian Road Congress to please brief on the seminar. Good afternoon. So we have come to the last session and end of today's international seminar on road safety. I think we had excellent presentations. We had excellent faculty, those who are experts in their own field, not only from India but from abroad. And we have heard in these 2 days, and I think a lot of issues have been flagged, have been crystallized. Internationally, this is a very important issue. United Nations, World Bank, and all other agencies are taking very seriously the issues of fatalities due to road accidents. That is why there is a Universal Declaration of Human Rights, and United Nations have also declared this second time this decade for action on road safety. So this reducing road traffic deaths and injuries requires coming together of all the stakeholders. And I think because in last 5 years we could not have a dedicated seminar on this road safety, so I wanted to have this year one international seminar where we can hear from all the stakeholders. When we are talking only about engineering, that we know road engineering, because there are so many codes available, but what about the other stakeholders? As already I told in my earlier talk, that why we are not able to save the people after road accidents. Road accidents will happen because that we cannot stop because of one reason or other reason, because you cannot stop other person from driving wrong. If you are driving correctly as per rules, even then there will be accident. So accident cannot be prevented. Accident by name itself, accident is accident. But what we have to see is that we can prevent the deaths, we can prevent the major injuries. For that, what we can do? So one important thing is coming out is the forgiving roads. So forgiving road is a very important design concept that what we should know, what engineers should know. If by mistake, if somebody has forgotten to say take a turn or take a U-turn or right turn, and then again he goes ahead, and then if you don't have any cut on median for maybe 5 kilometer, 10 kilometer, then he will be coming back reverse, he will come back and take a wrong side, U-turn on the same road. So opposite side he will be driving, and then it will be definitely
creating some accident situation. So this one concept of forgiving road is very important. We should learn that what we can do to improve the road designs by adopting this concept. Then zero fatalities. There are, I mean, this concept is coming in some developed countries because developed countries have already addressed this issue of reducing the deaths, but now they want to go to the zero fatalities. Like Netherlands, Switzerland and many countries, they are promoting this particular issue. In fact, last year on road safety issue alone, there was a Parliament Standing Committee which is dealing with our sector, transport, tourism and roads. And they invited Indian Road Congress. That was the first time I have seen in ministry that IRC was invited by Parliament Standing Committee, all MPs and their chairman was sitting in Parliament, and they were asking me questions on various aspects of what IRC is doing and what you are doing for road safety. That 1.5 lakh people are getting killed, and what is your contribution to that? Why India cannot design a road, or you cannot show a road which is having no accident? So that is what everybody's expectation is, that when we are spending so much money on roads, we are getting the highest budget. Ministry of Road Transport and Highways has got 2 lakh crore budget, more than the railway budget. So in spite of spending so much money, why you cannot reduce the accidents? Why you cannot, I mean, what other developed countries are doing, why we cannot do that? So there was no answer to us that what is the section of any corridor where it has been reduced to zero. I could not answer, my secretary could not answer. Then they said, what you can do, you at least show a showpiece, one road or one expressway or one corridor where you give us guarantee that we will reduce it to zero. So that is the kind of, expectation from our MPs, our elected representatives from road sector, that you do whatever you want to do, but save the people from getting killed. And that is what the statistics says. For last 10 years, we are leading the world in these figures of casualties. And unfortunately, we could not decrease. Forget about reducing to 50%. Only Corona period, because there was hardly any traffic. So we have shown that 2020, yes, we reduced. But 2021 figures which are coming, again we are increasing that figures. So it is the dedicated effort of not only the road construction agency, road maintenance agency, but all the stakeholders have to be involved in this process. And this particular seminar I wanted to hear from all the stakeholders. We invited trauma center people, doctors, then NGOs, then police department, transport department to hear their views, because it cannot be addressed by one alone. So we have heard from them, and I think there are many important information which we have got, many good feedback which we have got from them. We will bring out, way forward, because right now we could not compile the entire feedback, because many people may be giving now or they have given. So that entire thing we will finalize and we will put on our website. We will share with all the stakeholders as well as all the agencies, PWD, NHI, DCL, Ministry, everybody we will share with them. I think the one purpose was to sensitize you about the importance of the issue, that yes, this is a very important issue and each of us is responsible for this particular cause. Second was to sensitize you about the documents available, because many of us, you don't know which is the document IRC has published, whether there is a document on black spot, whether the traffic sign document has been changed, because this has been modified and updated, and only this year we have released that document. So this was also the purpose, that you also should know that what is the latest government policy, because IRC document is, as it is the part of the, unwritten, though we call it as a guideline, but this is the only guideline available in India, so it is being followed by universally by all the stakeholders.
So this was the another purpose to give you the information about the documents, about the development in the area, about the international practices, what Professor Sikdar has given in different countries, how they have addressed, why we will not be able to address if we continue, and if you don't improve our implementation, we will not be able to address even now. That is what the figures which he was telling of 2023, you are going to increase the black spots by another 50%. So these kind of things are really challenges for all of us, and that we will try to see that what we can do and how IRC can improve further documents, and we can bring out more maybe guidelines to address these particular issues. And this James has given an international perspective to what world is looking at India when they are talking about the road safety, because they have their own way of analysis of the data which we have. So overall, I think this was a very good experience to hear from the international experts also. And this particular international seminar will be beneficial for all the practicing professionals and will help in finalizing and drafting future course of action by various agencies. The commercial sector, service organizations, NGOs, academic institutions, we have heard from the CRRI, what CRRI is doing in road safety, what further improvement, what ministry is planning to do, what NHAI has done. In fact, 2-3 presentations we heard from NHAI also. So still there are some challenges in front of us. And one important challenge is about the two-wheelers, because 38% of the casualty last year as well as this year is coming of the two-wheelers, motor driven two-wheelers. How to address this? Because we are not even recognizing their right of way. That is why they are just crisscrossing on all the highways, whether it is a state highway or national highway. So we have to think of some policy that how to make them more safer, how to give them right of way, whether it is possible to give right of way to the two-wheelers. So that is a very good, I mean, this is an area of concern, and it is being addressed in consultation with World Bank also is willing to assist IRC in preparation of the document for particularly addressing the issue of two-wheelers. Then vulnerable road users, we had 2-3 presentations on VRUs for pedestrians, because we are not recognizing in India that pedestrian also has a right to move on road. We are not taking that seriously. On national highways, we have no role for pedestrians. We have no place for pedestrians. So we have to see that in developed countries, if you see that wherever there is a pedestrian, immediately that car fellow will stop before that zebra crossing, and first he will allow the pedestrian to go. So we have to also see that every road user has to have their right of way, and all VRUs should have their right of way. So what policy changes we should bring? Particularly in urban areas, it is more important that pedestrians, we should allow them to cross the road. Otherwise they are getting, I mean, just this we are driving, we are not stopping at zebra crossings, and that is how, I mean, and even there, what our experience of overbridges is that nobody is using that overbridges. So what we should do then to that, so that they can safely pass across the road. So maybe subways are also not safe. That is what we find, that they are not willing even to go to the subways. So what are the other ways? So we have to think on all these issues. So there is a need to have brainstorming at every government level. Maybe state PWD should also have with the brainstorming on various issues which are the main cause of accidents. Similarly, all other agencies also should think that what more improvement we can bring, and if we can reduce any accident, that will be a, I mean, real success of this particular seminar. So I think this sensitization, information, and listening to all the stakeholders was the basic objective, and to some extent we have achieved this objective. But if we bring the safety as a challenge in all of us, then I think it will be the real success of the seminar. Thank you. And finally, I would like to thank the MP government, especially led by the Secretary PWD, Sri Mehra Sahab, and his team for excellent arrangement,
and for making all of us very comfortable, our stay comfortable, our transport and all logistics and the food, everything, and cultural program. So thank you again for this organization. Thank you. Thank you, sir. Now I request Mr. Sanjay Khande, Council Member, Indian Roads Congress, to please present the vote of thanks. भारतीय सड़क कांग्रेस के तत्वाधान में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रोड सेफ्टी पर आयोजित 2 दिवसीय मैं सर्वप्रथम DGMITH और भारतीय सड़क कांग्रेस की बैकबोन सम्माननीय SK निर्मल सर का हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना और हमने इस समसामयिक विषय पर 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सफलतापूर्वक आयोजित किया। मैं सफलतापूर्वक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आज के दोपहर के भोजन के पश्चात, जिसमें दाल बाटी खाने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में अतिथि और पार्टिसिपेंट उपस्थित रहे और एक ने भी झपकी नहीं ली, मैं इसलिए इसको सफलता मानता हूं, क्योंकि दाल बाटी खाने के पश्चात झपकियां अवश्य आती है। परंतु चूंकि प्रेजेंटेशन इतने अच्छे थे, विषय इतना अच्छा था, प्रासंगिकता उस विषय की थी, इसलिए हम सब सजग थे और हमारे इन 17 प्रेजेंटेशन में पूरी उपस्थिति रही। लखनऊ सेशन में के तत्काल 15 दिन पश्चात IRC का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार इतना सफल होना, मैं IRC की ओर से और लोक निर्माण विभाग की ओर से IRC को और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी के सम्मान में आपसे ही अनुरोध करता हूं कि जोरदार करताल ध्वनि के साथ में अपने आप को गौरवान्वित करें, हमें सम्मानित करें। इस आयोजन के लिए मैं मेरे दोनों प्रमुख अभियंता श्री नयन कुमार सर और GP मेहरा सर, कार्यक्रम को कितना गंभीरता से लिया, आज दोनों प्रमुख अभियंताओं का माननीय मुख्यमंत्री जी उनके कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। जिस समय यह कार्यशाला चल रही है, उसी समय भोपाल में एक भूमि पूजन समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग हैं। परंतु उस कार्यक्रम के बजाय हमारे दोनों प्रमुख अभियंताओं ने इस कार्यक्रम पर उपस्थित होकर के हमें गौरवान्वित किया। मैं उन दोनों प्रमुख अभियंताओं को हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इस आयोजन के लिए सम्माननीय श्री RK मेहरा सर, सचिव लोक निर्माण विभाग, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने में त्वरिता दिखाई, स्वयं उस फाइल को माननीय मंत्री जी से अनुमोदन तत्काल करवा करके हमें सहयोग प्रदान किया। मैं RK मेहरा सर का साधुवाद प्रदान करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए NHAI के विवेक जायसवाल साहब का विशेष सराहनीय सहयोग रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए हमारे जो स्पॉन्सर रहे हैं, MPRDC, पाथ इंडिया, ऑटोमार्ट इंडस्ट्रीज, L&T कंस्ट्रक्शन, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रा, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, ओरिएंटल स्ट्रक्चर, LN मालविया इंफ्रा, IRB, NHBA, एवनटेक एंड PNC इंफ्राटेक, मैं इनका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के तकनीकी आयोजन में इनका ऐसा ही सहयोग और मार्गदर्शन हमें प्रदान होता रहेगा। अब साथ ही हमारे जो मध्य प्रदेश शासन के रोड सेफ्टी से जुड़े हुए सहयोगी विभाग, मुख्यतः पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रतिभागी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से
शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को छोड़ करके घर परिवार के साथ में न रह करके आपके और हमारे आतिथ्य के लिए टीम इंदौर, जिसके B.K. चौहान साहब मुख्य अभियंता महोदय, जिन्होंने दीपावली के त्यौहार पे भी इसी हॉल पर एक मीटिंग रखी और कार्यक्रम के एक एक बारीकों को देखा। SR बघेल साहब मुख्य अभियंता महोदय, R.K. जोशी साहब, S.L. सूर्यवंशी साहब, योगेन बागोले सर, और आप किन किन का नाम लूं, माने नाम लेने के बजाय जितने टीम मेंबर्स हैं उन सब के नाम यहां पे प्रदर्शित कर दिए हैं। इन सब का मैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया है, पूरा प्रयास किया है हमने, हमारी टीम ने, कि किसी के आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहे, परंतु जाने अनजाने में कोई त्रुटि हमसे या हमारी टीम से रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी त्रुटियों को नजरअंदाज करेंगे और भविष्य में पुनः सेवा का अवसर देंगे। मैं आईआरसी के सम्मान में आप सभी की ओर से 2 लाइनें अर्पित करता हूं। औरों को जो मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now I request Mr. B.K. Chauhan, Chairman, Local Organization Committee, Indian Road Congress, and Chief Engineer to Madhya Pradesh Public Works Department, to please felicitate Mr. S.K. Nirmal, Director General and Special Secretary, Ministry of Road, Transport and Highway. Sir, please felicitate Mr. R.K. Mehra, Vice President to Indian Road Congress and Secretary to Madhya Pradesh Public Works Department. Sir, please felicitate Mr. Narendra Kumar, Engineer-in-Chief, Madhya Pradesh Public Works Department. Now I request Mr. R.K. Joshi, Secretary to Local Organization Committee in Indian Road Congress and Superintendent Engineer, Madhya Pradesh Public Works Department, to please felicitate Mr. G.P. Mehra, Project Director, PIU, Madhya Pradesh Public Works Department. Sir, please felicitate Mr. Sanjay Khande, Council Member and Chief Engineer to Madhya Pradesh Public Works Department. Thank you, sir. Thank you, delegates, for making this event a success. With this, we conclude the seminar. You are again invited to the cultural program to be held in lawn area 7:30 onwards, in which you can enjoy tabla vadan and performances by Madhya Pradesh Public Works Department officials, followed by dinner. Please proceed for tea, and we will have the cultural program started by 8 p.m. Thank you, everyone. भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।